सूर्यकांत स्टार्ट कर दी तो okay. So good morning aspirants. Today we are going to discuss some of the most important current affairs of economics. Economics or किसी current affairs discuss करिवा, important current affairs. Okay, but before we dive into the current affairs, let me first introduce some of our toppers. Some toppers from Ray Academy. गतकाली result बाहर थिला आपण मन समस्त जानी थिबे. So please see the toppers. Ray Academy रो किछि toppers अछंती आपण देखि परथुबे. Okay, so Bobun Sahu is the rank 1 holder. Okay, and then we are other toppers too, you can see. And Dr. Anil Kumar जे कि faculty थिले Ray Academy रे से भी clear करछन जेथरो OPSC. Okay, so they are our toppers. So Ray Academy is actually proud to have them, and so exam पाखे आसलानी and समस्त prepare भी करुथुवे. So let's, without further ado, let's begin the class of current affairs. See, first of all, let's see what is the India's position in the global economy. India's position in the global economy. Okay, देखो previous year किछटा institutions माने estimate करथिले जे India is the 4th largest economy in the world. India is the 4th largest economy in the world. But in 2026, according to IMF, but in 2026, this year, current year, according to IMF, the current India is the 6th largest economy in the world. India is the sixth largest economy in the world. According to previous estimates, India was the 4th largest economy of the world. But as per IMF 2026, as per IMF updates 2026, India is the 6th largest economy in the world on nominal terms. As per the nominal GDP, India is the 6th largest economy in the world. But as per purchasing power parity terms, India is the 3rd largest economy in the world. India is the 3rd largest economy in the world. Upon देखि परथुवे एठी, India remains the 3rd largest economy globally on a purchasing power parity basis. Fine. On a purchasing power parity basis, what is the GDP of India? The GDP of India is approximately 17 to 18 trillion dollars. 17 to 18 trillion dollars. And in nominal terms, India GDP केते near about 4.2 trillion dollars. Fine. अच्छा, इंडिया पर कैपिटा जीडीपी देखो तो इंडिया पर कैपिटा इनकम means average income. Per capita income means average income of Indians. In 2025, the per capita nominal GDP is around how much? $2,880. $2,880. And India's GDP, India's nominal GDP has increased from $2 trillion in 2014. $2 trillion in 2014 to near about $4.15 trillion in 25-26. तमने almost double ही जाइए, बुझी पालन? From 2014 to 2025, the nominal GDP of India has almost doubled. What about per capita GDP? Per capita income? The per capita income has also doubled. देखो तो 2014 में India per capita income कितना था? Average income was near about $1,438, and this has increased to how much? $2,880 in 2025. Fine. Okay. यदि इंडिया कहूची by 2047 India will become a विकसित भारत, बुझ पालन? India will become a developed country. ताले developed country हवा पे India, so as to become the developed country, India's per capita GDP, India's per capita income must be roughly around how much? near about $14,000. बुझ पाचंदी? $14,000. यदि per capita income Indians मानकर per capita income by 2047 यदि हे जाउची पाखा सेतल threshold change हे जैथियो, but as of now
the threshold, the income benchmark for a country to become a developed country is how much? $14,000, nearby approximately $14,000. Fine. These are the contribution of sectors to GDP. Different contribution of sectors to GDP. Contribution of sectors to GDP. देखो service sector, services sector केते contribute करछि GDP को? 55%. Out of 100 rupees, यदि इंडिया रो GDP होछि 100 rupees, India GDP is if India's GDP is 100 rupees, then out of 100 rupees, service sector is contributing how much? 55 rupees. कितने? 55 rupees. Whereas industry is contributing how much? 27.6 rupees. And agriculture कितने contribute करछि GDP को? 17.7 rupees. बुझ पाले? This is what the contribution of different sectors to GDP. Okay, there are some facts and information with respect to India's GDP and per capita income. Now let's come to savings rate in India. Savings rate, देखो, please see the savings rate. Recently, the chairperson of Economic Advisory Council to the Prime Minister stated that यदि India यदि annual growth rate, if India wants to maintain an annual growth rate of 7%, यदि India रो growth rate, यदि if India wants to maintain the annual growth rate of 7%, ताहले India को कितने invest करिया को पड़िबो? Near about 34 to 35% of GDP. बुझ पाछन यदि India रो GDP होज 100 rupees ताहले then India has to invest how much? India has to invest near about 34 to 35 rupees. बुझ पाछन दिन if India's investment is, if India's GDP is 100 rupees, then India has to invest how much? 34 to 35 rupees invest करिया को पड़िबो. बुझ पालन यदि India को तार annual growth rate maintain करिवार अछि at the rate of 7%. Fine. Okay. Okay, see, then savings rate. What do you mean by savings rate? Savings rate refers to the percentage of national income that is saved rather than consumed. Indian माने किछि इनकम करूचंती, इनकम कला परे समान जेति की कंज्यूम करूचंती, बुझ पारले? कंज्यूम कला परे जहा पाके बळिला सेटा कोन सेव करिवे समान, बुझ पारले? ता माने savings is equal to disposable income minus final consumption expenditure. What is disposable income? आपण सपोज वर्ष मासको लाख टका इनकम करूचंती, टैक्स दे देले 10,000, डिस्पोजेबल इनकम केते 90,000 रो आपनकर फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर केते हेगला सपोज 40,000, बुझ पारले? माने को डे टू डे एक्सपेंडिचर हला ता माने रहिला केते सेविंग्स 50,000, बुझ पारले? दैट इज योर सेविंग्स. सो सेविंग्स इज इक्वल टू disposable income minus what? Final consumption expenditure. That means whatever household, firms or government earn minus what they spend on consumption becomes saving. अच्छा, India savings rate कितने अच्छी? India's savings rate is around how much? 30.2% of GDP in 2024. 2024 recent data item. That is, India's saving rate has declined. India's saving rate, mark the point. India's saving rate has declined from 34% of GDP in 2011-12 to 30.2% of GDP in 2024. बुझ पाछन तामाने जदी इंडिया रो सेविंग्स कमुची ताले इन्वेस्टमेंट पे पैसा कोठ आसीबो? जदी इंडियंस माने सेव कम करूचंती ताले इंडिया रे इन्वेस्टमेंट पे पैसा आसीबो कोठ? वी हैव टू बोरो फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस. हमको फॉरेन सोर्स रो पैसा बोरो करिया को पड़ियो. बुझ पारलन? जदी इंडिया रो सेविंग्स रेट जदी बढ़िला ताहले actually आमे इन्वेस्ट करि परिबा by borrowing from the internal sources. जदि इंडियन सेविंग्स रेट जदि कमुची then we have to borrow from external sources which would be risky for our economy in the long run. बुझ पारले? देखंतु the savings rate has declined over the past decade. एटा होची ट्रेंड. बुझ पारले? the savings rate has declined over the past decade. अच्छा, savings rate काहेकि डिक्लाइन करची? Why the saving rate is declined? Why the savings rate has declined over the past decade? High spending. लोक माने बेसी कंज्यूम करछन, द कंज्यूमरिज्म इज इंक्रीजिंग. बुझ पारले? आउ कोन पई लोक माने पैसा बैंक रे सेव न करी की से माने फिजिकल एसेट्स को किनुचंती. फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट इन्वेस्ट करछंती, गोल्ड किनुचंती. बुझ पारले? शेयर्स बुझ पाचंती. सो दे आर एक्चुअली बाइंग, पीपल इन इंडिया आर एक्चुअली बाइंग द फिजिकल एसेट्स इंस्टेड ऑफ सेविंग मनी इन द बैंक्स. फाइन, सेही पई the result is the savings rate is declined over the past decade. Now let's come to understand what do you mean by public debt in India. Debt माने कोन? आपण बोरो करूचंती, बुझ पाले? आज बोरो करले 50,000, काली बोरो करले 1 लाख, ताला आपण टोटल डेट केते हेगला 1,50,000. हेलो, सो पब्लिक डेट माने debt owned by the government. बुझ पाले? The debt of the government. Debt of the government means both central government as well as state government.
borrow করছি স্টেট গভর্নমেন্ট, borrow করছি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট ওভার দি পাস্ট মেনি ইয়ার্স borrow করছি। সো টোটাল কেতে borrow করছি সেটা হচ্ছে আপনাদের পাবলিক ডেট। নাও সি the total amount, what do you mean by public debt? Public debt refers to the total amount of money borrowed by the government to meet its expenditure when government spending exceeds government revenue. যদি government expenditure is more than government revenue, then government has to borrow. Fine. Government has to borrow, and when the borrowings of the government accumulates over the years, it becomes what? Government debt. Fine. Now types of public debt in India দেখুন, internal debt মানে যদি গভর্নমেন্ট ইন্টারনাল সোর্সেস রু borrow କରୁଛି তাহলে ওভার দি ইয়ার্স যেତିকি accumulate ହେଇଥିବ সেটা কোন ହେଇଯିବ? internal debt. Fine. And that means আচ্ছা গভর্নমেন্ট ফ্রম ইন্টারনাল সোর্সেস কার টু borrow କରୁଛି? money borrowed from within the country like banks to borrow କରୁଛି, বুঝিপারলে? banks to borrow করছি, বুঝিপারলে? banks to borrow করছি, insurance companies to borrow করছি, RBI to borrow করছি, financial institutions, public retail investors to borrow করছি through what? government securities and bonds. Fine. government bond issue করে, bond issue করে কি borrow করে, direct money কেবে borrow করেনি। ফাইন, government। আচ্ছা external debt মানে কোন? external debt মানে হচ্ছে government when government borrows from external sources. for example যেমতি আপনাদের world bank হয়ে গেল, IMF হয়ে গেল, বুঝপারলেন? foreign government হয়ে গেল, ওকে, foreign sources ও borrow করছি, and the money which is accumulated over the years becomes your foreign debt. Fine. external debt. Okay, India's public debt structure দেখুন তো, as per the union budget 25-26, what is the India's public debt structure? Central government debt is approximately how much? 57% of the GDP. Indiaর GDP যেতিকি বুঝপারলে তার 50% India's debt, বুঝপারলে? government debts, that is central government debt. Our state government debt কেতে? approximately 25% of GDP, বুঝপারলে? state government over the years কেতে borrow করছি? debt কেতে? 25% of GDP, whereas central government's debt is how much? near about approximately 57% of the GDP. Now that means 25% of GDP means borrowing by all the state governments combined. India रे ଯେତେ ସବୁ states ଅଛି ସବୁ states ମିଶିକି total କେତେ percent of GDP borrow କରୁଛନ୍ତି? 25% of GDP approximately. Fine. So general government debt କେତେ ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର? General government debt becomes approximately 81 to 82% of GDP. Fine. That because the central government debt केते? 57%. Our state government debt केते? 25% of GDP. So general debt becomes how much? Your 81 to 82% of GDP. বুঝপারলে? General debt means central government debt as well as state government debt. According to the Fiscal Responsibility and Budget Management Act, according to FRBM Act, Review Committee, according to Fiscal Responsibility and Budget Management Act, FRBM Act Review Committee by NK Singh Committee in 27, general government debt target is how much? 60% of GDP. বর্তমান গভর্নমেন্টর জেনারেল গভর্নমেন্ট ডেট কেতে আছে? approximately 81 to 82% of GDP, but as per the FRBM Act Review Committee headed by NK Singh in 2017, the general government debt target should be how much? 60% of GDP. বুঝিপারলে? যে টোটাল গভর্নমেন্ট ডেট আছে ইনক্লুডিং সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট as well as state government, তার টার্গেট কেতে টার্গেট ফিক্স ହେଇଥିଲା? 60%. তার মানে গভর্নমেন্ট ডেট must remain within 60% of GDP, but the general government debt has increased to how much? Approximately 82%. Fine. So দেখুন এই যে 60% of GDP ଅଛି ইয়াକୁ ডিভাইড କରାଯାଇଛି into 40% from center কেতে ରହିବା ଦରକାର? 40% and state କେତେ ରହିବା ଦରକାର? 20%. ବୁଝିପାରିଲେ? So target year is how much? Target year originally around 24-25, but means by 24-25 the general government debt should be how much? Should become 60% of GDP. But by 24-25 the general government debt has increased to how much? 80 to 82% of the GDP. বুঝিপারলে কাহিনী increase করলা government of general debt? Why the debt of the government increased? Particularly because of what? Corona in 2020. Corona jogu India ro general government debt increase kariগলা, বুঝিপারলে? Okay. And what is the current situation? দেখন্তু current situation is general government debt কেতে पर target থিলা? Central government के target কেতে থিলা? 40%. Okay, কেতে আছে central government? 57%. Fine. General government debt target কেতে থিলা? 60%. কেতে আছে? পাকাপাকি 82%. Fine. That means India's actual debt levels are much higher than FRBM target. FRBM Act 27 जो review होइतला
टार्गेट जेति की सेट करथिला बट एज ऑफ 24-25 the general government debt has increased to how much 82% especially because of corona. Fine. Now let's come to understand what do you mean by external debt of India. External debt माने कौन? India जो foreign sources रो borrow करूची बुझ पारले that becomes your, if India keeps on borrowing from external sources, that becomes your what? External debt. Fine. If India keeps on borrowing from foreign sources, that becomes your external debt. देखो money borrowed from foreign sources by residents of a country including the government, companies, banks and other institutions. Foreign sources रू केवल government borrow करनी, अन्य institutions भी borrow करती. For example, जिमिति आपन companies, private companies हे गले, banks हे गले and other institutions. In India's case, external debt includes borrowing by central government, private companies, bank and public sector enterprises. एमाने borrow करती external sector रू. External sector debt position as of September 2025 is how much? India's external debt is how much? 746 billion US dollars. India external debt कितने? 746 US dollars and external debt to GDP ratio is how much? 19.2% of GDP. That means एटी आपण देखिले India's एटी central government debt कितने अछि? 57% बुझ पारले. State government debt कितने अछि? 25% बुझ पाछन. 25% is the state government debt. एटी India's external debt to GDP ratio of 19.2% of GDP means India जितनी की borrow करची बुझ पारले कितनी की borrow करची? General government debt कितने? 82%, approximately 82%. तार 19.2% is what? External debt. India जितनी की borrow करची तार 19.2% India borrow करची from external sources. बुझ पारले समझते हैं जदी. Okay, fine. Now this is considered relatively comfortable by international standards. This is relatively comfortable by international standards. GDP debt ratio, debt to GDP ratio. If external debt is about 19% of GDP, it means India's total foreign borrowing is equivalent to about 19% of 1 year's economic output. Yes. तामाने इंडिया रो गोटे वर्ष को जीडीपी जेति की बुझ पारलम तार 19% इंडिया कोन करची बोरो करची. That is the debt of the government. Fine. Okay, this is much lower than many developing economies facing what? Debt crisis. This is much lower. बुझ पारले comfortable limit, within the comfortable limit ही अछि. काई ना जदी आपण external sources जदी बेसी बोरो करिवे, the problem कोन? गोटे होत प्रॉब्लम होची डॉलर आउटफ्लो होबो. काई ना आपण को प्रिंसिपल भी देबा पड़िबो, इंटरेस्ट भी देबा पड़िबो. इंटरेस्ट बर्डन बढ़िबो बुझ पारले. डॉलर आउटफ्लो होबो. डॉलर जदी आउटफ्लो होबो, it may weaken the rupee. Rupee exchange rate fluctuations होबो. जदी weak rupee हला, then we may face what? Costly imports. बुझ पारले. So India's total public debt is how much? Near about 80% of GDP, but external debt is relatively low, is how much? Approximately 19% of GDP. This is important because domestic debt is generally safer than foreign debt. तामाने out of total general debt, domestic debt टा बेसी हाई अछि ना foreign debt टा हाई अछि? Domestic debt हाई अछि. Fine. Domestic debt is higher than the foreign debt. That means India within the comfortable limit. Now why external debt can be risky? Yeah, sorry for the interruption. See, external debt. So this is much low. India's external debt is much lower than many developing economies facing debt crisis. Okay, why external debt can be risky? External debt usually has to be repaid in US dollars. जदि आपण suppose $1 जदि आपण $1 borrow करथिले at the rate of 90 rupees बुझ पारलम. जदि exchange rate जदि बढ़ी गला बुझ पारलम, suppose now exchange rate has become $1 is equal to 96 rupees, ताहले
आपन कॉस्ट बढ़ी ना बढ़ी गलानी बुझ पाछन ये कॉस्ट हैज इंक्रीज्ड so external debt can be risky बुझ पाले so India's external debt is within the comfortable limit fine जति की अछि कम अछि so ये देखो ये लिखा है if rupee weakens then repayment becomes more expensive आप 90 rupees रे किनितले गोटे डॉलर वर्तमान आपन को पे करिया पड़ो केते 96 rupees that means rupee becomes repayment becomes more expensive देखो short term and long term external debt long term external debt देखो इंडिया जति की external debt अछि बुझ पारलम India's external debt जति की external debt अछि तार long term debt forms about 82% of India's external debt long term that means more comfortable long term means more comfortable बुझ पारले why less risky why because this is considered safer because repayment is spread over many years बुझ पारले आपन को 15 वर्ष 20 वर्ष 30 वर्ष भीतर आपन को रीपे करिया पड़िबो so you have sufficient time at your disposal to repay the money किंतु जदि आपन को long term जदि आपन शॉर्ट टर्म जदि इफ योर फॉरेन एक्सटर्नल डेट इज शॉर्ट टर्म बुझ पारले दैट बिकम्स वेरी डेंजरस कहीं ना आपन फॉरेन करेंसी एक्सचेंज फॉरेन एक्सचेंज आपन अर्न करले ही आपन रीपे करि परिबे बुझ पारले एंड अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज इज नॉट दैट इजी बुझ पारछन आपन कंटीन्यूअसली एक्सपोर्ट करिया को पड़िबो यू हैव टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया को आसिया को पड़िबो इन टर्म्स ऑफ एफडीआई एंड एफआईआई बुझ पारले तो सेति पय जेहेतु इंडिया रो जति की एक्सटर्नल डेट अछि तार 82% होजी कोन लॉन्ग टर्म डेट दैट मींस द रिस्क और द बर्डन इज स्प्रेड ओवर द मेनी इयर्स सो इंडिया इज इन अ कंफर्टेबल जोन ओके सो countries with excessive short term external debt are more vulnerable to what financial crisis more vulnerable to financial crisis ताइना तांगे वर्षे भितरे तांको debt obligations को fulfill करिया को पड़िबो that is quite vulnerable so crisis and sudden capital outflows and currency collapse बुझ पारलो so now let's come to foreign exchange reserves as of now India's foreign exchange reserves is around how much 688.89 billion dollars थिला more than 700 थिला बुझ पारलम but recently अपन मन जानि थिबे RBI has burned near about 40 billion dollars बुझ पारलम and so as to control the weakening of rupee RBI has recently actually burned near about 40 billion dollars so सेति पे कमी जाई छी बुझ पारलम देखो India's foreign exchange reserves include what India's foreign exchange रो चारिटा component अछि बुझ पारलम India's foreign exchange reserves has four components. First component is your foreign currency assets maintained in global hard currencies like US dollar, upon euro, pound sterling, then Australian dollar भी रखी चिकेतरा बुझ पारले ट्रेड करिया पे and Japanese yen and Chinese currency बुझ पारले Chinese currency reserves रखी छि बुझ पारले then second is your gold reserves बुझ पारले second is your gold reserves third is your what special drawing rights an international reserve asset and fourth is your how much what is your fourth reserve tranche position so foreign exchange reserves of India has four components goto hoji apangar foreign currency assets in terms of US dollars euro Chinese renminbi then your Japanese yen and pound sterling buj parlem that is your first component second component is your gold reserves fine fourth component is your special drawing rights and fifth component is what reserve tranche position now India's latest forex reserves as of 2025 out of four components co component reserve बेसी अछि co component reserve ता बेसी अछि foreign currency assets बुझ पारले foreign currency asset reserves बेसी अछि followed by gold reserves then your special drawing rights and IMF reserve position what reserve tranche position मतलब reserve tranche position को sometimes it is also called as what gold tranche it is also called as gold tranche देखंतु एडी को कंपोनेंट रे केते रिजर्व अछि देखंतु फॉरेन करेंसी एसेट्स रे केते रिजर्व अछि पाकापाकी 545.90 बिलियन डॉलर्स रिजर्व अछि फाइन अच्छा गोल्ड रिजर्व केते अछि पाकापाकी 119.30 बिलियन डॉलर्स गोल्ड रिजर्व अछि बुझि पारले स्पेशल ड्राइंग्स इंडिया पाखरे केते बिलियन डॉलर्स स्पेशल रिजर्व स्पेशल ड्राइंग राइट्स अछि दैट इज 18.80 बिलियन डॉलर्स एंड रिजर्व ट्रांच पोजीशन इन IMF केते अछि पाकापाकी 4.86 बिलियन डॉलर्स बुझि पारले सो India's rank in global forex holding what is the India's rank in global forex holding that is your first of all China सबु to basic forex reserves का पाखरे अछि China पाखरे followed by Japan
then your Switzerland, then comes India. That means India is fourth. Hello. Okay, import cover जेतिकी फॉरेक्स रिजर्व इंडिया पाखरे अछि से फॉरेक्स रिजर्व साहाय्य रे इंडिया केते मास जाय इंपोर्ट करि परिबो केते मास 11 पॉइंट पाखा पाखी 12 मंथ्स बुझि परले पाखा पाखी नियर अबाउट 12 मंथ्स जाय इंपोर्ट करि परिबो बुझि परछन्ती जेतिकी रिजर्व्स अछि इंडिया पाखरे फाइन इंपोर्ट्स वेल अबव द जनरल नॉर्म ऑफ 6 मंथ्स जनरली कंट्रीज मानक पाखरे केते रिजर्व्स था 6 मंथ जाय इंपोर्ट कला पर रिजर्व्स था किंतु इंडिया पाखरे केते मंथ्स जाय इंपोर्ट कला पर रिजर्व्स अछि 12 months जाय बुझि परला आ गुटे पॉइंट देखो दिस इज क्वाइट इंपोर्टेंट पॉइंट 93% of India's external debt is covered by foreign exchange reserves 93% of India's external debt is covered by foreign exchange reserves ता माने इंडिया रो फॉरेन एक्सटर्नल डेट जेतिकी बुझि परला तार 93% India's external debt जेतिकी तार 93% is covered by what foreign exchange reserves ता माने हमरो पाखा पाखी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स केते अछि पाखा पाखी 688.89 बिलियन डॉलर्स बुझि परलम ता माने जदी हमें सपोज नै जिबा हमर फॉरेन एक्सटर्नल डेट अछि केते सपोज हमर एक्सटर्नल डेट अछि 700 बिलियन डॉलर्स बुझि परलम एक्सटर्नल डेट जदी अछि 700 बिलियन डॉलर्स ताले एक्सटर्नल डेट रो 93% will be covered by the foreign exchange reserves बुझि परलम एतिक बुझि परले समझते जेति कि हमर फॉरेन एक्सटर्नल डेट अछि फॉर एग्जांपल हमर एक्सटर्नल डेट अछि 700 बिलियन डॉलर्स देन 93% ऑफ 700 बिलियन डॉलर्स can be covered by the foreign exchange reserves we have in our country एतिक बुझि परले फाइन now let's come to the next foreign direct investment देखो what do you mean by foreign direct investment foreign direct investment means long term investment कहइतली long term investment made by a foreign company or individual in businesses or productive assets of another country जेतबळे foreign direct investment इंडिया को आसे ग्राउंड रे इन्वेस्टमेंट हुए बुझि परलम foreign direct investment आसीबो बुझि परछन्ती ग्राउंड रे इन्वेस्टमेंट हुए long term पे इन्वेस्टमेंट हुए foreign portfolio investment is always for the short term fine short term okay according to international standards followed by IMF Organization for Economic Cooperation and Development and Reserve Bank of India according to the international standards followed by these three institutions if a foreign investor owns 10% or more of the voting power or equity shares जदि गोटे कंपनी रो 10% किबा मोर देन 10% इक्विटी शेयर्स किनुची गोटे फॉरेन इन्वेस्टर then that investment is treated as what your foreign direct investment बुझि परलम this is the international standard generally कहियो खेले what is FDI जो इन्वेस्टमेंट इंडिया को लॉन्ग टर्म पे आउची बुझि परलम ग्राउंड लेवल इन्वेस्टमेंट होउची बुझि परछन that is your foreign direct investment but technically as per international standard what is your FDI is if a foreign investor owns 10% or more of the voting power that means equity shares बुझि परलम stake किनुची more than 10% stake किबा more than 10% stake hello in an enterprise the investment is treated as what foreign direct investment okay and if the ownership is less than 10% ताने गोटे foreign investor गोटे company रो less than 10% equity shares किनुची बुझि परले then that investment is treated as what your foreign portfolio investment fine foreign portfolio investment this is one important point देखंतु FDI is a non debt financial resource बुझि परछन that means what this means India does not have to repay FDI like a loan अच्छा इंडिया फॉरेन सोर्सेस रु बोरो करिवाटा भलो ना फॉरेन एफडीआई आसीवाटा भलो इंडिया को डॉलर दरकार ताले डॉलर टा बोरो करिवा दरकार बोरो करले माने इज इट बेटर टू बोरो मनी और इज इट बेटर टू हैव मोर एफडीआई व्हाई बिकॉज़ इंडिया डजंट हैव टू रीपे इंडिया विल नॉट बियर द इंटरेस्ट बर्डन बुझ परलम सो एफडीआई इज अ व्हाट नॉन डेट फाइनेंशियल रिसोर्स बुझ परछन जेति की बेसी एफडीआई जेति की बेसी एफआईआई बुझ परले एफआईआई इंडिया will not have to pay it back because it's not a loan fine okay so India doesn't have to repay FDI like a loan hence FDI is considered a stable source of what foreign capital जदि हमको foreign capital दरकार डॉलर रिजर्व दरकार then it is better to have more FDI than borrowing from external sources बुझि परले fine okay importance of FDI देखंतु importance समझ जानि थिबे what importance कोन
इंपोर्टेंस होची कैपिटल इनफ्लो हमर डॉलर रिजर्व्स पड़िबो जॉब क्रिएशन होबो एफडीआई तमे एफडीआई जदी इंडिया को आछी ताले लॉन्ग टर्म पे ही आसे आपण समझ जानि थिबे एफडीआई व्हेन कम्स लॉन्ग टर्म पे ग्राउंड लेवल रे इन्वेस्टमेंट हुए बुझ पारले जॉब क्रिएशन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फाइन योर इंडस्ट्रियल ग्रोथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन भी होबो बुझ पारले ओके करंट कॉन्टेक्स्ट कोन देखंतु एज पर द आरबीआई बुलेटिन करंट कॉन्टेक्स्ट कोन व्हाई दिस इज इन द न्यूज़ दिस वाज इन द न्यूज़ एज पर द आरबीआई बुलेटिन जून 2025 एटा दिस इज क्वाइट इंपोर्टेंट टू अंडरस्टैंड देखंतु gross FDI inflows increased. Gross FDI inflows increased, but net FDI inflows fell sharply by about how much? 96%. Now, what do you mean by this? Gross India ro gross FDI increase coaching, but net FDI कमी जाइछि by how much? 96%. Now, what do you mean by this? This is very important statement. देखो प्रथम बुझंतु what do you mean by gross FDI and net FDI? Gross FDI होउछि कोन गोटे वर्ष को टोटल केते एफडीआई केते वैल्यू रो एफडीआई इंडिया को आछी बुझ पारले टोटल फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंटरिंग इंडिया थ्रू एफडीआई रूट बुझ पारले टोटल इन्वेस्टमेंट नेट एफडीआई कोन होउची नेट एफडीआई इज ग्रॉस एफडीआई माइनस आउटफ्लोस तन टोटल इंडिया को गोटे वर्ष को केते एफडीआई इनफ्लो होउची बुझ पारले आ टोटल केते डॉलर रिजर्व आउटफ्लो होउची बुझ पारले दैट बिकम्स योर व्हाट नेट एफडीआई दैट मींस सपोज इट मींस meaning of net FDI it means what after subtracting money going out from money coming in the final FDI remaining in India is very small example देखंतु suppose financial year 2024 रे suppose gross FDI केते आसिला $50 billion रो FDI इंडिया को आसिला बुझ पारले but at the same time इंडिया रू केते डॉलर इन आउटफ्लो हला $10 billion रो आउटफ्लो हला बुझ पारले so net FDI is how much is $40 billion net FDI is how much $40 billion एबे 2025 रे देखंतु सपोज ग्रॉस एफडीआई केते आछि $60 billion बट आउटफ्लो केते हिजि $58 billion देन नेट केते हला नेट एफडीआई इज $2 billion दैट मींस जानि पछन दैट मींस ए जो स्टेटमेंट लिखाई छै ठी द स्टेटमेंट हियर नेट एफडीआई फेल बाय हाउ मच 96% दिस इज क्वाइट अ कंसर्न This is quite a concern for Indian economy. बुझ पारलो net FDI has fallen by 96%. Okay. Outgoing in terms of जदि इंडियन इन्वेस्टर्स माने बाहर इन्वेस्ट करछन्ती डॉलर आउटफ्लो होबो जदि इंडियंस माने बाहर एजुकेशन पे पढुछन्ती बाहर एजुकेशन पे माने हायर एजुकेशन पे बाहर को जाउछन्ती डॉलर आउटफ्लो होबो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स माने तांगे इन्वेस्टमेंट को विथड्रॉ करछन्ती कोन होबो डॉलर आउटफ्लो होबो बुझ पारलो आउटफ्लो इन टर्म्स ऑफ व्हाट बुझिपाले समझ बुझिपाले यस इंडियंस माने बाहर पढ़िबा को जाउचंती तल कोन नै कि जिवे डॉलर आउटफ्लो होउची जो फॉरेन इन्वेस्टर्स माने इंडिया रे इन्वेस्ट करथिले से इन्वेस्टमेंट को विथड्रॉ करनेले ताहले डॉलर आउटफ्लो होबो जो इंडियंस माने बाहर इन्वेस्ट करिया को चाहुचंती तल डॉलर नै कि जिवे बुझिपाले डॉलर आउटफ्लो एटा होची डॉलर आउटफ्लो फाइन सो net FDI has decreased by how much 96%. Reasons for decline in net FDI what? देखंतु profit repatriation जेते सब फॉरेन कंपनीज माने इंडिया रे अछंती बुझि परलो से माने वर्ष को किछि प्रॉफिट अर्न करथबे से प्रॉफिट टाको तांको पेरेंट कंट्री को होम कंट्री को ट्रांसफर करछंती को टर्म्स रे करिवे डॉलर टर्म्स रे करिवे सो डॉलर कोन होची आउटफ्लो होची फर्स्ट रीजन डिसइन्वेस्टमेंट किछि फॉरेन इन्वेस्टर्स माने इंडिया रे इन्वेस्ट करथले से माने तांको इन्वेस्टमेंट को विथड्रॉ करनौचंती बुझि परलो ताहाले भी से माने डॉलर ट्रांसफर होबो आउटफ्लो होबो बुझि परछंती थर्ड इज योर रेगुलेशन ऑफ एफडीआई ओवरसीज इन्वेस्टमेंट बाय इंडियन कंपनीज जो इंडियन कंपनीज माने जदी बाहर इन्वेस्ट करछंती ताहाले भी डॉलर नै कि जिवे ताले भी कोन डॉलर आउटफ्लो होची बुझि परलो ओके एंड फाइनली इज योर रेगुलेशन ऑफ एफडीआई इन इंडिया अच्छा एफडीआई को रेगुलेट को बॉडीटा करे के करे एफडीआई को रेगुलेट के करे इंडिया रे एग्जाम पर्सपेक्टिव मन जानि थांतो के करे डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड हेलो दिस डिपार्टमेंट अंडर व्हिच पॉलिसी अंडर एफडीआई पॉलिसी 2020 and Foreign Exchange Management Act 1999 फाइन ओके अच्छा आपण जानि थिबे एफडीआई रो दीटा रूट अछि गोटे होची कोन एफडीआई रो दीटा रूट अछि गोटे होची ऑटोमेटिक रूट आ गोटे होची गवर्नमेंट रूट बुझ पारले एफडीआई दीटा रूट गोटे होची ऑटोमेटिक रूट एंड गवर्नमेंट रूट जो एफडीआई टा ऑटोमेटिक रूट देई कि आछी इंडिया को इन्वेस्टमेंट पय आछी बुझ पारले गवर्नमेंट तो परमिशन नबा दरकार नै फॉर एग्जांपल गोटे फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया रे सपोज टेक्सटाइल सेक्टर रे इन्वेस्ट करिया को चाहूची दैट मींस ही डजंट नीड द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट फाइन सपोज गोटे फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया को आछी
फार्मास्यूटिकल सेक्टर रे इन्वेस्ट करबा पई ही डजंट नीड द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट. सपोज गोटे फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया को आछि इलेक्ट्रॉनिक्स रे इन्वेस्ट करबा पई ही डजंट नीड व्हाट गवर्नमेंट परमिशन. किंतु सपोज गोटे फॉरेन इन्वेस्टर आछि डिफेंस सेक्टर रे इन्वेस्ट करबा पई, डिफेंस इज अ सेंसिटिव सेक्टर बुझ पारले, देन ही रिक्वायर्स व्हाट गवर्नमेंट परमिशन बुझ पारले. सिमिलरली टेलीकॉम सेक्टर रे जदी इन्वेस्ट करिया को चाहउछन फॉरेनर्स माने ताहले भी गवर्नमेंट परमिशन दरकार. जदी मीडिया सेक्टर रे भी जदी इन्वेस्ट करिया को चाहउछन ताहले भी गवर्नमेंट परमिशन दरकार ल. सो ऑटोमेटिक रूट गोटे अछि, आपनकर गोटे कोन अछि गवर्नमेंट रूट अछि बुझि परले. ऑटोमेटिक रूट माने यू डोंट नीड गवर्नमेंट परमिशन इन सर्टेन सेक्टर्स. फॉर एग्जांपल जेमति फार्मास्यूटिकल्स हे गेला, टेक्सटाइल्स हे गेला, इलेक्ट्रॉनिक्स हे गेला, आईटी सेक्टर हे गेला बुझि परले. एंड जदी फॉरेन इन्वेस्टर्स माने डिफेंस सेक्टर रे इन्वेस्ट करिया को चाहउछंती, मीडिया टेलीकॉम बुझ पाले, देन दे रिक्वायर व्हाट गवर्नमेंट परमिशन. फाइन, बिकॉज दे आर सेंसिटिव सेक्टर्स. अच्छा, टॉप स्टेट्स रिसीविंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट एफडीआई के व्हिच आर द टॉप स्टेट्स? महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात बुझ पाले. टॉप स्टेट इज महाराष्ट्र. टॉप स्टेट्स आर महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड गुजरात. दीज आर द स्टेट्स व्हिच आर रिसीविंग व्हाट हाईएस्ट एफडीआई. हेलो. अच्छा, रीजंस कौन? व्हाट आर द रीजंस? रीजंस कौन? better infrastructure, skilled workforce, industrial ecosystem, strong IT and manufacturing sectors. Fine, these are the reasons. Top investing countries किए को country India is सबुठ बेसी FDI आनुची? Singapore, Mauritius and USA. The top रे किए अछि Singapore. Fine. Okay. Now let's come to understand the steel sector. Steel sector कौन देखो तो context. What is the context? Context is recently the Ministry of Steel notified the revised domestically manufactured iron and steel products policy. ये जो domestically manufactured iron and steel product policy अच्छी आपको रिवाइज करा गला बुझ पारले. Now what was the need to revise this policy? What was the need to revise this policy, that is domestically manufactured iron and steel products policy? What was the need? देखो aim कौन, objective कौन? What is the objective of this policy? The objective of this policy is to promote domestically manufactured steel. Yes, domestically manufactured steel, self-reliance माने अन्य countries मानन को ऊपर dependent न है कि कौन निजे produce करिवा. Self-reliance and use of Indian steel in government projects. हेलो देखो तो कौन होची. प्रथम बुझंतु major steel producing states in India. Which are the major steel producing states in India? Odisha, Chhattisgarh and Jharkhand. बुझ पारले. Odisha, Chhattisgarh and Jharkhand are the major steel producing states in India. Global steel position देखो तो China is the world's biggest steel producer in the world. China is the biggest steel producer in the world, followed by what? Followed by which country? India. Then followed by which country? India. In terms of consumption, China is the biggest consumer of steel in the world and India is the second largest consumer in the world of steel. Third is sorry, USA is second and third is India. USA is second and third is India. So India is the third largest steel consumer in the world. Fine. देखो तो टारगेट कौन अच्छे? As per this policy, as per this domestically manufactured iron and steel products policy, what is the target? देखो तो टारगेट कौन? Currently India annually कितने million tons produce करची steel, crude steel? 150 to 160 million tons of crude steel produce करची India. Target होची by 2034 India is expecting to produce how much? 500 million tons annually. Fine. By 2034 India is targeting to produce 500 million tons of crude steel. Fine. Achha. This shows that what? India plans massive industrial expansion. This shows what? India's massive industrial expansion by plan करची. Fine. एबे देखो तो what do you mean by green steel taxonomy? Green steel taxonomy launch के बे इतला green steel taxonomy 2024 launch इतला by which ministry? Ministry of Steel. Why steel in देखो तो कौन पाई green steel taxonomy कौन पाई launch इतला? Because steel industry what causes pollution. Steel industry causes pollution. कहीं ना steel को produce करिया पे कौन दरकार? Coal दरकार बुझ पारले, blast furnace दरकार, high energy consumption दरकार बुझ पारले. So what this releases what? Carbon dioxide and greenhouse gases. So greenhouse gas means green steel means steel produced using what? Cleaner energy, renewable energy बुझ पारले, hydrogen technology, low carbon processes बुझ पारले. जदि हमें
क्लीनर एनर्जी माने रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करके स्टील प्रोड्यूस करिवा पोल्यूशन कम हो बुझ पारले देन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी हे गेला लो कार्बन प्रोसेस हे गेला बुझ पारले दिस वाज द रीजन सो दैट वाज द व्हाट दैट इज व्हाई द गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग व्हाट ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी फाइन ओके व्हाई डज इंडिया देखो इंडिया is already the second largest producer of steel in the world. India is already the second largest producer of steel in the world. Hello. Tahale, why does India need a domestically manufactured steel policy even though it is the second largest producer? Tal kon pa darkar? Kon pa darkar? Dekhon. Being a eta apun bujhia padibo. Being a largest producer does not automatically mean all steel used in India is made in India. Bujh parlu? India largest second largest producer of steel এটা true but that doesn't mean India jete steel use करूची सबु steel कोन made in India ही अछि बुझ पारलु किछिटा high grade steel India produce करि पारेनी देखन reasons कोन India still imports certain types of steel India still imports what certain types of steel what kind of steel defense grade steel बुझ पारलु India कोन करिया पड़े import करिया पड़े defense grade steel ऑटोमोबाइल स्टील इलेक्ट्रिकल स्टील हाईटेक इंडस्ट्रियल स्टील बुझ पारलम ए सब स्टील कोन इंडिया कोन करे बाहर इंपोर्ट करे बुझ पारलम तो ए सब जो डिफेंस ग्रेड स्टील हे गेला ऑटोमोबाइल स्टील हे गेला ए दिस काइंड ऑफ हाई ग्रेड स्टील को इंडिया रे मैन्युफैक्चर करबा पई इज दैट पॉलिसी बुझ पारलम डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड पॉलिसी फाइन द पॉलिसी एनकरेजेस व्हाट प्रोडक्शन एंड यूसेज ऑफ इंडियन मेड स्टील इंस्टेड ऑफ imports बुझ पाछनी the policy encourages production and usage of Indian made steel instead of what imports government wants make in India government wants what make in India large infrastructure projects use enormous steel अपन रेलवे रे बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ स्टील दरकार ब्रिज कंस्ट्रक्शन करिया स्टील दरकार मेट्रोस पई डिफेंस प्रोजेक्ट्स पई बुझ पाछन द गवर्नमेंट वांट्स these projects to purchase steel manufactured within India किंतु এই যে প্রজেক্টস পাই जो স্টিল টা দরকার that is high grade steel আর high grade steel রে ইন্ডিয়া রে কোন কম ম্যানুফ্যাকচার হয় সেতি পাই ইন্ডিয়া কোন করিয়া পড়ে বাহারু ইম্পোর্ট করিয়া পড়ে সেতি পাই গভর্নমেন্ট কোন চাহুची high grade steel को इंडिया रे ही मैन्युफैक्चर करिवो and these projects will use the steel which is manufactured in India fine this increases what domestic demand this increases industrial growth this increases employment and overall economic growth fine now protecting domestic industry देखो आ गोटे रीजन होची कोन से पॉलिसी रे आ गोटे रीजन होची हम जानि थिबे चाइनीज स्टील इज कंपैरेटिवली चीपर टू इंडियन स्टील बुझ पाले चाइनीज स्टील इज कंपैरेटिवली चीपर टू इंडियन स्टील so cheap imported steel especially from China can hurt Indian producers fine now if imports flood the market Indian companies may lose profit factories may suffer and jobs may be affected sethipai what the policy does the policy promotes preference for what Indian steel producers kintu lokomani Indian steel high grade Indian steel kinibe ketole jetole India re high grade steel produce hobo manufacture hobo bujh parle that is the reason why policy and strategic importance bhi rahichi strategic and economic importance of steel dekhantu steel is a core industry important for infrastructure defense industrialization jodi ame if we depend heavily on imports then it would become risky during what wars global crisis supply disruptions bujh parlam so domestic manufacturing improves what self reliance and economic security fine तापर आसंतो कोल सेक्टर देखियो कोल सेक्टर देखो कोल इज अ फॉसिल फ्यूल ओके कोल इज अ फॉसिल फ्यूल एनर्जी सोर्स एंड इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल फाइन सो इंडियाज ग्लोबल पोजीशन देखो विथ रेस्पेक्ट टू कोल इंडियाज व्हाट इज द ग्लोबल पोजीशन ऑफ इंडिया कोल रिजर्व्स विथ रेस्पेक्ट टू कोल रिजर्व्स इंडिया इज द फिफ्थ लार्जेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू कोल रिजर्व्स इंडिया इज द फिफ्थ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड विथ रेस्पेक्ट टू कोल प्रोडक्शन इंडिया इज द second largest producer of coal in the world with respect to coal consumption India is the second largest consumer of coal okay now top coal reserve states in India ki achandi Jharkhand Odisha and Chhattisgarh top coal reserve states in India Jharkhand Odisha and Chhattisgarh these three states together account for how much 69% of India's total
coal reserves एति बुझी पाछन जेति coal reserves India रे अछि तार 69% of coal reserves को states रे अछि झारखंड ओडिशा एंड छत्तीसगढ़ रे अछि अच्छा गोंडवाना coal रो इंपोर्टेंस कोन एक्चुअली गोंडवाना coal why because India has maximum reserves of which coal Gondwana coal okay what do you mean by Gondwana coal refers to coal formed during the Gondwana geological period around 250 million years ago fine that is Gondwana coal and Gondwana coal accounts for how much accounts for about 98% of what India's coal reserves India पाखरे जेति की भी coal reserve अछि तारा 98% होउछि कोन Gondwana coal fine and contributes around 99% of what coal production बुझ परले इंडिया रे जेति की coal produce होउछि 99% of the coal which is produced in India is what your Gondwana coal fine okay features Gondwana coal features कोन mainly bituminous coal okay good quality used for power and industry bituminous coal is a medium to high grade coal with relatively high carbon content and good heating value fine so it is the most widely used type of coal in India okay carbon content कितने होता है bituminous coal रे carbon content कितना है more the carbon content बुझ पाले more is the heating value बुझ पाले so around 45 to 86% carbon content था fine higher carbon content means more heat production better fuel efficiency bituminous coal okay धानबाद देखो धानबाद को कौन कुआ जाय धानबाद कोडी अछि झारखंड अछि धानबाद को कुआ जाय known as the coal capital of India fine Dhanbad so because major coal mining activities are concentrated here only Dhanbad okay around 50% देखो around 50% of India's power generation depends on coal and lignite which पर lignite भी good type of coal but with a low carbon content environmental impact of coal what is the environmental impact coal based thermal power plants emit what sulfur dioxide nitrogen dioxide mercury so these contribute to air pollution acid rain respiratory disease and climate change बुझ पालम so देखो types of coal it लिखा है types of coal कौन anthracite coal is the highest quality coal बुझ पालम with a carbon content of how much 86 to 97% highest heating value found mainly in Jammu and Kashmir bituminous coal कितने carbon content कितने 45 to 86% and India रे bituminous coal ही बेसी मिलुची which is Gondwana coal fine most widely used coal in India found in which states Jharkhand West Bengal Odisha Chhattisgarh Madhya Pradesh okay sub bituminous coal carbon content कितने 35 to 45% lower heating value than bituminous coal fine and lignite is the brown coal it is also called as brown coal lowest quality among the major commercial coals fine okay carbon content कितने 25 to 35% highest moisture content then low heating value okay uses is mainly electricity generation fine एबे आसन तो मखाना कहीं की इंपॉर्टेंट है जाए बिकॉज विथ रेस्पेक्ट टू मखाना देखो मखाना माने बुझ पाछन मखाना कोन मखाना जानि पाछन मखाना व्हाट इज मखाना इज आल्सो कॉल्ड एज व्हाट फॉक्सनट कोन विपरे फॉक्सनट गॉर्गन नट फूल मखाना किबा ब्लैक डायमंड भी कहा जाए बुझ पालन मखाना कहीं की जो करंट अफेयर्स तो कौन पे इंपॉर्टेंट बिकॉज देखो विथ रेस्पेक्ट टू प्रोडक्शन ऑफ मखाना व्हाट इज इंडियाज पोजीशन इंडिया इज द world's largest producer of makhana that's why this becomes important India is the world's largest producer of makhana 80% of global production which 80% of global production comes from India Bihar produces around 90% of India's makhana Bihar produces around 90% of India's makhana बुझ पाले जानि थांतु so other producing states are Assam हेगला Manipur West Bengal Tripura Odisha बुझ पाले ए स्टेट रे प्रोड्यूस हुए किंतु बट बिहार प्रोड्यूसेस अराउंड 90% of India's makhana fine global production ranking India is first then followed by Nepal और अन्य कंट्रीज भी प्रोड्यूस करंती बट इंडिया एंड नेपाल बेसी प्रोड्यूस करंती GI टैग देखंतु GI टैग जदि एग्जाम रे आसिला केवल मखाना बुझ पाले मिथिला मखाना जदि आसिला मिथिला मखाना रिसीव्ड GI टैग इन 2022 मिथिला मखाना माने मिथिला होउची कोन बिहार गोटे रीजन टा बुझ पाले मिथिला रीजन ऑफ बिहार बुझ पाले मिथिला मखाना को GI टैग मिलिची कोन इन 2022 ओके सो मीनिंग ऑफ GI टैग माने कोन टैग प्रोटेक्ट्स प्रोडक्ट्स लिंक्ड टू अ स्पेसिफिक रीजन एंड ट्रेडिशनल नॉलेज फाइन ओके तापर हम देखिबा कोन फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 now why this becomes an important news fiscal FRBM act 2003 why this becomes important देखंतु recently the comptroller and auditor general of India presented in parliament the annual review report
on compliance with FRBM Act 2003. Government, state government as well as central government FRBM Act 2003 अंडर रे जो रूल्स गुडा को अछि से रूल्स सहित कंप्लाई करूचंती ना नहीं बुझ पाले से रिपोर्ट टा प्रेजेंट करले कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया देखो दिस रिपोर्ट checks whether the government is following fiscal discipline and whether fiscal targets are being achieved or not. Government fiscal discipline को maintain करूची ना नहीं और government state government as well as central government fiscal deficit targets को follow करूचंती ना नहीं बुझ पालो देखो the FRBM Act was enacted in which year 2003. Why this act was enacted? FRBM Act को कहीं की enact करा गला देखो it was introduced to control what excessive government borrowing. Government मन इच्छा बोरो करथला before FRBM Act बुझ पालो government borrowings को control कर दिया गला बुझ पालो then reduce fiscal deficit प्रति वर्ष government जति की बोरो करछि ता टारगेट को भी कम कर दिया गला maintain economic stability ensure responsible financial management by the government fine before 2003 before FRBM Act government कौन बोरो करथला काटू RBI टू बुझ पालो RBI to borrow करथला and since RBI is 100% owned by the government of India the government से पैसाटा most of the time फेरो नथला RBI को बुझ पारले why because RBI is 100% owned by government of India fine सेति पई होतला कोन problem was inflation in the economic instability बुझ पारले government रो accountability भी रहनथला government कहा को आंसर देबो RBI but RBI is 100% owned by the government बुझ पारले accountability केतोळे आसीबो जेतोळे गवर्नमेंट बोरो करिवो काठू लोक मानकठू that means now government is answerable to the people काना लोक मानकठू बोरो करछि गवर्नमेंट बुझ पारलम so FRBM Act इंट्रोड्यूस करा हितला to control excessive borrowing by the government and to maintain fiscal deficit targets fine देखो this act is based on article 292 of the constitution which gives borrowing powers to the central government जदि borrow करूची ताले power टा दोउची किए who or which act authorizes the central government to borrow this which article 292 of the constitution authorizes the central government to borrow from the market okay why FRBM Act was needed already मैं अपन कहली जे government borrowing को control करिवा पई public debt burden को कमेवा पई okay excessive borrowing can lead to what excessive borrowing can lead to inflation excessive borrowing can lead to higher interest burden yes then economic instability and crowding out of private investment what do you mean by crowding out of private investment माने कोन what do you mean by that crowding out of private investment ता माने होची suppose government जदि market रो बेसी बोरो कला बुझ परलम ताहले money supply with banks कमिवो ना बढ़िवो जदि गवर्नमेंट जदि मार्केट रो बेसी बोरो करला बुझ पाले बैंक्स मानन जदि बेसी बोरो करछि थ्रू योर ई-कुबेर प्लेटफॉर्म ओके ताहले बैंक्स मानन पाखर लिक्विडिटी कमिवो ना बढ़िवो जदि बैंक्स मानन पाखर लिक्विडिटी कमिला देन व्हाट विल हैपन टू द इंटरेस्ट रेट्स will become increase जदि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हला ताहले प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट पय बोरो करि परिबो कि बैंक्स रो कारण इंटरेस्ट रेट हाई अछि गवर्नमेंट बोरो करला बुझ पारले मार्केट रो गवर्नमेंट बोरो करिवा जोगु लिक्विडिटी सप्लाई कमिवा जोगु बैंक्स माने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़े देले रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़िवा जोगु प्राइवेट इन्वेस्टर्स माने बैंक्स माने टू हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन नहीं परिबे कि नहीं परिबे नाही दैट मींस हाई गवर्नमेंट बोरोइंग कैन लीड टू क्राउडिंग आउट ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बुझ पारले दैट मींस क्राउडिंग आउट फाइन सो या माने होची क्राउडिंग आउट the excessive government borrowing can lead to what inflation okay then higher interest burden economic instability will come from what high inflation fine and crowding out of private investment okay therefore FRBM Act was introduced to bring fiscal discipline into government finances now what do you mean by fiscal discipline माने होची कोन means the government should spend what responsibly बुझ पारलम आगुरु जेहेतु देखो before 2003 before FRBM Act government का तो बोरो करथला RBI to बोरो करथला but RBI was 100% owned by the government of India सेति पई government cautiously किबा responsibly कोन खर्च करनतला पैसाटा को बुझ पारलम government को जेतोळ दरकार से RBI to बोरो करि परथला किंतु after FRBM Act government is not allowed anymore
to borrow from RBI for long term. Long term ପାଇଁ RBI long term ପାଇଁ government RBI ଠୁ borrow କରିପାରିବ ନାହିଁ. ଯଦି long term ପାଇଁ borrow କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ government କାଠୁ borrow କରିବ? Market ରୁ borrow କରିବ. ଯେହେତୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ borrow କରୁଛି government, now government will become what? More responsible. Because now government is answerable to the people. ବୁଝିପାରିଲେ? Okay. So fiscal discipline means government should spend responsibly and avoid what? Unnecessary expenditure. Then it means expenditure should be controlled, borrowing should remain sustainable borrowing. ବୁଝିପାରିଲେ? ଯଦି ଆମେ ଯେତିକି borrow କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସେତିକି ଫେରେଇ ପାରିବାର କ୍ଷମତା ଥିବାର ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ. ବୁଝିପାରିଲେ? ଓକେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଫେରେଇବା କ୍ଷମତା ଅଛି 10 rupees, ଆପଣ borrow କରୁଛନ୍ତି 100 rupees. That is not sustainable. ବୁଝିପାରିଲେ? So borrowing should remain sustainable and debt should not become excessive. Fine. Important fiscal concepts. देखो, first is your what? Fiscal consolidation. Fiscal consolidation. First होची आपन fiscal deficit. Fiscal deficit माने कौन? Fiscal deficit means what? When government's total expenditure exceeds its total revenue. When government's total expenditure exceeds its total revenue excluding borrowings. In simple words, the amount the government needs to borrow in a year. गोटे वर्ष को गवर्नमेंट जेतिक टंका बोरो करूची सेटा होछ कोन गवर्नमेंट रो फिस्कल डेफिसिट. फॉर एग्जांपल India is planning to spend 150 rupees, but India's receipts kete 100 rupees. बुझ पारले? Then what is the deficit? What is the fiscal deficit of India? बर्तमान डेफिसिट कते अछि? डेफिसिट हम 50. बुझ पारले? ए 50 की फाइनेंस केमिति करिवो? How the government would finance this deficit of 50 rupees? Through borrowing. So 50 rupees become what? Fiscal deficit. बुझ पारले? Okay. So and next is your fiscal consolidation. What do you mean by fiscal consolidation? See, fiscal consolidation means gradual reduction in fiscal deficit and debt over time. धीरे धीरे गवर्नमेंट कौन करिवो तार फिस्कल डेफिसिट टार्गेट्स को कौन फिस्कल डेफिसिट को कमेइबो. बुझि पारलम? सपोज ए वर्ष जदी से 100 टका बोरो करछि, नेक्स्ट ईयर 95 रुपीस बोरो करिवो. बुझि पारलम? आ द नेक्स्ट ईयर 90 रुपीस बोरो करिवो. तो फिस्कल डेफिसिट को धीरे धीरे कौन करिवो गवर्नमेंट? कमेइबो. बुझि पारलम? फिस्कल डेफिसिट को भी कमेइबो और डेट को भी कमेइबो ओवर टाइम. हलो, how the government is going to do that? गवर्नमेंट केमिति कमेइ परिवो तार फिस्कल डेफिसिट को एंड डेट को? हाउ? by having responsible spending. बुझ पारले? by having responsible spending. Okay. The government tries to reduce unnecessary expenditure. गवर्नमेंट को unnecessary expenditure reduce करिवा को पड़िवो, रेवेन्यू को इंक्रीज करिवा को पड़िवो एंड बोरोइंग को भी कम करिवा को पड़िवो ग्रेजुअली. दिस इज फिस्कल कंसोलिडेशन. फाइन. अमेंडमेंट देखो तो अमेंडमेंट FRBM एक्ट आपनकर केबे आस्तला 2003 रे. फाइन. एक्ट पास हेतला केबे 2003 रे. And since then, the FRBM Act has been amended 4 times. In 2004 रे amend हेतला, 2012 रे भी amend हला, 2015 रे भी amend हेतला, 2018 रे भी amend हला. बुझ पारलम? To adjust targets according to the changing economic conditions. Fine. Now mandatory documents under FRBM Act. Under the FRBM Act, the government must present 4 important documents in Parliament every year. Under the FRBM Act, the government must present 4 important documents in Parliament every year. First document ta kono? आपनकर medium term fiscal statement. Hello. The medium term fiscal statement कौन actually? This document gives future deficit targets. Future revenue projections, future borrowing plans, usually for next 3 years. Okay. Next document होची कौन? Fiscal policy strategy statement. What do you mean by fiscal policy strategy statement? This document explains how the government plans to achieve its fiscal target. प्रथम होची कोन फिस्कल टारगेट गोटे सेट कर देला गवर्नमेंट. ओके, नेक्स्ट ईयर टारगेट केते रहइबो? 4.5% ऑफ जीडीपी. गवर्नमेंट विल बोरो अप टू 4.5% ऑफ जीडीपी टारगेट फिक्स करला. ए टारगेट को अचीव कमित करिवो सेटा सेकंड डॉक्यूमेंट रे से मेंशन करथिबो. दैट इज योर फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट. फाइन. नाउ दिस डॉक्यूमेंट एक्सप्लेन्स how the government plans to achieve its fiscal targets, which includes what? Taxation strategy, which includes what? Subsidy management, which includes expenditure control, borrowing plans and disinvestment policy. एटा को बुझी पारले? जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट अछि आपनकर मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट. एही स्टेटमेंट रे से कोन तार फिस्कल डेफिसिट टारगेट को मेंशन करथियो. फॉर एग्जांपल, नेक्स्ट ईयर within the next 3 years I will reduce my fiscal deficit to
4.5% of GDP किंबा 3% of GDP. This is your fiscal deficit target. एबे fiscal deficit target को किमिति अचीव करिवो बुझ पारले सेटा सेकंड डॉक्यूमेंट रे मेंशन करथिवो बाय व्हाट बाय मेंशनिंग द टैक्सेशन स्ट्रेटजी कोन टैक्स लॉस को किमिति चेंज करिवो बुझ पारले स्ट्रेटजी मेंशन करथिवो सब्सिडी को मैनेज किमिति करिवो एक्सपेंडिचर को कंट्रोल किमिति करिवो बोरोइंग प्लान्स एंड डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी बुझ पारले सब मेंशन हेतिवो सेतरे देन इज योर मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट थर्ड डॉक्यूमेंट होची कोन मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट ये जो मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट अंडर दिस डॉक्यूमेंट द गवर्नमेंट विल प्रेजेंट ओवरऑल पिक्चर ऑफ द इकोनॉमी जीडीपी केते को रेट रे बढ़ुची बुझ पारले रेट ऑफ पॉवर्टी केते अनएम्प्लॉयमेंट केते बुझ परछंती इन्फ्लेशन केते फॉरेन एक्सचेंज केते बुझ परछंती व्हाट आर द जियोपॉलिटिकल रिस्क कोन व्हाट आर द एक्सटर्नल रिस्क दैट कुड अफेक्ट इंडिया बुझ पारले सब एंटायर ओवरऑल इकोनॉमी रे कोन सिचुएशन मेंशन करथिवो मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट रे then medium term expenditure framework statement is the fourth document which is presented देखो FRBM target देखो original target in 2003 the original target was how much 3% of GDP. Why 3% target? Lower fiscal deficit helps in what? Controlling debt, reducing inflation, maintaining macroeconomic stability and improving what? Investor confidence. But FRBM review committee, NK Singh committee, a committee headed by NK Singh reviewed the FRBM framework. Major recommendations कौन थिला? Debt to GDP ratio हमें देखते लेके थे overall general government debt कितना हो 60% बुझ पा लें that means that the total government debt should remain below what? Should 60% of GDP recommend करते की recommend करते FRBM review committee headed by NK Singh. Okay, and division is center 40%, state 20%. Current fiscal target कितना देखो government aims to reduce fiscal deficit meaning year on year borrowing aims to reduce fiscal deficit below how much 4.4% of GDP by the year 25-26. Okay, but by the year 25-26 the government aims to reduce fiscal deficit below how much 4.4% of GDP. By year 26-27 the fiscal deficit target is how much 4.3% of GDP. बुझ पारलो 25-26 रे fiscal deficit target थिला केते 4.4% of GDP. 26-27 रे fiscal deficit target केते अछि 4.3% of GDP. Okay, fiscal deficit recently increase count पे करथिला. Why the fiscal deficit target has increased recently? Because of outbreak of corona pandemic है कौन pandemic time रे कौन government welfare spending कला बुझ पारलो infrastructure spending कला बुझ पारलो तापरे economic slowdown जोगु so government had to borrow what? Government borrowing increased sharply during this period. Okay, अच्छा FRBM act under रे किछटा exemptions भी अछि. There are some exemptions under the FRBM act. कौन exemption देखंतु गवर्नमेंट टारगेट प्रति वर्ष टारगेट फिक्स करूची बुझ पारल ए वर्ष हमें 4.3% ऑफ जीडीपी बोरो करिवु नेक्स्ट ईयर हमें 4.4% ऑफ जीडीपी किंबा 4.2% ऑफ जीडीपी बोरो करिवु बुझ पारल प्रति वर्ष टारगेट सेट करे किंतु एग्जाम्पशंस अछि केतण देयर आर सम एग्जाम्पशंस अंडर एफआरबीएम एक्ट देखंतु गवर्नमेंट कैन टेम्पररली एक्सीड एफआरबीएम टारगेट कोन वायलेट करि परिबो गवर्नमेंट द गवर्नमेंट कैन वायलेट द टारगेट इन सिचुएशन ऑफ व्हाट war बुझ पारले national security threats natural calamities severe economic slowdowns and during pandemics बुझ पारले एई परि सिचुएशन जदी अराइज हुए then the government can violate its own fiscal deficit targets. Fine, government is allowed. Now let's come to income tax bill देखो इनकम टैक्स बिल को अमेंड करा गला इन 2025 बुझ पारले देखो कोन पई प्लीज सी इनकम टैक्स सिस्टम इन इंडिया हैज बीन फंक्शनिंग अंडर द व्हिच एक्ट इनकम टैक्स एक्ट 1961 फॉर मोर देन हाउ मेनी इयर्स 60 इयर्स बुझ पारले फॉर मोर देन 60 इयर्स ओवर these decades the law was amended many times. Fine, because of this the act became extremely lengthy
टेक्निकल एंड डिफिकल्ट फॉर ऑर्डिनरी टैक्स पेयर्स टू अंडरस्टैंड बुझी पारले टेक्निकल जार्गन्स को यूज करिकि एक्ट को बहुत थरे कोन अमेंड करा हेतला फाइन many provisions became what outdated provisions बुझी पारले provisions were outdated because the economy itself changed drastically after 1961 okay at that time there was no digital economy yes there was no digital economy there was no online payment system there were no cloud storage system and there were no cryptocurrencies बुझी पारले but आज के डेट सब अछि okay and no social media based business activity okay but आज के डेट रे we also have what social media based business activity okay सेति में कोन करल देखंतु but today most financial activity happens what digitally okay therefore the government introduced what the income tax bill 2025 to modernize the entire taxation framework and make it simpler clearer and more suitable for the digital economy I think बुझी परछन fine now the new law has come into force from 1st April 2026 the new law has come into force from 1st April 2026 एबे देखिबा कोन चेंजेस है चलो व्हाट आर द चेंजेस देखो one of the most important changes introduced in the new bill is the concept of tax year under the old income tax act there were two separate concepts गोटे होची कोन previous year आ गोटे होची assessment year देखो दैट एग्जांपल सपोज आपण इनकम अर्न करले को ईयर रे 24-25 रे इनकम अर्न करले दैट ईयर वाज कॉल्ड द प्रीवियस ईयर दीटा कांसेप्ट थिला ना प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर आपण इनकम अर्न करले इन 24-25 दैट ईयर वाज कॉल्ड व्हाट प्रीवियस ईयर बट द टैक्स ऑन दैट इनकम वाज कैलकुलेटेड इन व्हिच ईयर 25-26 आपण इनकम अर्न करले को ईयर 24-25 रे किंतु जो इनकम टा आपण अर्न करले 24-25 रे ऑन दैट इनकम टैक्स कैलकुलेशन केबे हलो 25-26 को कोन कहबा हमें असेसमेंट ईयर बुझ परले ओके व्हिच वाज कॉल्ड द असेसमेंट ईयर सो tax payers constantly had to deal with two different years for the same income okay the new bill removes this confusion completely by introducing only one concept that is your tax year बुझ परले तो वर्तमान टैक्स ईयर और असेसमेंट ईयर गोटे ही बुझ परछन फाइन व्हिच सिंपली मींस अप्रैल 1 to 31st मार्च इज योर टैक्स ईयर भी असेसमेंट ईयर भी गोटे हे गेला बुझ परले बट अर्लियर टैक्स ईयर वाज डिफरेंट असेसमेंट ईयर वाज डिफरेंट this makes taxation easier to understand and reduces what legal complexity fine another important reform relates to what belated returns income tax act रे आ गोटे important change हेची कोन with respect to what belated returns belated माने what is belated आपण माने विश करंती संग माने को belated happy birthday बुझ परले so belated returns what do you mean by this देखो तो please see understand a belated return means filing income tax return after the डेडलाइन गवर्नमेंट गोटे टाइम फ्रेम देता है गवर्नमेंट जो टाइम फ्रेम भितर आपन को टैक्स रिटर्न फाइल करिया को पड़िबो बुझि पालन जदी आपन आगुर कोन होतला जदी आपन से टाइम फ्रेम भितर विद इन द टाइम फ्रेम ओके जदी आपन टैक्स रिटर्न फाइल करू नाहंती तापरे रिफंड होबाटा बुझि पाले तापरे आपन टैक्स अमाउंट को क्लेम करवाटा बहुत डिफिकल्ट हे जाउतला बुझि पालन बेले बेले रिफंड हो नथला भी फाइन देखंतु अर्लियर इफ अ टैक्स पेयर फाइल्ड लेट हला इनकम टैक्स रिटर्न को लेटर फाइल कला restrictions sometimes prevented them from claiming what tax refunds even if the government actually owed them money जदि मोर वर्ष को सपोज इनकम होची 12 लाख रु कम बुझ पल्ले ताले कोन मते रिबेट मिली जो 60,000 टका रिबेट मिलिबो मते टैक्स देबा दरकार नै बुझ पल्ले किंतु सपोज टीडीएस कटि छी मु जो इंस्टीट्यूट रे मु काम करूची बुझ पल्ले सपोज मते दरमा मिलला बेलकू इंस्टीट्यूट टीडीएस काटि के मो दरमा दउची बुझ पल्ले किंतु व्हाट इज माय टैक्स लायबिलिटी अकॉर्डिंग टू माय इनकम जदि मु गोटे वर्ष को सपोज 10 लाख इनकम करूची ताले मो टैक्स लायबिलिटी केते हला 0 बुझ परले किंतु टीडीएस कटिची बुझ परले से टीडीएस का पाकर अछि गवर्नमेंट पाकर तो जतो मु इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करबी मते मिलिबो रिफंड हबो बुझ परले किंतु जदि मु टाइम फ्रेम भीतर जदि इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल न करली अर्लियर कोन होतला देन द प्रोसेस विल बिकम डिफिकल्ट ताले आपण रिफंड पाइबाटा एक्चुअली डिफिकल्ट हे जो बुझ परले बिकॉज़ ऑफ सम रेस्ट्रिक्शंस फाइन सो अर्लियर कोन होतला देखंतु इफ अ टैक्स पेयर फाइल्ड लेट restrictions sometimes prevented them from claiming what tax refunds even if the government actually owed them money for example देखो
20,000 TDS was deducted from your salary, but your actual tax liability was only how much? 10,000. That means the government should ideally refund how much? 10,000. Refund kariya 10,000 to you. But if you file the return late, you could face difficulties in claiming this refund. Hello. So hella kon dekhante the new bill actually restores refund claims even for belated returns. बुझ पारले? The new bill restore refund claims even for the belated returns. This is the important because genuine taxpayers should not permanently lose their refund merely because they missed a deadline. बुझ पारले? एबे कोन restrictions उठे देला government fine. Now even deadline पड़ेला परे भी बुझ पारले? You can claim the refund. Okay, this is one of the important changes in the new income tax bill. Another major provision relates to TCS. TCS means what? Tax collected at source. TCS means what? Tax collected at source on education related foreign remittances. Education related foreign remittances. देखो to understand this first देखो प्रथम आपन को बुझिया को पड़िबो liberalized remittance scheme माने कौन? What do you mean by liberalized remittance scheme? या माने कौन? Under LRS ध्यान से बुझंतु under LRS Indian residents are allowed to send money abroad for purposes such as education. यदि आपण हायर एजुकेशन पई फॉरेन कंट्री जाउछंती देन यू आर अलाउड टू ट्रांसफर मनी बुझ पारले हला ताकू भी कोन को जाय रेमिटेंस को जाय यू आर अलाउड टू ट्रांसफर मनी बुझ पारले आपण अमेरिका रे पढिया को चाहउछन ताले आपण को डॉलर ट्रांसफर करिया को अनुमति मिलिबो बुझ पारले सो अंडर एलआरएस इंडियन रेसिडेंट्स आर अलाउड टू सेंड मनी अब्रॉड फॉर पर्पसेस सच एज एजुकेशन फॉरेन ट्रैवल आपण को मेडिकल ट्रीटमेंट पई बुझ पारले इन्वेस्टमेंट जदी करिया को चाहउछन बुझ पारले देन यू आर अलाउड टू ट्रांसफर द मनी बट and this LRS scheme liberalized remittances scheme this scheme is regulated by which institution entity RBI बुझ पाले मन रखितन now suppose देखंतु एबे देखंतु कोन होतला आगुरु कोन होतला देखंतु now suppose a student takes an education loan नेला and sends money abroad for university fees okay earlier tax TCS was deducted बुझ पाले earlier tax collected at source was applicable on such remittances बुझी पाले आपण एजुकेशन लोन नेले से लोन टाको डॉलर रे कन्वर्ट करले आपण फीस बांध देले आपण जो अमेरिका रे आपण पढिया को चाहछन बुझी पाले किंतु ट्रांसफर करिया पूर्वरु इंडियन गवर्नमेंट कोन करतला टैक्स कलेक्ट करतला सोर्स रो ही टैक्स काट देउतला ता कोन को जाय टीसीएस टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स तमन आपण गवर्नमेंट को टैक्स पे करिवे तापर जेतिक रहला आपण टैक्स को कोन ट्रांसफर करि परिवे अमाउंट को टू आपण फीस देवा पई फाइन TCS means tax collected during the transaction itself before the final tax calculation. बुझ पारलम? Okay. Source ही अपन कोन government कोन करियो अपन टू tax नहीं जीवो बुझ पारलम? Okay. This increased what? This increased the financial burden on middle class families already struggling with expensive foreign education. Okay. अपन suppose foreign education ପାଇଁ suppose 50 lakhs loan करले. ता भीतर TCS किछि लक्ष्य पड़ेला बुझ पारलम? Which will increase your financial burden. Fine. Okay. The new bill removes TCS on education related remittances funded through financial institutions. बुझि पाले कोन the new bill actually removes what? TCS. वर्तमान जदी देखंतु जदी आपण लोन नै कि जदी हायर एजुकेशन पई माने फॉरेन रे पढिया को चाहउछन लोन नै कि ताले नो TCS आपण TCS दबा दरकार नै किंतु आपण जदी निजो पैसा खर्च करी कि जदी आपण बाहर हायर एजुकेशन पे जाउछन ताले TCS लागियो देखो The new bill removes TCS on education related remittances funded through financial institutions. In simple words, if the student is sending money abroad through an education loan, no TCS will be charged. बुझ पारले? This improves what? Affordability for students studying abroad. Fine. एबे देखन देछि जदी आपण जदी लोन नै चंदी फोन जदी आपण लोन नै चंदी ताले आपण को TCS देबा दरकार नै ओके TCS देबा दरकार नै एजुकेशन वाया एगुडा को मन रखिया दरकार नहीं केवल बुझिया पे लिखि छी बुझ पारलम किंतु एगुडा को जदी आपण मन रखि परिबे ताल बेटर हो काहे ना दीज आर डिफरेंट काना डॉलर जो आउटफ्लो होउची बुझ पारले काहे डॉलर आउटफ्लो होउची दीज आर द रीजंस बुझ पारले दीज आर द रीजंस एगुडा को जदी मन रखिबे ताले एग्जाम लिखिया पे बेटर सुविधा हो मेंस एग्जाम रे देखम एजुकेशन वाया अप्रूव्ड एजुकेशन लोन हला एजुकेशन लोन ओके केते परसेंट TCS 0% बट सेल्फ फंडेड एजुकेशन अब्रोड जदि आपण निजर हायर एजुकेशन को बुझ पारले सेल्फ फंड करचंती आपण पर पैसा अछि आपण लोन देबा दरकार नै आपण हायर स्टडी पे जाउचंती
তাহলে if the limit is above 10 lakh তাহলে আপনাকে কত পার্সেন্ট দেବାକୁ পড়িବ 2%, বুঝিপারলেন? ওকে, দেন মেডিকাল ট্রিটমেন্ট abroad, যদি মেডিকাল ট্রিটমেন্ট ପାଇଁ ଆପଣ ପଇସା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରୁଛନ୍ତି above 10 lakh ତାହେଲେ କେତେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ TCS? 2%. Similarly, overseas tour packages flat କେତେ? 2%. Foreign investment ଯଦି ଆପଣ ବାହାରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଷ୍ଟକ୍ ରେ, ପ୍ରପର୍ଟି, ବଣ୍ଡସ୍ ରେ, ତାହେଲେ କେତେ ପର୍ସେଣ୍ଟ TCS? 20% above 10 lakh. Okay. Similarly, gift remittances to relatives abroad भी ଲାଗେ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? So these are some sources, ହେଲା? Okay, ଏଗୁଡ଼ାକ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? Fine. କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଏଜୁକେସନ ଯଦି ଲୋନ୍ ନେଇକି ହାୟର ଷ୍ଟଡିଜ ପାଇଁ ଲୋନ୍ ନେଇକି ଯଦି ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଦେନ୍ नो TCS. Fine. This is one of the important changes. ଆଉ ଗୋଟେ important change ହେଇଛି କ'ଣ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବିଲ୍ ରେ? One of the most important and controversial changes relates to what? Digital searches. Digital searches. Now what do you mean by this? ଏବେ ସପୋଜ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ସପୋଜ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପେ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ରେଡ୍ ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲେ? ଆପଣଙ୍କ ରେଡ୍ ହେଲା, ରେଡ୍ କୋଉଠି ହେଇପାରିବ? ରେଡ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କ'ଣ? ଅଣ୍ଡର ରେଡ୍ जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अंडर रेड कौन कौन सर्च करि परिबो? कौन कौन सर्च करि देखंतु? अर्लियर इनकम टैक्स सर्च मेनली मेंट सर्चिंग हाउसेस, अपन घर सर्च करिवो, अपन ऑफिस सर्च करिवो, लॉकर भी सर्च करिवो, फिजिकल डॉक्यूमेंट सर्च करिवो, बुझ परले, इंस्पेक्ट करिवो. किंतु अंडर द न्यू बिल कौन इज बट टुडे financial information is often hidden digitally through emails, cloud storage, encrypted devices, online accounts, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. तो न्यू बिल बर्तमान इंट्रोड्यूस कौन कराइछि? जदि आपण टैक्स फांकुचंती डिवाइड करूचंती, बुझ पालम, देन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट along with houses, offices, lockers, physical documents आपनकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी सर्च करि परिबो, बुझ पाले, ऑनलाइन अकाउंट भी सर्च करि परिबो, एनक्रिप्टेड डिवाइसेस को भी सर्च माने कोन ए सर्च करि परिबो, क्लाउड स्टोरेज सर्च करिवो, इमेज को भी सर्च करिवो. दिस इज द न्यू इंट्रोडक्शन इन द दिस इज द न्यू, बुझ पालम. That means, therefore, the new bill expands the definition of what? Search to include what? Cloud storage, emails, social media accounts, virtual digital spaces. Fine. This reflects the transition towards what? Digital era tax administration. This reflects the transition towards digital era tax administration. Now, tax authorities can invest digital financial evidence also. Okay? Fine. However, किंतु प्रॉब्लम कौन इथे गोटे प्रॉब्लम अछि कोन? दिस क्रिएट्स व्हाट? प्राइवेसी कंसर्न्स. दिस क्रिएट्स व्हाट? प्राइवेसी कंसर्न्स बिकॉज डिजिटल सर्चेस में expose what? प्राइवेट कन्वर्सेशन, पर्सनल फोटोज, कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स एंड सेंसिटिव डेटा. बुझ पाले? सेति गवर्नमेंट कौन करछि? देयरफॉर द गवर्नमेंट हैज आल्सो इश्यूड व्हाट? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर. ओके, फॉर हैंडलिंग व्हाट? फॉर हैंडलिंग पर्सनल डिजिटल डेटा सीज्ड ड्यूरिंग सर्चेस. ओके, जो माने जो स्टाफ माने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जेतबे सर्च करेगा आसीबो आपनकर कोन ऑनलाइन अकाउंट्स हे गेला, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हे गेला, दे विल हैव टू फॉलो व्हाट? दे विल हैव टू फॉलो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स फॉर हैंडलिंग पर्सनल डिजिटल डेटा सीज्ड ड्यूरिंग सर्चेस. ओके, एंड द पर्पस इज व्हाट इज द पर्पस? द पर्पस इज टू एंश्योर lawful investigation, protection of privacy, prevention of misuse of personal information. Okay, these are the major changes. Now let's come to GST Council and GST 2.0. GST Council and GST 2.0. Now what do you mean by this? देखो, GST समझ जानी चाहिए. GST stands for what? Goods and Services Tax. It is an indirect tax. It is an indirect tax imposed on the what? On the sale of goods and services. GST replaced many old indirect taxes such as VAT, excise duty, service tax, entry tax, luxury tax, central sales tax. Okay. The main objective of GST was what? One nation, one tax. There were before GST there were multiple taxes, multiple indirect taxes, but the objective, the main important objective of GST is what? One nation, one tax across the country. Hello. This means creating a unified national market, reducing tax complexity and removing cascading effect of taxes. Janisandi cascading effect of taxes कौन? What is GST Council? देखो, GST Council कौन? The GST Council is a constitutional body. Okay, exam perspective जानिथिबा दरकार. The GST Council is a what? Constitutional body responsible for making recommendations related to GST. Okay, GST Council is a constitutional body responsible for making recommendations related to GST. कौन recommendations दिए हमें देखियो. It was established under which article? 279A(1) of the Constitution. Fine. The GST Council was created through which Constitutional Amendment Act? 101st Constitutional Amendment Act 2016. Okay.
व्हाई वाज जीएसटी काउंसिल क्रिएटेड? जीएसटी काउंसिल को कहीं क्रिएट करा गला देखो जीएसटी अफेक्ट्स बोथ सेंटर एंड स्टेट्स यस कहना आपनकर जीएसटी लेवी हो जतले दीटा कंपोनेंट था सीजीएसटी एंड एसजीएसटी जीएसटी अफेक्ट्स बोथ सेंटर एंड स्टेट्स अर्लियर सेंटर एंड स्टेट्स इंपोज सेपरेट टैक्सेस सेपरेट सेंटर सेपरेट इनडायरेक्ट टैक्सेस थिला स्टेट्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस थिला व्हिच क्रिएटेड व्हाट कॉन्फ्लिक्ट्स एंड complexity fine therefore a common platform was needed where center and states could jointly decide what GST matters okay GST matters thus GST council act as a what cooperative federal body for indirect taxation cooperative federal body for indirect taxation so what is the main role of GST council ro main role kon dekhantu under article 279a under article 279a4 of the GST council recommends what GST rates को कौन करियो recommend करियो GST rates को goods which goods will be exempted from GST recommend करियो threshold limit भी recommend करियो upper limit केते lower limit केते रहइबो tax GST रो fine and special provisions for some states okay देखो GST rates are not imposed unilaterally by center बुझ पारले केवल सेंटर माने जीएसटी को नहीं कौन डिसाइड करेंगे जीएसटी रेट्स को फाइन इंस्टेड सेंटर एंड स्टेट्स जॉइंटली डिसाइड देम इन जीएसटी काउंसिल मीटिंग्स ता माने सेंटर डिसाइड करि परिबनी सेंटर माने सेंटर एकला चाहिए कि डिसाइड करि परिबनी व्हाट विल बी द जीएसटी रेट्स व्हाट गुड्स विल बी exempted from जीएसटी व्हाट विल बी द थ्रेशोल्ड लिमिट and which states will be given special provision with respect to GST. Center alone cannot decide these matters. बुझ पारलम center and states together they will have to decide these matters. Fine. Now, GST rates are not imposed unilaterally by the center. Instead, center and states jointly decide them in GST council meetings. This reflects what cooperative federalism. Now let's understand composition of GST council. Composition कौन GST council composition कौन The GST council includes representatives from center and all states. Okay, members किए chairperson किए who is the chairperson Union Finance Minister head of the GST council. Okay, नोन रखता हूँ exam point of view Union Finance Minister that is the head of the GST council. Vice chairperson किए chosen by members of the council from among themselves usually a state finance minister. बुझ पारलम state finance minister. Other members हो चुके किए Union Minister of State for Finance and Revenue and Finance, Taxation Ministers of all states. Fine. Secretary GST Council secretary किए the Union Revenue Secretary act as the ex officio secretary of GST Council. जो civil servant है जो कौन जो civil servant Revenue Department रो secretary है जो बुझ पारलम automatically सी कौन GST Council रो भी secretary है जो बुझ पारलम ex officio secretary because GST impacts revenues of both center and states therefore both levels of government participate equally in discussions voting meetings and voting system for a GST council meeting to be valid for a GST council meeting to be valid at least half of the total members must be present जदि गोटे मीटिंग हबार अछि बुझ पारलम जदि मीटिंग टाको बातिल न करियो बातिल केतळ हबो मीटिंग केतळे प्रोसीड हबो केतळे प्रोसीड करियो मीटिंग टा जेतळे 50% ऑफ द जीएसटी काउंसिल मेंबर्स माने प्रेजेंट अछंती ताले ही मीटिंग टा हबो बुझ पारलम इफ less than 50% of the members are present बुझ पारलम देन मीटिंग टा कोन हिजो बातिल हिजो बुझ पारलम ओके सो दिस मिनिमम प्रेजेंस रिक्वायरमेंट इज कॉल्ड व्हाट quorum सुनचंती quorum this minimum presence requirement is called what quorum decision making देखो तो decision making GST council decisions require what GST council decisions require 3/4 majority of weighted votes 3/4 majority of weighted votes माने पाखा पाखी गोटे GST council रे जहां भी decision pass हबो से decision pass होआ पई केते परसेंट वोट्स दरकार 75% वोट्स दरकार बुझ पाले 75% वोट्स दरकार देखो तो वोट सिस्टम वोटिंग सिस्टम देखो तो सेंट्रल गवर्नमेंट पाखर केते वोट अछि 1/3 votes all states together पाखर केते अछि 2/3 votes बुझ पाले डिसीजन पास होगा पे केते परसेंट वोट दरकार 75 बुझ पाले 3/4 अच्छा जदी सेंट्रल गवर्नमेंट गोटे सपोज प्रपोजल देला और से डिसीजन टा पास हे परिबो कि बुझ पाले काहे कि बिकॉज़ सेंटर होल्ड्स हाउ मच 1/3 ऑफ द वोटिंग राइट्स बुझ पाले 1/3 ओके
अच्छा जदि सब स्टेट्स मिसिक सपोज गोटे प्रपोजल देले से डिसीजन टा पास हे परिबो कि हे परिबो काहे कि सेंटर मन केते 2/3 ताने पाखा पाखी 66% बुझ पछन तो डिसीजन पास होआ पे केते दरकार 75%. दैट मींस द कंट्रीब्यूशन ऑफ सेंटर एज वेल एज स्टेट्स इज रिक्वायर्ड. फाइन. Okay, the system ensures neither center or state dominate completely. Decisions require what? Cooperation. For example, suppose center supports a proposal but most states oppose it, then proposal may fail because states collectively hold how much? Two-third of the voting weight. Similarly, states alone cannot impose decisions without center because center holds how much? 1/3 of the weightage, voting rights. Fine. Okay, ଏବେ ଦେଖିବା GST 2.0. This is quite important from exam point of view. देखो GST 2.0 next generation GST reforms. Recently, during the 56th GST Council meeting, major reforms called GST 2.0 were introduced. Okay, GST 2.0 aims to what? Aims to simplify GST structure, make taxation citizen friendly, improve ease of doing business, support agriculture, support manufacturing, strengthen healthcare sector and reduce tax complexity. Earlier GST tax slab structure कौन थिला? India earlier had multiple GST slabs. थिला कौन आपन 5%, 12%, 18% and 28%. बुझ पारलम? Now the GST tax slab structure is changed under GST 2.0. बुझ पाले change ହେଇଛି. Current GST slabs in India is how much? Is गोटे 0%. Okay, nil or exempt. Fine. On essential goods, basic food items, healthcare and education related items, बुझ पाले 0%. आगो होछि कते 5%. 5% कहां पर लागिवो? मेरिट गुड्स ऊपर लागिवो. बुझ पारले? पैकेज्ड फूड्स, FM फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, essentials, many daily use goods, बुझ पारले? 5%. Then your 18% standard GST rate, 18% standard GST rate, most services, electronics, appliances, software, restaurants ऊपर कते लागिवो? 18% and 40% what? 40% is the upper limit which will be imposed on which goods? Luxury goods and sin goods. For example, tobacco, pan masala, luxury cars, बुझ पाले? high end products ऊपर कते लागिवो? 40%. बुझ पाले? आगुर कौन थिला? 12% थिला और 28% थिला. They has been removed. Okay, so now you have 0%, 5%, 18% and 40%. Okay, and ता सहित कौन? Another important development is GST appellate tribunal. Important development is GST appellate tribunal is expected to become operational by December 2025. As of March 2026, it is not fully operational yet. Okay, GST it is appellate tribunal ta achi. It is a specialized tribunal for faster dispute resolution, reduce burden on courts and improve business confidence. बुझ पारलु? किछि गोटे डिस्प्यूट हला जीएसटी को नै कि स्टेट्स एंड सेंटर मान को भीतर बुझ पारलु? तो समाने कोर्ट को जिबे. कोर्ट रे ऑलरेडी बहुत केसेस पेंडिंग पड़छि. सेति पय जीएसटी appellate tribunal. बुझ पारलु? त माने जीएसटी रिलेटेड डिस्प्यूट्स डायरेक्टली कोट हे परिबो appellate tribunal से. बुझ पारलु? हियरिंग हे परिबो. फाइन. बट एज ऑफ मार्च 2026 इट इज नॉट फुल्ली ऑपरेशनल येट. एबे देखंतु एफडीआई इन इंश्योरेंस देखंतु. Recently the government approved a proposal to increase FDI limit in insurance sector from 74% to 100%. Okay, insurance sector रे FDI limit ता बढ़ी केते हैला वर्तमान 100%. This change will be implemented through Insurance Laws Amendment Bill 2025. Now what is insurance sector? आपण जानिथिबे insurance कोन? Insurance companies provide what? Life insurance, health insurance, vehicle insurance, crop insurance, business insurance. बुझ पारले? So insurance protects people against financial risks and uncertainties. Earlier FDI limit in insurance. Earlier जदि foreign company insurance sector रे इंडिया रे इन्वेस्ट करिया को चाहूची थ्रू FDI route कल केते परसेंट करि परतला? 74% and remaining ownership had to stay with Indian partners. Fine. New change is the government has now approved 100% FDI in insurance sector. 100% FDI in insurance sector. This means foreign companies can fully own insurance companies in India. Now why government increase FDI limit? Why government increase FDI limit in the insurance sector? Government wants to attract what? Foreign capital. Government को foreign capital दरकार. Improve insurance penetration. India रे insurance penetration भी कम बुझ पारलु compared to developed countries. Increase competition जेहेतु इंडिया रे इंश्योरेंस पेनिट्रेशन कम से कंपटीशन भी कम. जेहेतु कंपटीशन कम बुझ पारले क्वालिटी ऑफ इंश्योरेंस सर्विसेज इज आल्सो क्वाइट डिसअपॉइंटिंग. बुझ पारलु?
So improve efficiency and generate employment. Fine. So why insurance sectors need investment? Insurance business require huge capital. Insurance business require huge capital, long-term funds, strong financial capacity. India's insurance penetration is still relatively low compared to developed countries. So government wants more investment and expansion in the sector. Fine. Benefits of 100% FDI in insurance. Benefits of 100% FDI in insurance. More foreign investment. Large global insurance companies may invest more in India. This will increase what? Capital inflow and as a result economic activity. Better insurance coverage. ସମସ୍ତଙ୍କୁ better insurance coverage ମିଳିବ, ବୁଝିପାରିଲେ? Okay, better insurance services ମିଳିବ. Then employment generation and better competition. ଗୋଟେ concern ବି ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ concerns related to 100% FDI. ଦେଖନ୍ତୁ some people worry that foreign companies may dominate Indian insurance market. ବୁଝିପାରିଲେ? କାହିଁକିନା foreign insurance markets have huge capital. ବୁଝିପାରିଲେ? foreign insurance markets have, institutions have huge capital. So sanku jodi 100% allow karagala, they might dominate the insurance market in India. Profits may be repatriated abroad. बुझिପାରିଲେ? Then domestic firms may face pressure. Strategic financial sectors may become foreign controlled. Fine. Prohibited sectors for FDI. Some sectors do not allow FDI because of moral concerns. ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର lottery business ହେଇଗଲା, ବୁଝିପାରିଲେ? ଏଥିରେ କ'ଣ we do not allow FDI in with respect to lottery business. Lottery business ଆମେ FDI allow କରୁନୁ, ବୁଝିପାରିଲେ? Gambling, betting, casinos, cheat fund, nidhi companies, tobacco manufacturing, ये सब कौन FDI हमें still now allow करू ना हो. The most important आज रो most important गोटे जदि कहि भी most important current affairs एटा होज कोन internationalization of currency. एटा वर्तमान डिटेल बुझिबा वर्तमान what do you mean by internationalization of currency? देखो internationalization of currency means increasing the use of a country's currency outside its own borders for international trade, investment, borrowing, lending and foreign exchange reserves. जदि इंडिया रो करेंसी होची रुपी आउ इंडिया रो करेंसी रुपी को जदि foreign countries माने बुझिपले if rupee is accepted worldwide, amongst the countries for the purpose of international trade, for the purpose of investment, for the purpose of borrowings by other countries, for the purpose of lending and foreign exchange reserves, then India will become, rupee will become an international currency. जदि अन्य countries माने rupee को जदि से माने accept करूचंती for the purpose rupee को use करिकी परस्पर सहित इंटरनेट ट्रेड करूचंती, बुझिपारले? अन्य countries माने rupee को use करिकी invest करूचंती, बुझिपारचंती? rupee को borrow करूचंती किमा rupee को lend करूचंती. That means rupee will gain the recognition of being an international currency. Fine. Internationalization. Now, the major international currencies today include what? Major international currencies today include US dollar, euro, pound sterling, Japanese yen and renminbi. Chinese renminbi. There are 5 major international currencies. Fine. Okay. These currencies are accepted globally for the purpose of ट्रेड. बुझिपारले? आपण जदि येन रे भी जदि पे करूचंती ताले कंट्रीज माने एक्सेप्ट करिवे फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड. जदि रेनमीबी रे पे करूचंती ताले भी कंट्रीज माने एक्सेप्ट करिवे. डॉलर इज द dominant currency. बुझिपारले? डॉलर इज द dominant currency because even today the 40% of world trade is done with the help of dollars. Fine. So globally for trade, investment, reserve holdings, international payments. Okay, these currencies are accepted globally for trade, investment, reserve holdings, international payment. Fine. ताले इंडिया भी चाहूँची कौन? इंडिया भी चाहूँची रूपी को इंटरनेशनल करेंसी रो मान्यता मिलू. बुझिपारले? इंडिया भी चाहूँची कौन? रूपीटा इंटरनेशनल करेंसी टा हो. बुझिपारले? बेसी कंट्रीज बने रूपी को यूज करनी फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड, फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट, फॉर द पर्पस ऑफ बोरोइंग, फॉर द पर्पस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स. बुझिपारले? तो इंडिया रूपी को इंटरनेशनलाइज करेवा पई बुझिपारले कौन स्टेप्स नहीं छी. हेलो, व्हाट स्टेप्स इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टेकन so as to make rupee international currency. Fine. Then India wants greater international use of Indian rupee. India wants greater international use. Because rupee is unit of account in India. Rupee is a unit of account in India, but not across the world.
India wants greater international use of Indian rupee. This process is called what? Internationalization of rupee. Okay. Objective कौन? India wants the rupee to be increasingly used for what? International trade, cross-border payment, global investment, foreign exchange reserves, which would reduce excessive dependence on US dollars. जदि रुपी को जदि बेसी रु बेसी कंट्रीज माने यूज करंती फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड, फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट, ताले इंडिया रो डॉलर ऊपर डिपेंडेंस कमी कहीं ना इंडिया रुपी रे देकी ट्रेड करि परिबो किन आज का डेट रुपी इंडिया कोन दबाक पड़छि डॉलर्स दबाक पड़छि बुझ पाल. Now steps taken by India for rupee internationalization. This is quite important now. India wants other countries to start using Indian rupee internationally instead of always using what? US dollars. So India is using to make rupee internationally acceptable. Today, most international trade happens in US dollars. As a date, still 40 to 45% of the world trade is done through dollars. For example, suppose India buys oil from Russia. ये पूरा entire topic टाको examples through ही बुझिपाल because some technical jargons are involved. For example, suppose India buys oil from Russia. Okay. Even though India is not America, even though Russia is not America, but both countries have to trade in what? Which currency? Dollar currency. बुझिपाले डॉलर ट्रेड करिया को पड़ुची बुझिपाले ना डॉलर इंडिया रा करेंसी नुहे किबा डॉलर रशिया रा भी करेंसी नुहे but still both the countries are what? Both the countries trade with each other in dollars. बुझिपाले why? Because why? कौन पाई? Why? Because dollar is globally trusted, accepted everywhere, globally trusted currency, accepted worldwide, बुझिपाले and easy to convert. डॉलर को आपण जे कोनसी अन्य करेंसी रे कन्वर्ट कर दी परिबे इजीली, liquid, globally used for trade. So India first converts what? प्रथमे इंडिया को रुपी को कन्वर्ट करिया पड़िबो डॉलर्स रे and then pay Russia. बुझिपाल रशिया को पे करिया पड़िबो. जदि इंडिया पाखरे जदि sufficient dollars reserves नाही ताले इंडिया ट्रेड करि परिबोनी बुझिपाल. So dollar becomes an important currency. Now this creates problem. Why? Because India needs huge dollar reserves, exchange rate risk increases, बुझिपाल. Dollar dependence increase. So India now wants some international trade to happen directly in rupees. Okay, this is called internationalization of rupee. तो रुपी को इंटरनेशनलाइज करिबा पे इंडिया कौन स्टेप्स नहीं छै? फर्स्ट स्टेप स्पेशल वस्त्र रुपी अकाउंट. स्पेशल वस्त्र रुपी अकाउंट. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस? देखो वस्त्र मींस माने कौन? व्हाट डू यू मीन बाय वस्त्र? वस्त्र मींस योर अकाउंट विथ अस. योर अकाउंट विथ अस. वस्त्र मींस योर अकाउंट विथ अस. बुझिपाल दैट मींस वस्त्र. नाउ देखो स्पेशल वस्त्र रुपी अकाउंट. देखो इंटरनेशनल ट्रेड नॉर्मली हुए किमती कंट्रीज मान भितर बुझंतो ना. वस्त्र अकाउंट वस्त्र माने कौन बुझिबा? इंटरनेशनल ट्रेड नॉर्मली हुए किमती लोक मान भितर. देखो नॉर्मल ट्रेड विदाउट वस्त्र अकाउंट हला. अकाउंट ट्रेड विदाउट वस्त्र अकाउंट. देखो सपोज इंडिया कौन करछि? रशिया तो किछि ऑयल इंपोर्ट करछि बुझि पारले वर्थ हाउ मच? 100 crore. फाइन. इंडिया कन्वर्ट्स रुपी इनटू डॉलर्स. Russia receives dollars. बुझि पारले. So dollars becomes what? Intermediary currency. Dollar becomes intermediary currency. So dollar dependency increases. India wants to avoid this. Dollar dependency increase करूची बुझि पारले. So India wants to avoid this. सेति पे इंडिया कोन नै के आसला? स्पेशल वस्त्र अकाउंट. बुझि पारले कोन नै के आसला? स्पेशल वस्त्र रुपी अकाउंट. फाइन. Now what do you mean? देखो suppose Russia agrees to accept rupees instead of dollars. Hello? Russia को हमें कोथर पे करथले डॉलर. Why? Because dollar is acceptable worldwide. बुझिपाल. Dollar is the major international currency. Okay? Suppose Russia कौन कला? Russia agrees to accept rupees instead of dollars. Okay? But rupee is not an international currency. एबे जदि रशिया रुपी रे पेमेंट को एक्सेप्ट करिया पे राजी हला बुझिपाल. से रुपी नहीं करिवो कौन करिवो? का सहित ट्रेड करि परिवो? रुपी तो के एक्सेप्ट करंतरी बुझिपाल. सेति पई रशिया देखन कोन होची? सपोज रशिया एग्रीज टू एक्सेप्ट रुपीज इंस्टेड ऑफ डॉलर्स. देन द क्वेश्चन अराइजेस वेयर विल रशिया कीप दिस रुपीज? रशिया को निजे पाकर रुपी रखिवो कि कोन रखि करिवो कोन? डॉलर जदि पेमेंट करथांते त रशिया डॉलर रखि थांता बिकॉज़ डॉलर इज इंटरनेशनल करेंसी एक्सेप्टेबल वर्ल्ड वाइड. किंतु जदि हम रुपी रे पे करछे रशिया को
ताहले रशिया कौन करिवो से रुपी को निज पाखर रखिवनी कहीं रशिया से रुपी को यूज करके क्या सहित ट्रेड करि परिवनी इंटरनेशनल मार्केट रे किछि किणा बिक्री करि परिवनी बुझ पारल सेति इंडिया और रशिया जदि रुपी रे ट्रेड करिया को चाहउछंती सेति गोटे स्पेशल वस्त्र रुपी अकाउंट को कौन हला इंट्रोड्यूस कला इंडिया बुझ पारल एटा कौन इंडिया इंट्रोड्यूस कला इट हैज बीन देयर फॉर डेकेड्स इन द वर्ल्ड फाइन स्पेशल वस्त्र रुपी अकाउंट को इंट्रोड्यूस कला अकॉर्डिंग टू स्पेशल वस्त्र रुपी अकाउंट कौन हबो रशिया भल भाव जानी रशिया ठीक अच्छे रशिया एग्री कला जे लेट्स ट्रेड इन रुपीज किंतु रशिया कौन कहला मु रुपी को निज पाखे रखि परिबेनी कहीं ना मु रुपी को यूज ही करि परिबेनी बुझ पारले ओके रशिया बैंक्स देखो रशियन बिकॉज़ रशियन बैंक्स नॉर्मली ऑपरेट आउटसाइड रशिया बुझ पारले रशियन बैंक्स रखिबे कहीं की भी बुझ रशियन बैंक्स इंडिया रे नहंती तो से रशिया रे भी रुपी को रखिया चाहू नहंती फाइन रशिया कौन कला गोटे इंडियन बैंक रे निजर अकाउंट खोलला कौन करियो रशिया इंडियन बैंक रे देखो so India created what special rupee vostro account fine that means what actually happens is suppose Russian bank बुझ पड़ले गोटे Russian bank opens account in India opens an account in an Indian bank बुझ पड़ले एबे suppose India Rosneft गोटे ऑयल कंपनी Russian ऑयल कंपनी Rosneft to ऑयल किनिला बुझ पड़ले एबे ताको पेमेंट करिया अछि रुपी रे बुझ पड़ले Rosneft रो अकाउंट अछि suppose गोटे Russian बैंक सहित गोटे अकाउंट अछि बुझ पड़ले एबे रशिया आमे रुपी रे पे करूची सत कथा किंतु रशिया रखिया को चाहुनी ओके एबे रशियन बैंक कोन करिवो इंडियन बैंक रे निजर अकाउंट ओपन करिवो हलो इंडिया कोन करिवो सपोज एसबीआई रे अकाउंट ओपन करला एबे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन काठो किनिची ऑयल रॉसनेफ्ट रो बैंक अछि रशिया रे से बैंक ता गोटे एसबीआई रे ता निजर अकाउंट ओपन करला वर्तमान इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन कोन करिवो से पैसाटा को एसबीआई रे डिपॉजिट कर दबो को अकाउंट रे जो रशियन बैंक ना रे जो अकाउंट ता अछि ता अकाउंट रे पैसा डिपॉजिट कर दबो देखो एग्जांपल देखो सपोज रशियन बैंक ओपन्स एन अकाउंट इन एन इंडियन बैंक ओके रशियन बैंक कोन करला गोटे इंडियन बैंक रे ता अकाउंट ओपन करला फाइन दिस अकाउंट स्टोर्स रुपीस दिस अकाउंट इज कॉल्ड व्हाट स्पेशल रुपी वस्त्रो अकाउंट ओके एग्जांपल देखो तो सपोज इंडिया बाइज रशियन ऑयल वर्थ रुपीस 100 crore हेलो इंस्टेड ऑफ यूजिंग डॉलर्स इंडिया इंपोर्टर पे कते 100 crore पे करिवो बुझ पड़ले कहा पे करिवो इंडियन बैंक को पे करिवो रशिया को ही पे करिवो किंतु तार अकाउंट कोडी अछि इंडियन बैंक इंस्टेड ऑफ यूजिंग डॉलर्स इंडिया इंपोर्टर्स पे 100 crore टू इंडियन बैंक डिपॉजिट्स दिस मनी इनटू रशियन बैंक्स अकाउंट फाइन कना जो बैंक ता अछि से बैंक रो निजर गोटे अकाउंट ओपन करछि इंडियन बैंक सहित बुझ पड़लो तो इंडिया कोन करिवो इंडिया एसबीआई को पे कर दला 100 crore एसबीआई कौन करिवो से 100 crore को रशियन बैंक अकाउंट रे डिपॉजिट कर दबो बुझ पड़लो नाउ इंडियन बैंक डिपॉजिट्स दिस मनी इनटू रशियन बैंक्स दैट इज रशियन बैंक्स एसबीआरए अकाउंट इन इंडिया ओके नाउ रशिया नाउ ओन रुपीस इनसाइड इंडिया बुझ पछन त एबे रशिया से पैसा कार एक्चुअली रशिया एबे जतोले रशिया जहा इंडिया टू जहा भी किछि ट्रेड करिवो बुझ पड़ले किछि एक्सपोर्ट करिवो के किछि इंपोर्ट करिवो किछि किनिया को चाहू छी रशिया से रुपी को यूज करि परिवो बुझ पड़ले ना बुझ पड़ले दिस इज द आइडिया स्पेशल रुपी वस्त्र अकाउंट एटा होछि जनरल आइडिया बुझ पड़ले आउतर कहू छी सपोज आपनगर सपोज इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन सपोज रॉसनेफ्ट टू ऑयल किनला बुझ पड़ले ऑयल किनला केते करोड़ 100 crore बुझ पड़ले रुपी ट्रेड होची फाइन वर्तमान सपोज रॉसनेफ्ट गोटे कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन गोटे कंपनी रॉसनेफ्ट रो अकाउंट अछि कोठी रशिया रे अकाउंट अछि गोटे बैंक अछि सपोज एसबर बैंक गोटे रशियन बैंक हलो एसबर बैंक रे रॉसनेफ्ट रो अकाउंट अछि बुझ पड़ले इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन रे अकाउंट कोठी अछि एसबीआई ओके एबे रशिया जेहेतु रशियन बैंक्स इंडिया रे नहंती जेहेतु इंडियन बैंक रशिया रे नहंती सेति पई रशियन बैंक एसबर बैंक कोन करिवो एसबीआई पाखरे निजर गोटे अकाउंट ओपन करिवो बुझ पड़ले गोटे अकाउंट ओपन करला ओके वर्तमान इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को केते पे करिया अछि 100 crore से पे करिवो कहा को एसबीआई कोन करिवो से एसबर बैंक रो जो अकाउंट अछि से अकाउंट डिपॉजिट कर दबो केते 100 crore या 100 crore ता वर्तमान कहा पैसा रशिया रो पैसा बुझ पड़ले रॉसनेफ्ट रो पैसा बुझ पछंदी एबे रॉसनेफ्ट इंडिया टू जहां भी किनिवार थिबो से सेटू पे करि परियो न ताले दिजन दीटा कंट्रीज एबे को ट्रेड करछंती
rupee रे trade करछन बुझ पाले this is the major step taken by the government of India to promote the internationalization of rupee special rupee vostro account बुझ पाले okay now Russia now owns rupees inside India fine then what will Russia do with rupees Russia can buy Indian goods invest in Indian assets buy Indian government securities and use rupee for future trade बुझी पारले यदि इंडिया ठू जदि किछि इंपोर्ट करबा को चाहूची तले इंडिया को से रुपी रे ही पे करिवो रुपी अछि कोटिंग एसबीआई रो वस्त्र अकाउंट रे अछि बुझी पारले दिस इज ओके सो नाउ डॉलर इज नॉट नीडेड दिस इज द कोर आइडिया बुझी पारले सो व्हाई इज दिस एसबीआर आरए इंपोर्टेंट बिकॉज़ इट रिड्यूसेस व्हाट डॉलर डिपेंडेंस promotes Indian rupee trade and saves forex reserves बुझ पाछन जदि इंडिया जदि बेसी रु बेसी कंट्री सहित जदि रुपी ट्रेड कला ताले इंडिया रो फॉरेक्स रिजर्व भी बंचिबो बुझ पाले काहे ना आज का डेट रे भी कोन डॉलर इज द डोमिनेंट इंटरनेशनल करेंसी फाइन तो इंडिया पर किसी डॉलर रिजर्व भी रहबा दरकार ओके एंड स्ट्रेंथन रुपी इंटरनेशनली एबे नेक्स्ट स्टेप देखिबा कोन नेक्स्ट स्टेप होची कोन कंटीन्यूअस लिंक्ड सेटलमेंट okay continuous linked settlement first step होची India has introduced what special rupee vostro account second होची continuous linked settlement देखो ये माने कोन why does India want Indian rupee inside continuous linked settlement system Indian rupee को ये सेटलमेंट जो continuous linked settlement अछि ये सेटलमेंट अंडर रे काहे कि रुपी को इंक्लूड करबा को चाहूची why India wants to include Indian rupee into continuous linked settlement what is the importance of continuous linked settlement understand suppose an Indian bank wants to exchange rupees for euros with a German bank बुझ पारले Indian bank रुपी देकी जर्मन suppose euro exchange करिया को चाहूची Indian bank wants to exchange euros for rupees hello देखो ट्रांजैक्शन वैल्यू कितने हिची 5000 करोड़ हेलो ट्रांजैक्शन वैल्यू कितने 5000 करोड़ नाउ इंटरनेशनल पेमेंट डज नॉट हैपन इंस्टेंटली लाइक यूपीआई इंटरनेशनल पेमेंट कोन यूपीआई पर सैंक्शन हो जायनी बुझ पाले आपण मार्केट गले किनले पेमेंट करतले यूपीआई थ्रू फाइन बिकॉज़ कंट्रीज आर डिफरेंट बैंकिंग सिस्टम्स आर डिफरेंट टाइम जोन्स आर डिफरेंट बुझ पाले सेति पई ट्रांजैक्शन कोन इमीडिएटली हुएनी फाइन व्हाट एक्चुअली हैपेंस इंडियन बैंक कहबो कोन आई सेंड द रुपीस पठेली बुझ पाले केते 5000 करोड़ जर्मन बैंक कहबो ओके नाउ आई विल सेंड यूरोस फाइन एक्सचेंज करछनी बुझ पाले करेंसी इंडियन बैंक पठेला 5000 करोड़ 5000 इक्विवेलेंट ऑफ यूरोस पठेबो के जर्मन बैंक फाइन देखो बट सपोज जर्मन बैंक डिलेज किछि गोटे टेक्निकल प्रॉब्लम हे गेला बुझ पाले कि टेक्निकल प्रॉब्लम हे गेला कि साइबर अटैक हला बुझ पाले किछि गोटे प्रॉब्लम जगो जदि जर्मन बैंक डिले कर देला बुझ पाले पठे पाला नहीं यूरोस इंडिया तो ऑलरेडी पेमेंट कर दी ना जर्मन बैंक पठे पाला नहीं now one side will lose massive money India will lose massive money so this risk is called what settlement risk ये risk कौन को आ जाए settlement risk है so because international banks exchange billions of dollars daily even a small delay can create what panic बुझ पाले losses financial instability so banks globally needed a trusted middle system बुझ पाल एबे सपोज आपण गोटे प्रोडक्ट किनुचंती इटली रे सपोज गोटे कंट्री रे गोटे सपोज इटली धन्यवाद इटली हे गेला सपोज आपण ग्रीस हे गेला ग्रीस रे गोटे शॉपकीपर अछि बुझ पाल ताटू किछ किनिया चाहछन आपण ताको जाननान चिन्हन ताको पेमेंट कर देबे कि कर पे ना जदि प्रोडक्ट न पठेला बुझ पाले ताले एटी मिडलमैन के Amazon आपण Amazon को ट्रस्ट करछंती सी कोन करिवो ता प्रोडक्ट को Amazon रे सेल करिवो आपण कोन करिवो ता प्रोडक्ट को Amazon थ्रू किनिबे ताले एटी मिडलमैन के Amazon both you as buyer and both that person as seller trust Amazon बुझ पाले आपण को डायरेक्ट लिंक किछ नहीं आपण परस्पर को ट्रस्ट करू नहंती बुझ पाले बिकॉज़ यू डोंट नो ईच अदर सेति पई गोटे कॉमन मिडलमैन दरकार जाको आपण ट्रस्ट करि परथुवे एंड से कॉमन प्लेटफॉर्म थ्रू आपण कोन करिवे जहां भी ट्रेड करे करिवे फाइन exactly on similar logic this risk is called what settlement risk because international banks exchange billions of dollars daily even a small delay can create what panic loss or financial instability so banks globally needed a what
trusted middle system. That trusted middle system is called as what? Continuous linked settlement. Continuous linked settlement was created. CLS stands for what? Continuous linked settlement. What does CLS actually do? Both banks will send money. Both banks will send money to CLS. Both banks will send money to CLS, and CLS will release payment only when both sides pay properly. बुझ पारले? दीटा कंट्री मिसे कि आगे CLS रे पैसा डिपॉजिट करिवे. डिपॉजिट हला परे CLS कोन करिवो? इंडिया को यूरोस दे देबो, जर्मनी कोन दे देबो? रुपीस दे देबो. बुझ पारले? फाइन. CLS. Okay. So CLS works. So okay, then why India wants Indian rupee in CLS? Indian rupee kahin CLS रे include करल चाहू India. Currently many international banks are comfortable settling dollar transactions because dollar is deeply integrated in the systems like CLS. Fine. India wants same trust for rupee. India wants same trust for rupee. जदि इंडिया को जदि आमे इंडियन रुपी को जदि CLS रे इंक्लूड कर देले बुझ पारलु ताले जदि CLS इंडियन रुपी को एक्सेप्ट करूची ताले रुपी को वर्तमान सी जदि एक्सेप्ट करूची जदि से एक्सेप्ट करिवनी जन रखन सी जदि एक्सेप्ट करिवनी जदि आमे गोटे जर्मन बैंक सते यूरोस एक्सचेंज करिया को चाहू छे बुझ पारलु ताले से जर्मनी को बिलीव को ट्रस्ट करूची CLS किंतु इंडियन रुपी को ट्रस्ट करनु. Why? Because Indian rupee is not included in the CLS. ताले CLS रे काम कोन? दीटा जाको बैंक CLS को आगे पैसा पठेबे तापर एक्सचेंज ता हबो. जदि इंडियन रुपी CLS रे इंक्लूड ही नाही ताले इंडियन रुपी जदि इंडियन बैंक CLS को रुपी पठे परिबो कि? पठे परिबो नाही. ताले एक्सचेंज हे परिबो कि? एक्सचेंज हे परिबो नाही. सेति पई इंडिया चाहूची CLS रे इंक्लूड रुपी को इंक्लूड करया पे. बुझ पारलु? बुझ पछन देखो CLS रे रुपी को इंक्लूड करला माने रुपी इंटरनेशनल करेंसी हे जबनी. बुझ पारले? बट कौन हो इंटरनेशनल ट्रस्ट. बुझ पारलु? इंडिया विल गेन इंटरनेशनल ट्रस्ट विथ रेस्पेक्ट टू रुपी. बुझ पारले? इंडिया रे कौन बढ़िबो? ट्रस्ट बढ़िबो. बुझ पारले? ओके. सो इफ इंडियन रुपी जॉइन CLS, global banks feel Indian rupee transactions are safer, internationally recognized and easier to settle. Fine. So more banks start saying okay, we are comfortable dealing in rupees. That slowly increases what? International acceptance of Indian rupee. Okay. That is the core idea of CLS, because CLS does not directly increase trade, बुझ पारलु, but it increases trust in rupee transactions. इति बुझ पारलु. How would the next major step कौन निया हिची? First step was rupee vostro account. Second step was inclusion of Indian rupee in continuous linked system settlement, and third step is internationalization of UPI. Internationalization of UPI. अपन मन जानते हो UPI is a Indian payment settlement system. UPI is a Indian payment settlement system. देखो, suppose you travel to Singapore. Example देखो, you travel to Singapore. You want to buy coffee. What happens? You convert rupees into Singapore dollars or use Visa, Mastercard. बुझ पारलु? अपन को जदि suppose Singapore रे suppose अपन को दुकान गले किसी किनिले तले अपन कोन करिया पड़े रुपी को आगे अपन कन्वर्ट करिया पड़ियो इनटू Singapore dollars तापर अपन पे करिवे किंबा अपन कोन यूज करचंती Visa किंबा Mastercard यूज करके पे करचंती. Visa, Mastercard सेडा कोन foreign company payment systems. बुझ पारलु? They are Indian payment system की? No. Visa, Mastercard, they are foreign company payment systems. Fine. Meaning foreign payment companies dominate the system. So India wants to change this. India wants Indian payment system themselves to work globally. India चाहूँची UPI टाको basic countries मनी use करों. Fine. Okay. Meaning an Indian UPI app should work abroad directly. Suppose you go to Dubai and you enter restaurant. Bill कितने असला अपन करो? 100 dirhams. Now restaurant has UPI compatible QR code. Then you scan PhonePe, Google Pay, Paytm, and your Indian bank receive payment request. Fine. Payment request receive करला. Why? Because the restaurant has UPI compatible QR code and UPI is Indian owned payment settlement system. Fine. Now Indian system converts payment into value automatically. बुझ पारलु? एबे Indian system कौन करिवो? Converts payment value automatically. Dubai merchant receives local currency. Settlement happens between the banking systems. एति बुझी पारले समझते? This is your internationalization of rupee. Why this is important economically? Today देखो Visa, Mastercard earn use global transaction influence. समझते प्राय across the world use कौन? Visa and Mastercard. बुझ पारलु? So it has so Visa and Mastercard, they have global transaction influence. India wants UPI to become global digital payment infrastructure. बुझ पारलु? Now what is the bigger hidden goal? Suppose many countries start using UPI linked systems,
then India's financial technology influence will grow. Fine. Indian rupee linked payment ecosystem spreads globally, and this gives India digital financial power. Okay. Why is America financially powerful? Not because of dollar, but because Swift, Visa, MasterCard. Because America has lot of financial transaction influence across the world. Dollar bhi achi important, but also along with dollar, America has lot of what? Financial transaction influence across the world. Global banking systems are heavily Western dominated. So India wants its own financial systems to gain international presence, and UPI internationalization is part of this strategy. Fine. Rupee international nationalization time, another step taken by the government is currency swap agreement. So as to make rupee an international currency, our step government needs to currency swap agreement. Now what is currency swap agreement? See, suppose India buys machinery from Japan worth 100 crore. Okay, 100 crore equivalent. Fine. India India convert rupee into dollars. Japan converts dollar into yen. Then dollar becomes compulsory middleman. Jadi India suppose Japan to किसी किणुची ताले इंडिया को केमिति पेमेंट करिया पड़िबो, इंडिया को रुपी को डॉलर कन्वर्ट करिया पड़िबो, तापरे जापान को पे करिवो. जदि जापान इंडिया रो किछि किणुची ताले सीए कोन करिवो, येन को डॉलर कन्वर्ट करिवो, इंडिया को पे करिवो. बुझ पारलम. तो डॉलर इज द मिडल मैन. तो एबे विदाउट डॉलर, why without dollar? देखो why this is inefficient? Because both countries need dollar reserve, conversion cost increases, exchange rate risk increases. बुझ पारलम. सेति पई example of hidden risk, example of hidden cost. देखो rupee weakens suddenly. जदि suddenly rupee रो value fall करियला, then Indian importers must spend more rupees to buy what? Same amount of dollars. बुझ पारछन? Same amount of dollars. जदि rupee रो value थिला केते $1 is equal to 90 rupees. एबे जदि rupee रो value fall करियला, हेगला $1 is equal to 100 rupees. तामन कोन होबे वर्तमान? Now imports will become what? Expensive. बुझ पारलम? That means for the same quantity of imports, now you will have to pay more. Fine. So dollar imports become expensive. Fine. Then countries think. देखो countries माने कौन करछन्ती देखो. India and Japan suppose sign a currency swap agreement. India and Japan कौन करले? परस्पर सहित गोटे currency swap agreement sign करले. ता माने India किछि yen reserve रखियो निजो पाखरे, आ जापान निज पाखरे किछि यूरोपीय रिजर्व रखियो. एको कोन कहै छै? करेंसी स्वैप एग्रीमेंट. फाइन. इंडिया किछि येन रो रिजर्व रखियो निज पाखरे, जापान किछि रूपीय रिजर्व रखियो निज पाखरे. फाइन. And India and Japan make this currency swap agreement. RBI keeps some yen reserves, Japan keeps some rupee reserves. Now currencies can be exchanged directly. For example, Indian company imports Japanese machine. Okay, Indian importers pay rupees to RBI or bank. RBI uses swap arrangement to provide yen. बुझ पारले? RBI uses swap arrangement to provide yen, and Japanese exporter receives what? Yen. This is your currency swap agreement. एबे भी वर्तमान डॉलर ट्रेड हला ना, लोकल माने दीटा कंट्री रो डोमेस्टिक करेंसी रे ट्रेड हला. डोमेस्टिक करेंसी. फाइन. So dollar is kept completely, less dependence on dollar, lower transaction cost, then for lower forex pressure, more direct trade flexibility. बुझ पारलम? एबे आसीबा our last point with respect to rupee internationalization. Fine. Masala bonds. देखो masala bonds किसी आइडिया थी वो समझते हैं व्हाट डू यू मीन बाय मसाला बॉन्ड्स. यस, मसाला बॉन्ड्स मींस रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स. देखो होउछ कोन. सपोज इंडियन कंपनी वांट्स मनी फॉर एक्सपेंशन. एक्सपैंड निजर बिजनेस को एक्सपैंड करबा पई गोटे इंडियन कंपनी को पैसा दरकार. बुझ पारले? अच्छा, सपोज से फॉरेन मार्केट रो बोरो करिया को चाहूची. बुझ पारले? इंडियन मार्केट रो बोरो न करिकि फॉरेन मार्केट रो बोरो करिया को चाहूची. बुझ पारले? अच्छा, suppose it borrows $1 billion from America. Fine. एबे जदि डॉलर रे जदि बोरो करची ताल डॉलर रे ही तो पे करिवो ना. बुझ पारले? तो लोन रीपेमेंट मस्ट हैपन इन डॉलर्स. यस. नाउ इमेजिन एट द टाइम ऑफ बोरोइंग थिला केते $1 is equal to 80 rupees थिला. रीपेमेंट बर्डन मैनेजेबल. बट सपोज आफ्टर फ्यू इयर्स ना $1 is equal to केते $100. बुझ पारले? आपण डॉलर रे बोरो करथिले. बुझ पारले? केते जेते एक्सचेंज रेट थिला $1 is equal to 80 rupees. एबे जतल रीपे करिवे along with interest वर्तमान $1 is equal केते 100 rupees. ता माने जो लोन ता नेथिले आपण से लोन रो वैल्यू बढ़िला ना बढ़ला नहीं इन टर्म्स ऑफ रुपी. बुझ पारले? दैट मींस इवन दो कंपनी बोरोड सेम $1 billion हला,
तामाने देखंतु तामाने $1 बिलियन आपण बोरो करथिले आपण $1 बिलियन को जब रुपी रे कन्वर्ट कर दे सपोज केते हे गेला 8000 crore व्हाई बिकॉज़ $1 इज इक्वल टू थिला केते 80 रुपीस बुझ पारले 8000 crore किन जतोले $1 बिलियन को रीपे करिवे सपोज प्रिंसिपल रीपे करचंती ताले केते पे करिवे वर्तमान $1 बिलियन केते रीपे करिवे $1 बिलियन हां एबे $1 इज इक्वल टू केते अछि 100 रुपीस अछि केते पे करिवे 10,000 crores एटा होची आपनकर प्रिंसिपल अमाउंट दिस इज योर प्रिंसिपल अमाउंट या ऊपर पुनी इंटरेस्ट पे करिवे बुझ पारले ओके हां दिस इज प्रिंसिपल अमाउंट देखो सी इवन दो कंपनी बोरोड सेम $1 बिलियन इंडियन कंपनी नाउ नीड्स मच मोर रुपीस टू बाय डॉलर्स फॉर रीपेमेंट यस सो डेट बर्डन एक्सप्लोड्स दिस इज कॉल्ड व्हाट करेंसी रिस्क या प्रोग्राम में देखते कौन सेटलमेंट रिस्क देखते बुझी पार सेटलमेंट रिस्क कौन दिस इज कॉल्ड व्हाट करेंसी रिस्क सो अकॉर्डिंग टू इंडिया जदि इंडियन कंपनीज माने बाहर जदि इंटरनेशनल मार्केट टू बोरो करबा को चाहउचंती ताले अकॉर्डिंग टू इंडियन गवर्नमेंट चाहउची जे इंडियन कंपनीज माने बाहर बुझ पारले रुपीस रे बोरो करंतु कोतर बोरो करंतु रुपीस रे बोरो करंतु डॉलर रे बोरो न करकी कोतर बोरो करिवे रुपीस रे बोरो करिवे देखन borrow in rupee instead borrow in rupee instead देखो now foreign investor buy एबे जतबेले foreign companies माने borrow करंती किमिति से माने भी bond issue करंती बुझ परले bonds are what debt instruments बुझ परले यदि आपण bond बिक्री करचंती आमे जदि गोटे कंपनी रो bond किनुचे त माने कोन आमे से कंपनी को लोन रे पैसा दोउचे that means that company is borrowing from us fine तो जदि गोटे कंपनी इंडियन कंपनी फॉरेन मार्केट टू जदि डॉलर रे बोरो करिया को चाहूची then the company will issue dollar denominated bonds okay the company will issue dollar denominated bonds if an Indian company wants to borrow in rupees then the Indian company will issue what rupee denominated bonds तमाने एबे से rupee denominated bonds को कुआ जाय कोन मसाला bonds they are called as what मसाला bonds बुझ पारलन रुपी रे जे रुपी denominated bonds जेतोले फॉरेन मार्केट रे इशू करा जाय ताको कुआ जाय कोन मसाला bonds हलो मसाला bonds so masala bonds are rupee denominated bonds जदि आपण मसाला bonds foreign investor जदि मसाला bonds किनुची बुझि पारले मसाला bonds जदि किनुची ताल ताकू रुपी रे पेमेंट करिया पड़िबो फाइन से रुपी रे किनिबो फाइन देखंतु borrow in rupee instead that means now foreign investor buy rupee denominated bonds this is called as what masala bonds for example देखंतु please suppose Indian company issues 1000 crore masala bonds abroad hello Indian company issues 1000 crore masala bonds abroad foreign investor buys it and repayment will happen in rupees only बुझ पाले repayment will happen in rupees only hello से किनिला bond foreign investor रुपी रे पे करलन आ कंपनी भी रीपे करिवो कोतरे रुपी रे ही रीपे करिवो सपोज रुपी falls internationally now foreign investors suffer की exchange loss वर्तमान रुपी रे जदि फॉल करिगला रुपी जदि फॉल करला ताले सफर करिवो किए जो कंपनी इंडियन कंपनी बोरो करची ना जे इन्वेस्ट करची जे बॉन्ड किनीची की सफर करिवो फॉरेन इन्वेस्टर सफर करिवो जेतोले गोटे इंडियन कंपनी डॉलर रे बोरो करथला एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस जगु सफर की करथला इंडियन कंपनी बुझ पाले ताको बेसी दबाको पड़थला एबे जेहेतु इंडियन कंपनी रुपी रे पे करूची बुझ पाले रुपी रे पे करूची जदि रुपी रो वैल्यू फॉल करला ताले एबे सफर करिवो कि फॉरेन इन्वेस्टर ताले क्वेश्चन होची जदि इन्वेस्टर जानिची जे जदि रुपी रो वैल्यू जदि फ्लक्चुएट हबो ताले मोर लॉस हबो ताले फॉरेन इन्वेस्टर रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स किनिवे काहे किनिवे अच्छा ताले आपण माने जो लोक माने शेयर मार्केट रे इन्वेस्ट करूचंती ता से जानि ना कि तांको लॉस होवार संभावना अछि ताले किनुचंती कोन काहे बुझ पारले ताले जदि लॉस होवार संभावना अछि प्रॉफिट होवार भी तो संभावना अछि बुझ पारले तो ओके सेहित में ओके सो देखंतु जदि रुपी रो वैल्यू जदि फॉल करगला इंटरनेशनली ताले नाउ फॉरेन इन्वेस्टर सफर एक्सचेंज लॉस की सफर करिवो फॉरेन इन्वेस्टर नॉट इंडियन कंपनी एनीमोर बुझ पाले जे इन्वेस्ट करतियो से सफर करिवो बुझ पाले केना ताकू सी एक्सपेक्ट करथला कोन से प्रॉफिट अर्न करिवो एक्सपेक्ट करथला किंतु लॉस हे गेला बुझ पाले ओके सो इंडियन कंपनी डज नॉट सफर सो करेंसी रिस्क शिफ्ट्स फ्रॉम इंडियन बोरोवर टू फॉरेन इन्वेस्टर बुझ पाले द करेंसी रिस्क शिफ्ट्स फ्रॉम इंडियन बोरोवर टू फॉरेन इन्वेस्टर ओके दिस इज योर and why is this important for India देखो because Indian companies become safer
foreign investors start holding rupee assets and international familiarity with Indian rupee increases. केवल गोटे देखो जदि लॉस हबार संभावना अच्छी आ प्रॉफिट हबार भी संभावना अच्छी केवल किसी गोटे कारण जो फॉरेन इन्वेस्टर्स मैंने रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स किनते नहीं ता सहित कौन में किनते रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स कहीं ना रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था है कंपैरेटिवली डॉलर बॉन्ड्स तो अधिक था है बुझ पाले पाखापाखि रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स पाखापाखि 7 to 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिए whereas डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स पाखापाखि 5 to 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिए बुझ पाले दैट इज अनदर रीजन सेकंड थर्ड रीजन होची फर्स्ट रीजन कोन रिस्क टेकिंग एबिलिटी बुझ पाले हम रिस्क नेबो बुझ पाले सेकंड होच कोन हायर इंटरेस्ट रेट्स थर्ड होची कोन स्टेबिलिटी ऑफ रुपी कोन स्टेबिलिटी ऑफ रुपी इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड फाइन तामाने वन ऑफ द फास्टेस्ट being a fastest one of the fastest growing economies of the world that is one expect am expect kari pari na kari pari je rupee ta stable rahibo future re fine se karan jogu bi bujh parlum so these are some reasons due to which foreign investors will buy rupee denominated bonds okay tapor dekhiya next dekhiba Gujarat International Financial Tech City gift Gujarat International Financial Tech City that is your gift city with respect to this dekho what is gift city dekho Gift City is India's first internationally oriented financial and fintech hub located at Gandhinagar in Gujarat. Located at Gandhinagar in Gujarat. It was established in 2015 as a special economic zone with the objective of developing a world-class international financial services center similar to Dubai International Financial Center, Singapore Financial Center, लंडन फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट एटसेट्रा बुझी पारलम हला वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर देखो एग्जांपल देखले आपण बुझी परिबे एग्जांपल देखो सपोज देखो प्लीज सी द एग्जांपल काहेंगे गिफ्ट सिटी को काहेंगे गिफ्ट सिटी डेवलप करा गला गुजरात रे बुझी पारले व्हाई गिफ्ट सिटी वाज डेवलप्ड देखो एग्जांपल देखो सपोज एन इंडियन कंपनी वांट्स टू रेज $1 billion फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टर्स गोटे इंडियन इन्वेस्टर को $1 billion दरकार फॉर द पर्पस ऑफ री एक्सपेंशन और फॉर द पर्पस ऑफ री इन्वेस्टमेंट हलो $1 billion बुझ पारलो अर्लियर मेनी कंपनीज प्रिफर्ड सिंगापुर फाइनेंशियल मार्केट इंस्टेड ऑफ इंडियन फाइनेंशियल मार्केट बुझ पारले व्हाई बिकॉज सिंगापुर फाइनेंशियल मार्केट हैड वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बुझ पारछन वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बुझ बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करतला बुझ पारलो सो लीगल सर्विसेज जदि गोटे कंपनी इंडियन कंपनी को फॉरेन मार्केट रू $1 billion जदि रेज करिवार अछि लोन नेबार अछि ताले इंडियन कंपनीज माने एक्चुअली काहा को प्रिफर करथले लंडन फाइनेंशियल सेंटर किबा दुबई फाइनेंशियल सेंटर व्हाई बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर सेठी प्रोवाइड करा होतला बुझ पारले ओके अच्छा सेमाने कोन मागणा रे आपण काम करिवे कि सिंगापुर फाइनेंशियल सेंटर हे गेला दुबई फाइनेंशियल सेंटर हे गेला लंडन फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट हे गेला विल दे डू योर जॉब फ्री ऑफ कॉस्ट नो बुझ पारले लीगल सर्विसेज चार्जेस जहां भी थिला बैंकिंग सर्विसेज चार्ज जहां भी थिला ब्रोकरेज चार्ज बुझ पारल फाइनेंशियल फीस ऑल बेनिफिटेड व्हाट सिंगापुर सब चार्ज नबो कि सिंगापुर फाइनेंशियल सेंटर बुझ पारछन आपण जेतबेले $1 billion रेज करिवे जो फाइनेंशियल सेंटर आपण जो फाइनेंशियल सेंटर को यूज करिवे सीधा कमिशन नबो नहीं ब्रोकरेज नबो नहीं बुझ पारल अच्छा बैंकिंग सर्विसेज पई अलग फीस देबे ना नहीं बुझ पारल से सब फीस हे गला ब्रोकरेज फी बैंकिंग सर्विसेज फी लीगल सर्विसेज फी बुझ पारले नबो कि सिंगापुर बुझ पाछन जदि इंडिया रे ही जदि गोटे इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर जदि ओपन हे जाय लाइक गिफ्ट सिटी ताले जदि इंडियन कंपनीज मानन को जदि पैसा फॉरेन करेंसी रे बोरो करिवार अछि दे विल डू इट विद इन इंडिया बुझ पारले ताले जहां सब फीस बा ब्रोकरेज फी हे गला अपना बैंकिंग सर्विसेज फी हे गला लीगल सर्विसेज फी हे गला दैट विल रिमेन विद इन इंडिया बुझ पाछन समझते दैट इज वन ऑफ द मेजर रीजन सेति कोन होता देखंतु सो लीगल सर्विसेज बैंकिंग सर्विसेज ब्रोकरेज फाइनेंशियल फीस ऑल बेनिफिटेड सिंगापुर इंडिया लॉस्ट बिजनेस एंड फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस बुझ पारले सेकंड देखंतु सेकंड रीजन कोन ऑफशोर ट्रेडिंग देखंतु फर्स्ट हेगला रीजन कोन थिला आपनकर रेजिंग फॉरेन कैपिटल सेकंड रीजन होची ऑफशोर ट्रेडिंग देखंतु सपोज फॉरेन इन्वेस्टर्स want to trade derivative linked to Indian stock market बुझ पाले derivative is a kind of financial instrument हलो फॉरेन इन्वेस्टर्स माने इंडियन स्टॉक मार्केट रो डेरिवेटिव्स किनिया को चाहउछंती बुझ पाले अर्लियर दिस ट्रेडिंग ऑफन हैपेंड इन
Singapore Exchange. Often happened in Singapore Exchange. Why? Because Singapore Exchange offered what? World-class infrastructure. Gift City is nothing but a world-class infrastructure with respect to providing financial services. ସେମିତି କହିବା କଲେ କ'ଣ ଆମ ପାଖରେ ଗିଫ୍ଟ ସିଟି ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ financial services financial service centers ନଥିଲା? Yes, but we could not provide what? World-class infrastructure. ବୁଝିପାରିଲ? Okay. So suppose foreign investors want to trade derivative linked to Indian stock market. Earlier, this trading often happened in Singapore Exchange, meaning trading connected to Indian market. Trading connected to Indian market, but actual business happened outside India. जो foreigners माने जो derivatives किनुचंती को market to derivatives Indian stock market to derivatives किंतु business होतला कोठी outside India. बुझिपारले? So India lost what? Transaction business, financial activity, international investor engagement. Okay, so एटा बुझिपारले समझते? Next example होची कोन? International arbitration. Suppose disputes happen between an Indian company and foreign investor. Okay, disputes happen between Indian company and foreign investor. Earlier, many cases were settled in London, Singapore, and Dubai. Okay, so foreign legal systems, foreign financial centers become more important. Okay, now India wanted such international financial and legal ecosystem inside India itself. So India created what? World-class banking, global investment system, foreign currency transaction, fintech ecosystem inside India itself. In terms of what? Gift City. Okay, therefore Gift City was created. Gift City was developed to become India's own international financial hub. बुझिपारलम? एबे arbitration भी एठी ही हुए. यदि Indian companies मानन को foreign capital raise करियर अछि, they can raise the foreign capital through what? Through Gift City. बुझिपारले? Arbitration ताले भी एठी सेटल हे परिबो. बुझिपारलम? यदि को फॉरेन इन्वेस्टर्स को इंडियन स्टॉक मार्केट रिलेटेड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स किनियर अछि, देन दैट फॉरेन इन्वेस्टर कैन अप्रोच व्हाट? गिफ्ट सिटी. बुझिपारलम? ओके, सो जो बिजनेस टा लॉस होतला बुझिपारले इंडिया रो, से बिजनेस वर्तमान कन दैट कैन स्टे विद इन इंडिया. नाउ ग्लोबल बैंक्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, फिनटेक फर्म्स, इंश्योरेंस कंपनीज, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कैन ऑपरेट फ्रॉम इंडिया itself instead of depending on foreign financial centers. Fine. Now foreign currency settlement system. The foreign currency settlement system कौन? Foreign currency settlement system. Recently, the Ministry of Finance launched foreign currency settlement system at Gift City. News रे कौन पे आस्तिला? Recently, the Finance Ministry launched foreign currency settlement system at Gift City. What is the foreign currency settlement system? देखो, foreign currency settlement system allows settlement of transaction in foreign currencies within Gift City. For example, suppose an Indian company imports machinery from Germany. Payment amount is how much? 10 million euros. Fine. Payment amount is 10 million euros. Earlier, international settlement often happened through foreign correspondent banks. Overseas settlement system, international financial centers like London and Singapore. This increased what? Transaction cost, settlement time, dependence on foreign financial infrastructure. Suppose देखो दुईटा कंपनी अछि, गोटे होची इंडियन कंपनी ABC लिमिटेड, आ गोटे होची जर्मन एक्सपोर्टर कोन XYZ लिमिटेड. फाइन. ट्रांजैक्शन वैल्यू केते? 10 million euros. Both companies use banks operating inside Gift City. Both companies माने गिफ्ट सिटी जो बैंक टा ऑपरेट करूची से बैंक को यूज करी कोन करिवे? ट्रांजैक्शंस करिवे. बुझ पाइलम? किंतु अर्लियर कोन होतला ए फॉरेन ट्रांजैक्शंस पई फॉरेन फाइनेंशियल सेंटर ऊपर डिपेंड करया पड़तला. सपोज गोटे इंडियन बैंक जीवो अप्रोच करिवो सिंगापुर फाइनेंस सेंटर रे जो बैंक ता थिवो, जर्मन कंपनी भी पुन सेठी को जीवो से बैंक को अप्रोच करिवो, तापर ट्रांजैक्शन ता हबो. बुझ पाइलम? नाउ इंडियन इंपोर्टर मेक्स पेमेंट. ABC Limited deposits equivalent foreign currency amount through its bank in Gift City. Suppose exchange rate kete 1 euro is equal to 100 rupees. So payment value is kete 100 crore equivalent. Settlement happens within the Gift City. Fine. Okay. Now, central bank digital currencies. Central bank digital currency. देखो तो context कौन? Recently, RBI has recommended the center to connect. RBI has recommended the center to connect central bank digital currencies of BRICS countries to be included on the agenda for the 2026 summit of the grouping. BRICS summit हेतला वर्तमान बुझ पारल recently हेतला कोन summit रो गोटे कोर recommendation कोन थिला?
आरबीआई गवर्नमेंट को रेकमेंड कला बुझी पारलम टू कनेक्ट सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज ऑफ ब्रिक्स कंट्रीज टू बी इंक्लूडेड ऑन दी एजेंडा। एबे देखिबा हमें व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। देखो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी मीन्स डिजिटल फॉर्म ऑफ अ कंट्रीज ऑफिशियल करेंसी इश्यूड बाय द सेंट्रल बैंक। ता माने जो कैश आपन पाखरे अछि से कैश टा कोन एटा इश्यू की करछि आरबीआई बुझी पारलम। एबे से कैश टा आपन कोन मटेरियल फॉर्म रे अछि जो कैश टा को फॉर्म रे अछि मटेरियल फॉर्म रे अछि। एबे आरबीआई कोन कहउछि आरबीआई कहउछि एई जो मटेरियल फॉर्म जो अछि बुझी पारले जो मनी व्हिच इज इन मटेरियल फॉर्म इंस्टेड ऑफ दैट मटेरियल फॉर्म वर्तमान आरबीआई कोन इश्यू करछि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ता माने जदी डिजिटल करेंसी आप जस्ट सपोज डिजिटल करेंसी 500 रुपीस आउ कैश 500 रुपीस आपन पाखरे कैश अछि 500 रुपीस तो आपन पाखरे अछि डिजिटल रुपी 500 रुपीस दीटार वैल्यू मार्केट रे कोन समान बुझ पले डिजिटल वैल्यू बुझ पले डिजिटल करेंसी ए जो मटेरियल जो करेंसी टा आपन को पाखरे मटेरियल फॉर्म रे अछि एटा भी कोन आरबीआई इश्यू करछि जो 500 रुपीस डिजिटल रुपी एटा भी की इश्यू करछि आरबीआई इश्यू करछि बुझ पले डिजिटल रुपी। प्राइवेट डिजिटल रुपी रे एग्जांपल दे परिबे बिटकॉइन हे गेला बिटकॉइन इज योर प्राइवेट डिजिटल कॉइन मैं डिजिटल रुपी बुझ पारलम किंतु सेटा इश्यू के करछि कि आरबीआई जणा नाही बुझ परछन से प्राइवेट डिजिटल रुपी को हम यूज करि परिबा नाही बिकॉज़ व्हाट दे आर नॉट सोवरेन। जेहेतु वर्तमान आरबीआई कोन देखुछि ए डिजिटल रुपी रो ट्रांजैक्शंस वर्तमान बढ़ुछि बुझ परले धीरे धीरे सेति में आरबीआई कोन करछि आरबीआई हैज इंट्रोड्यूस्ड व्हाट सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी देखि डिटेल वर्तमान देखिबा देखंतु इन इंडिया सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को इश्यू की करे आरबीआई इश्यू करे कॉल्ड एज डिजिटल रुपी। जो कैश टा अपन पाखरे सेटा अछि कोन मेटल फॉर्म रे अछि एई रुपीटा कोन डिजिटल फॉर्म रे रहइबो बुझि पारलम डिजिटल फॉर्म रे रहइबो। अच्छा जो बैंक आपन को जो बैंक डिपॉजिट रे जो पैसा गुडा को अछि सेटा कोन मनी ना नुहे यस मनी इन द फॉर्म ऑफ बैंक डिपॉजिट्स बुझि पारले मनी इन द फॉर्म ऑफ बैंक डिपॉजिट्स। अच्छा आपन को हाथ रे कैश अछि 500 रुपीस आपन को अकाउंट रे अछि 500 रुपीस जो कैश टा आपन पाखरे अछि सेटा कार लायबिलिटी सेटा कार लायबिलिटी जो कैश टा आपन हाथ रे सेटा कार लायबिलिटी आरबीआई रे लायबिलिटी केन आरबीआई इश्यू करछि बुझि पारले। आपन को अकाउंट रे जो 500 टंका सेटा कार लायबिलिटी बैंक रे लायबिलिटी बुझि पारले केन बैंक आपन को फेरिया पड़ो बुझि बैंक आपन को फेरियो किंतु आपन हाथ रे जो कैश टा अछि सेटा कार लायबिलिटी आरबीआई रे लायबिलिटी। जदि आरबीआई डिजिटल रुपी इश्यू करिवो सेटा कार लायबिलिटी आरबीआई रे लायबिलिटी बुझि पारले। ओके देखो अनलाइक प्राइवेट देखो ध्यान से बुझंतु अनलाइक प्राइवेट डिजिटल करेंसीज फॉर एग्जांपल जिंती बिटकॉइन हे गेला एथेरियम हे गेला बुझ पारले अनलाइक प्राइवेट डिजिटल करेंसीज सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इज ऑफिशियल सोवरेन करेंसी बुझ पारले legally recognized yes legally recognized and fully backed by the central bank. So central bank digital currency is basically what digital cash issued by the central bank digital cash issued by the central bank। धीरे धीरे हम वर्तमान कोन धीरे धीरे बुझ पारले हम धीरे धीरे वर्तमान सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को आबु को यूज करबा इंस्टेड ऑफ यूजिंग कैश फाइन। देखो टुडे most digital payments happen through bank deposits yes most digital payment happen through bank deposits UPI payment phone pay cards etc बुझ पारलम but actual money still exists mainly as what bank deposits or physical cash। bank deposits are actual money बुझ पारले which is the liability of banks whereas cash is also actual money which is the liability of SBI बुझ पारले। meanwhile cryptocurrencies like bitcoin ethereum become popular होछि बुझ पारले but cryptocurrencies have problems no central authority okay bitcoins cryptocurrencies like bitcoin and ethereum they have no central authority their price is highly volatile बुझ पारले माने आज जदी 50 लाख काली को 40 लाख ता पर 70 लाख बुझ पारले highly volatile and they have regulatory concerns so central banks are now creating own official digital currency okay that idea becomes what central bank digital currency। देखो suppose you have 500 rupees physical cash okay अपन से कैश को कोन अपन वॉलेट रे रखि परिबे बुझि पारले डायरेक्टली अपन स्पेंड करि परिबे no bank needed during payment fine no bank needed during payment। now let's say RBI creates digital version of the same 500 rupees एटा को भी अपन कोन आपण एटा को भी आपण डिजिटल वॉलेट रखि परिबे 5 टका को बुझ पारले डिजिटल वॉलेट फाइन
It is issued by RBI and has the same value as physical currency. Digital rupee रे आपण digital wallet रे आपण रखि परिबे आ ताको पेमेंट पई यूज करि परिबे. Fine. Okay, that means this central bank digital currency rupees 500 cash is equal to 500 rupees digital currency. Difference between cryptocurrency and देखो cryptocurrency and central bank digital currency with the difference कौन देखो. Central bank digital currency issued by the central bank of a country. They are cryptocurrencies, they are privately owned. बुझ पाल नहीं. They are legal tender. Central bank digital currencies are legal tender. Legal tender मान जानी चाहिए. Legal tender which is acceptable across India. Fine. Legal tender usually not legal tender. Fine. And central bank digital currency, they have stable value. They are not volatile. They are not volatile. Whereas cryptocurrencies are highly volatile. Central bank digital currencies are government regulated. Whereas they are mostly decentralized. बुझ पाल नहीं. And central bank digital currency have sovereign backing, whereas they have no sovereign backing. Fine. Why RBI is interested in BRICS central bank digital currency connectivity? देखो तो RBI recently suggested connecting central bank digital currencies of BRICS countries. Okay, BRICS countries मानकर जो digital currency अच्छी central bank digital currency परस्पर सहित CBDCs को connect करिया पे suggest करची RBI. हेलो कौन पाइन? BRICS countries include what? Brazil, Russia, India, China and South Africa. Fine. Suppose India, suppose India trades with Russia. India trades with Russia. Normally transaction depend on dollar based system. Fine. But if digital rupee and digital ruble become connected, then direct digital cross border payment become easier. बुझ पारले? Direct cross border digital payment become easier. For example, suppose India imports Russian oil worth rupees 800 crore. Fine. Using connected CBDC, payment may happen directly through digital rupee and digital ruble systems. No need for dollar conversion. Dollar को convert करे दरकार नहीं. And Western payment intermediaries. No need for using what? Western payment intermediaries. Fine. Directly digital rupee transfer कर दे परिवो कौन? Russia, India transfer कर दे परिवो कहाँ को? Russia को. बुझ पारले? Digital. The difference is what? Difference देखो. Difference कौन? Difference is speed. Difference is speed, settlement mechanism, banking dependence and international payment infrastructure. आपण को आउ कौन सी थर्ड पार्टी रा दरकार नहीं. देखो एबे जेतबेले एबे भी आमे कोन रशिया सहित रुपी रे ट्रेड करि परिबा, रुबल रे भी ट्रेड करि परिबा. किंतु प्रॉब्लम कोन एबे प्रॉब्लम होची आपण को गोटे थर्ड पार्टी दरकार. आपण को बुझ पारलु? थर्ड पार्टी दरकार, गोटे कॉमन पार्टी दरकार जे कि कोन जा जे आपण को ट्रांजैक्शन से सहायता करिबा. आपण डायरेक्टली रुपी सेंड करि परिबा रशिया को, रशिया डायरेक्टली सेंड करि परिबा रुबल इंडिया को. बुझ पारले? बिकॉज़ काई रशियन बैंक इंडिया रे नहीं, इंडियन बैंक रशिया रे नहीं. बुझ पारलु? किंतु डिजिटल करेंसी को ट्रांसफर करिबा पय यू डोंट नीड एनी थर्ड पार्टी. डायरेक्टली ट्रांसफर हे परिबो इवन दो रशियन बैंक्स डजंट एग्जिस्ट इन इंडिया. बुझ पाछन? फाइन. फर्स्ट अंडरस्टैंड द करेंसी सिस्टम. एटा से जहां बुझेले आपण सेटा ही लिखा हिची. बुझ पारला? नाउ लेट्स कम टू the केवल आर्टिकल एग्जांपल दिया है. लेट्स कम टू द नेक्स्ट करंट अफेयर्स. ओके, सी हियर. वेज एंड मीन्स एडवांसेस. देखो वेज एंड मीन्स एडवांसेस रिसेंटली RBI set the ways and means advances limit for the central government for the second half of फाइनेंशियल ईयर 25-26 वेज एंड मीन्स एडवांसेस. मैं ऑलरेडी आपन कहि छी जे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यदि चाहिबो RBI टू लॉन्ग टर्म लोन नहीं परिबो नहीं. बुझ परले? गवर्नमेंट कैन ओनली बोरो फ्रॉम RBI फॉर शॉर्ट टर्म पई ही बोरो करि परिबो RBI काटू, गवर्नमेंट काटू RBI टू. लॉन्ग टर्म पई यदि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोरो करिवा को चाहू छी ताले से मार्केट रू बोरो करिवो RBI टू नहीं. फाइन. अच्छा, जेतबेले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शॉर्ट टर्म पे बोरो करे RBI टू से प्रोसेस टा को कोन मेकानिज्म टा कोन कोआ जाय? वेज एंड मीन्स एडवांसेस. बुझ पारलु? वेज एंड मीन्स एडवांस. देखो वेज एंड मीन्स एडवांसेस आर शॉर्ट टर्म टेम्पररी लोन्स गिवन बाय द RBI to both central government as well as state government to manage temporary shortage of cash. This scheme was introduced in 1997. हला जदि सेंट्रल गवर्नमेंट जदि शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी मिसमैच हला
किंबा स्टेट गवर्नमेंट्स मानकर शॉर्ट टर्म पे जदी लिक्विडिटी मिसमैच होला से लिक्विडिटी मिसमैच को एडजस्ट करबा पई से माने आरबीआई टू लोन नहीं परिबे बुझ परलम फॉर एग्जांपल सपोज आपण जानि छंती देखो सपोज गवर्नमेंट पैसा अर्न करे थ्रू टैक्सेस थ्रू बोरोइंग्स एंड थ्रू नॉन टैक्स रेवेन्यू किंतु बट मनी कम्स इन मंथली और क्वार्टरली और हाफ ईयरली और एनुअली बुझ परले गवर्नमेंट जो पैसा गुडा को अर्न करे से आइदर मंथली अर्न करे क्वार्टरली अर्न करे किंबा हाफ ईयरली किंबा एनुअली सपोज हेलो सपोज गवर्नमेंट को हठात बुझ परले सब्सिडीज प्रोवाइड करिवार अछि बुझ परले सब्सिडी प्रोवाइड करिवार अछि तो गवर्नमेंट को आउरी पेमेंट आसीनी गवर्नमेंट को वर्तमान पेमेंट एवरी आसीनी मासे पर आसीबो किंबा गोटे क्वार्टर पर आसीबो बुझ परले पेमेंट इन टर्म्स ऑफ जीएसटी कलेक्शंस मासको हुए जीएसटी कलेक्शंस बुझ परले मास को जीएसटी कलेक्शंस हुए इनकम टैक्स कलेक्शंस क्वार्टरली भी हुए हाफ ईयरली भी हुए एनुअली भी हुए बुझ परले तो गवर्नमेंट रो जो रिसीट्स अछि सेटा को डेली बेसिस रे हुए तो कम हुए बुझ परले मंथली क्वार्टरली हाफ ईयरली एनुअली किंतु गवर्नमेंट रो एक्सपेंडिचर डेली हुए बुझ परले गवर्नमेंट रो अर्निंग्स टा हुए कोन हुए तो मंथली क्वार्टरली हाफ ईयरली एंड एनुअली किंतु गवर्नमेंट रो एक्सपेंडिचर दैट हैपेंस ऑन डेली बेसिस फाइन सपोज गवर्नमेंट को अर्जेंटली सब्सिडी प्रोवाइड करिवार अछि गवर्नमेंट रो वर्तमान कलेक्शंस हेनी तमन कोट आनियो पैसा अप्रोच करबा काहू आरबीआई टू मासे पे लोन नबो बुझ परले सब्सिडी दे दबो तापर मासे पर कलेक्शन कर नबो गवर्नमेंट पुणी आरबीआई को रिटर्न कर दो बुझ परलो एटा होची आपनकर वेज एंड मींस एडवांसेस देखंतु बट गवर्नमेंट देखंतु गवर्नमेंट अर्न्स मनी थ्रू टैक्सेस बोरोइंग नॉन टैक्स रेवेन्यू बट मनी कम्स इन मंथली क्वार्टरली हाफ ईयरली एंड एनुअली बट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हैपेंस daily continuously fine the problem is that there exists a time lag between income and expenditure yes one time gap achi income receipts और expenditure भीतर कोन one time lag achi बुझ पालनु sometimes expenditure becomes immediately due but tax collections may come later okay so this creates what temporary cash mismatch WMA ways and means advances solve this problem suppose देखो suppose government currently has 20,000 crore cash balance बुझ पालन but immediate expenditure due is salary pay करिवार अछि worth केते 15,000 crores pension केते 10,000 crores and subsidies केते 5,000 crore pay करिवार अछि government को immediately किन government पाखरे cash balance केते अछि 20,000 crores total expenditure केते अछि गवर्नमेंट रो 30,000 crore and government पाखरे अछि cash balance अछि केते 20,000 crore so the government faces temporary shortage of how much 10,000 crores so government approaches RBI gives WMA loan of 10,000 crore बुझि पारलम this is ways and means advances short term temporary loans okay government later repays after tax collection borrowing receipts or revenue inflows arrive बुझि पारलम okay now WMA is not long term borrowing already kahichi it's not a long term borrowing it is only a temporary liquidity support to the government types of WMA देखंतु ways and means advances types of ways and means advances देखंतु गोटे होची आपनकर normal ways and means advances आ गोटे होची आपनकर special ways and means advances normal ways and means advances कोन this is देखंतु normal होची आपनकर regular temporary loan given by RBI based on limits fixed for the governments जेति की लिमिट्स फिक्स हेता है गवर्नमेंट्स मन पई बुझ परलम सेति की टर्म से रेगुलर दिस इज अ रेगुलर टेम्पररी लोन गिवन बाय RBI based on limits fixed for the governments special WMA कोन special WMA is given against collateral such as government securities बुझ परलम special WMA or special loans are given against what against the collateral of government securities whereas normal WMA ways and means advances they are regular temporary loan you don't need the government doesn't need to keep any government securities as mortgage with the RBI fine okay special WMA देखो interest rate is usually lower than the normal WMA fine जदि आपण स्पेशल WMA थ्रू आपण जदि लोन नउछन RBI ठू तले इंटरेस्ट रेट कम रहबो काहे कि काइना आपण किसी गोटे सिक्युरिटी कोलैटरल रखछन बुझ पारलु एंड नॉर्मल WMA केस रे कोन इंटरेस्ट रेट अधिक रहबो फाइन देखो ऑर्डर ऑफ एक्सेस फॉर स्टेट्स जतो स्टेट्स मानन को RBI लोन दिए फॉर शॉर्ट टर्म टाइम थ्रू वेज एंड मीन एडवांसेस से RBI प्रथमे दिए को WMA
स्पेशल WMA बुझी पाले स्पेशल WMA पर कोन दबो नॉर्मल WMA फाइन ओके आफ्टर स्पेशल WMA लिमिट इज एग्जॉस्टेड नॉर्मल WMA बिकम्स अवेलेबल बुझी पाले सेटा स्टेट्स मानक पई दबो प्रथमे स्पेशल WMA ता माने जदी स्टेट्स माने RBI टू बोरो करिया को चाहछन दे मस्ट कीप सम गवर्नमेंट सिक्युरिटीज एज कोलैटरल विथ RBI तापर सेटा एग्जॉस्ट हला परे तापर RBI कोन दबो नॉर्मल WMA बट सेंटर पे प्रथमे आसीबो कोन नॉर्मल WMA बुझी पाले सेंटर पे आसीबो प्रथमे नॉर्मल WMA दैट मींस सेंटर डजंट हैव टू कीप एनी कोलैटरल एनी गवर्नमेंट सिक्युरिटीज एज कोलैटरल विथ द RBI फाइन ओके ड्यूरेशन ऑफ WMA कहते हैं WMA is generally available for up to 90 days देखो for up to 90 days okay that is must be repaid within 3 months okay now interest कहते चार्ज करें what happens देखो तो what happens interest rate is how much interest rate is linked to RBI repo rate repo rate what will happen if government doesn't repay within 90 days then it becomes what it becomes overdraft जदि 90 दिन भितरे जदि गवर्नमेंट फेरै पारनी बुझ पारनी तो सेटा कोन हो जिवो overdraft is treated more seriously because the government is using funds beyond permitted short term period बुझ पछन overdraft is treated very seriously by the RBI because government is using funds beyond permitted short term period माने RBI लोन देइतला केते दिन जाय 90 days पे बट द गवर्नमेंट 90 days बियॉन्ड 90 days ऊपर हे गेलन गवर्नमेंट लोन फेरेनी सेति में कोन हे गेला ओवरड्राफ्ट को बुझ पालम पेनल्टी इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट दैट इज रेपो रेट प्लस 2% ओके यदि आप 90 days पर यदि पे करछन्ती देन पेनल्टी लागिवो रेपो रेट प्लस 2% ओके why is excessive WMA dangerous देखो if government excessively depends on RBI advances money supply will increase then inflationary pressures may rise fiscal discipline may weaken so WMA is tightly regulated by the RBI WMA limits central government देखो central government ways and means advances through RBI to केते borrow करि परिबो that is decided the limit is decided by the RBI in consultation with the government of RBI मिसिक डिसाइड करिवे the central government ways and means advances through केते टंका borrow करि परिबे RBI to fine okay WMA limits for central government are fixed by RBI in consultation with the government of India okay limit depends on fiscal conditions cash flow requirements and economic situations fine okay एगुडा को डिफरेंट फैसिलिटीज अछि एगुडा के इंपोर्टेंट नह then let's come to priority sector lending what is the context priority sector lending context कौन देखिबा देखो context कौन recently RBI relaxed priority sector lending norms for small finance banks recently RBI relaxed priority sector lending norms for small finance banks देखो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग कौन एटी के आसीबा हमें ठीक है पर फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग इज अ पॉलिसी it is a policy under which banks are required to give a certain portion of their loans to sectors that are important for inclusive economic development but may not receive sufficient credit normally बुझि पारले एबे एज पर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग आरबीआई कोन करछि किछिटा सेक्टर्स को प्रायोरिटी सेक्टर्स बोली डिक्लेयर करछि बुझि पारले प्रायोरिटी सेक्टर्स माने खास कर अपन कहि परिबे कोन ठीक है वल्नरेबल सेक्टर्स व्हिच आर क्वाइट इंपोर्टेंट फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट हलो वर्तमान देखो से जो वल्नरेबल सेक्टर्स अछि फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चरल सेक्टर को कोन गवर्नमेंट आरबीआई डिक्लेयर करछि एज प्रायोरिटी सेक्टर व्हाई एग्रीकल्चर सेक्टर इज इंपोर्टेंट फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट एज वेल एज एग्रीकल्चर इज वल्नरेबल सेक्टर बुझि पारलम ये जो वल्नरेबल सेक्टर्स गुडा को अछि जेमिति आपन एग्रीकल्चर सेक्टर हे गेला एमएसएमई सेक्टर हे गेला बुझि पारलम जेमिति हमन टूरिज्म हे गेला बुझि पारलम these sectors are quite vulnerable in nature सेति पई बैंक्स माने कोन करंती ए जो प्रायोरिटी सेक्टर्स गुडा को अछंती नॉर्मली एमान को लोन प्रोवाइड करंती नाही कहीं ना डिफॉल्ट रिस्क बहुत हाई था बुझ पले डिफॉल्ट रिस्क ता बहुत हाई था अब बैंक्स आर कमर्शियल एंटिटीज से माने सीमित लोन प्रोवाइड करिवे केतोळे जतो तांको प्रॉफिट देखा जाउची जदि सेमान जानि छन जे एग्रीकल्चर सेक्टर को जदि हम लोन दबा आ डिफॉल्ट रिस्क बहुत हाई अछि बुझ पले
लॉस हो बैंक बुझ पारल सो नॉर्मली कोन से क्रेडिट दियंती नाही ये जो वल्नरेबल सेक्टर्स को ओके किंतु प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग कोन प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग इज अ पॉलिसी अंडर व्हिच banks are bound banks are required to give a certain portion of their loans to sectors that are important for inclusive development but may not receive sufficient credit normally बुझ पारल the policy was formalized in which year 1972 and it is administered by RBI है देखो why priority sector lending was needed कौन पाई why PSL was needed देखो banks naturally prefer lending to big companies why because banks are commercial entities so they naturally prefer lending to big companies rich borrowers low risk urban sectors why because profits are higher repayment risk is lower fine repayment risk is lower as a result important sectors such as farmer agriculture sector small business sector poor students rural housing renewable energy sector often did not receive adequate loans now this created what this created unequal development amongst the sectors rural distress and financial exclusion okay so RBI introduced what priority sector lending so what is the objective of priority sector lending that is ensure inclusive growth improve financial inclusion provide institutional credit money what do you mean by institutional credit non institutional credit and institutional credit माने कोन यदि आपण बैंक आपण को लोन प्रोवाइड करछि त कोन को हबो institutional credit यदि आपण साहूकार मानन को लोन आनु त कोन को हबो non institutional credit हला so to provide institutional credit to weaker sections support employment generation reduce dependence on informal money lenders किबा non institutional sectors बुझि पारले so suppose what is private sector lending suppose a bank has 1 lakh crore total eligible lending base बुझि पारले lending base केते अछि बैंक रो 1 lakh crore RBI कोन कहउछि 40% must go to the priority sector okay so bank must lend rupees 40,000 crore to PSL sectors okay PSL sectors what is your adjusted net bank credit it is related to the bank's lending and credit operations तामान देखो एटी एग्जांपल सपोज आपन को एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट होची कोन केते 900 करोड़ बुझ पारलम तामान आपन लोन सपोज एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट माने कोन या माने हो सपोज आपन 800 कोटी टका लोन देइचंती सपोज 800 कोटी टका लोन देइचंती आ 100 कोटी टका आपन इन्वेस्ट करचंती बुझ पारलम 800 कोटी टका आपन लोन देइचंती आ 100 कोटी टका आपन कोन एलिजिबल इन्वेस्टमेंट करचंती बुझ पारलम ताले एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट केते हे गेला 900 करोड़ बुझ पारलम आउट ऑफ दिस 900 करोड़ PSL target is how much 40% तामाने 900 करोड़ रो 40% बैंक मस्ट एडवांस टू द प्रायोरिटी सेक्टर्स बुझ पारलम केते होची तामाने 360 कोटी टंका बैंक माने बुझ पारलम प्रायोरिटी सेक्टर्स माननकु लोन देबा को बाध्य समान बुझ पारलम ओके to priority sectors like agriculture MSME education housing etc what are priority sectors देखो RBI identifies sectors important for employment such as agricultural sector rural development sector बुझ पारलम main priority sectors include what देखो these are agriculture MSME export credit education housing social infrastructure renewable energy and others notified by RBI fine so applicability of PSL देखो commercial banks ऊपर apply होची priority sector lending rules regional rural banks ऊपर apply होची PSL rules small finance banks ऊपर भी apply होची local area banks ऊपर भी apply होची and urban cooperative banks ऊपर भी apply होची different PSL targets देखंतु please different PSL targets देखंतु okay domestic scheduled commercial banks तांगर PSL target केते 40% of adjusted net bank credit hello अच्छा foreign banks with less than 20 branches they also have 40% PSL target बुझ पाले तांगर net adjusted net bank credit रो से 40% प्राइवेट सेक्टर्स को लोन देबे फाइन हला however but the foreign banks actually give more export credit hello
RRBs and small finance banks, RRBs and small finance banks case रे PSL target कितने 75%. तामने out of their adjusted net bank credit बुझ पर ले NBC 75% must go to the priority sectors, fine. Okay, and recent RBI change for small finance banks, is देखो RBI has relaxed PSL norms for small finance banks. Earlier PSL target was for small finance banks was how much? 75%. It has been reduced to how much? 60%. This is the recent change. New structure is 60 out of 60%, 40% mandatory PSL, 40% mandatory out of 60%, 40% mandatory PSL, 20% flexible lending allowed for non-PSL secured loans. बुझी पारे कौन कहले जदि सपोज 100 crore होची ए एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट बुझी पारले ता भितरु 60 crore कौन जीवो PSL बुझी पारले 60 crore रु 40 crores बुझी पारले कोठी जो मैंडेटरी PSL आउ जो रिमेनिंग 20 crores रहिला सेटा को सी देई परिबो कोन फ्लेक्सिबल वे रे देई परिबो बट ओनली टू secured loans. Okay, only to secured loans. Okay, why RBI relaxed norms? Small finance banks पे RBI norms थोड़ा कहीं relax कर दोला देखो तो because small finance banks argued that excessive high PSL obligation 75% बुझ पाले 75% to priority sectors and on the top of that these priority sectors are what? Vulnerable sectors. Hello, so profit margin is quite less because small finance banks actually argued that excessively high PSL obligation reduced what? Profitability. Lending flexibility become limited. Portfolio risk increased. बुझ पाछन अरे सब जदी सब ने एग्रीकल्चर MSME वीकर सेक्शन को देई चली रे बुझ पाछन पोर्टफोलियो रिस्क इंक्रीज होबो ना होबो बुझ पाले तो ताम जदी गोटे क्राइसिस आसिला आगे एई सेक्टर्स गुडा को कोलैप्स कर जिवे बुझ पाले गोटे करी बुझ पाले जदी पई RBI gave more flexibility to improve sustainability, strengthen business model of small finance banks. बुझी पारना? गोटे important अच्छी है PSL certificates. What do you mean by PSL certificates? Priority sector lending certificates. ऐमाने कौन देखो तो? Means priority sector lending certificates. These certificates allow banks to buy and sell PSL achievements. या माने कौन देखो तो सपोज गोटे बैंक अच्छी एग्जांपल दिया देखो सपोज बैंक ए रिक्वायर PSL कितने 1000 crore. ओके एक्चुअल PSL माने बैंक ए टोटल तक प्रायोरिटी सेक्टर को कितने लैंड करवा कथा 1000 crore बुझ पाले आउट ऑफ टोटल माने एटा होची कोन एटा तार 40% हेइथिबो बुझ पाले 40% ऑफ ANBC बुझ पाले सॉरी एडजस्ट नेट बैंक क्रेडिट हेलो 40% ऑफ ANBC हेइथिबो तो 40% केते होची 1000 crore ताने 1000 crore से प्रायोरिटी सेक्टर्स को लैंड करवा कथा बुझ पाले किन करिछि केते 1200 crore बुझ पाले दैट इज मोर देन द टारगेट फाइन. ओके एक्सेस 200 करछि आ गोटे बची बैंक बी ताकू भी तार भी 1000 crore ताकू कोन करवा कथा प्राइवेट सेक्टर को लैंड करवा कथा 1000 crore ता कोन 40% ऑफ ANBC बुझ पाले 40% ऑफ ANBC ताकू 1000 crore करवा कथा बुझ पाले किन से करछि केते 800 टारगेट मीट कर पानी बुझ पाल त सी कोन करिवो आउ टू सी कोन बैंक बी कोन करिवो 200 crores दबो का को बैंक ए को बुझ पाल कारण 200 crore बैंक ए कोन करछि 200 crores एक्स्ट्रा खर्च करछि प्राइवेट सेक्टर ऊपर तो बैंक बी कोन करिवो 200 crores दबो का को बैंक ए को बैंक ए 200 crores बदले बैंक बी को कोन देबो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट वर्थ हाउ मच 200 crore बुझ पारले तब या टारगेट भी मीट हो गेला या टारगेट भी मीट हो गेला बुझ पारले दिस इज द कोन माने आईडिया ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट हला तो इट शॉर्टफॉल कितने अछि 200 crore सो बैंक बी कैन बाय PSL certificates from bank A worth rupees 200 crore. Now bank B meets the target, bank A also meets the target, along with that earn some income बुझ पारले पेनल्टी देखो तो पेनल्टी हो कौन पेनल्टी फॉर नॉट मीटिंग PSL टारगेट्स पेनल्टी कौन देखो इफ अ बैंक ये जो PSL सर्टिफिकेट टा इशू केते हबो
जदि बैंक ए करिछि 1200 बैंक बी करिछि 800 ताहले पीएसएल सर्टिफिकेट कोन नै परस्पर सहित ट्रेड हे परियो किंतु बैंक ए करिछि 1000 बैंक बी करिछि 800 से केस रे किमि हो बुझ पालन बैंक ए करिछि 1000 बैंक बी करिछि 800 से केस रे पीएसएल सर्टिफिकेट देई परियो कि बैंक ए देई परियो ना से केस रे हम कोन कहबो हम कहि परियो जे द बैंक बी हैज फेल्ड टू मीट इट्स पीएसएल टारगेट बुझ पालन से केस रे हम कहि परियो द बैंक बी हैज फेल्ड टू मीट इट्स पीएसएल टारगेट एटा को बुझी पाले ना बुझी पाले फाइन देखो ई banks fail to meet PSL targets RBI requires them to deposit the shortfall amount into special development funds such as Rural Infrastructure Development Fund with National Bank for Agriculture and Rural Development NABARD बुझ पाले जदि गोटे बैंक तार PSL टारगेट को मीट न करि पाला तो जेतिकी शॉर्टेज अछि सेही अमाउंट से का डिपोजिट करिवो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड विथ नाबार्ड किंबा फंड्स विथ सीबीआई किंबा मुद्रा किंबा हाउसिंग बैंक नेशनल हाउसिंग बैंक डिपोजिट कर दो बुझ पारले ओके तापर देखो तो को लेंडिंग दिस इज क्वाइट इंपोर्टेंट रिसेंटली को लेंडिंग अरेंजमेंट बहुत इंपोर्टेंट ठीक है देखो तो को लेंडिंग अरेंजमेंट्स कॉन्टेक्स्ट होची रिसेंटली co-lending arrangement directions 2025 expanded the framework beyond priority sector lending to cover all types of lending activities. Now what do you mean by this? देखो co-lending arrangement माने कौन? Co-lending arrangement माने होची it is a system where two regulated financial entities jointly give loan to the same borrower according to a prior agreement. गोटे लोक को बुझिपारे दीटा इंस्टीट्यूशंस मिसिक लोन देबे बुझिपारे लोन गोटे कि से गोटे लोन को दीटा इंस्टीट्यूशंस मिसिक देबे ताको कोन कहै जाय को लेंडिंग अरेंजमेंट हला देखो ओके यूजुअली द अरेंजमेंट हैपेंस बिटवीन बैंक्स एंड एनबीएफसीज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस बुझिपारे कंपनीज टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और अदर आरबीआई रेगुलेटेड एंटिटीज The framework जो co-lending arrangement है co-lending arrangement framework is regulated by RBI. What happens? देखो what happens? Different financial institutions have different strength. Yes, some are weak, some are strong. Fine. For example, banks usually have large funds. Banks मानम पाखरे बहुत funds था बुझ पारलम borrowing cost भी कम था banks मानम पाखरे यदि आपण बैंक से borrow करिवे then borrowing cost कम ही था compared to NBFCs. Fine. Strong balance sheets बुझ पारले but banks may have what weaker reach in remote and rural areas बुझ पारले yes they have large funds, they have lower borrowing cost and they also have strong balance sheet but with respect to outreach, with respect to their reach in remote areas the reach might be low बुझ पारले सेमान मोर कोन रूरल एरियाज रे बेसी पेनिट्रेशन न थाई पारे बुझ पारले सो बैंक्स मे हैव वीकर रीच इन रिमोट एंड रूरल एरियाज सो लिमिटेड कस्टमर लेवल पेनिट्रेशन customer limited माने limited customers. Fine. Now however NBFCs often have better local reach, customer understanding, faster loan processing, rural semi-urban network. But NBFCs usually face higher borrowing cost and limited funds. NBFCs मानक पाखरे कोन आउटरीच भलो थाए, रूरल प्रेजेंस भलो थाए, बुझ पाले नेटवर्क भलो थाए, रूरल नेटवर्क भलो थाए, किंतु से मानक पाखरे फंड्स नहीं. बैंक्स मानक पाखरे फंड्स अछि, किंतु रूरल आउटरीच नहीं. बुझ पाले तो सेत में कोन होय? RBI कोन करला? RBI thought of combining the strengths of both and the idea became what? Co-lending arrangement. Who कौन देखो तुम? The idea is in co-lending arrangement one institution contributes customer reach, another contributes what? Funding strength. Both jointly provide loan, share risk, interest income and repayment. Example देखले बुझ पारिए. Suppose गोटे small businessman तब कितना लोन दरकार 10 लाख टका लोन दरकार. Now bank agree हला केते परसेंट लोन रो केते अमाउंट सी देबो
80% of loan amount bank दबो बुझ पारले बैंक लोन दे दबो फाइन 8 lakhs NBFC एग्री केते करला केसे कर दबो 20% of the loan amount माने NBFC लोन कर दबो 2 lakhs गोटे लोक को दीटा इंस्टीट्यूट लोन दोचन बुझ पारले तने एटा गोटे ही लोन एटा ही गोटे लोन किन दोचन केते दीटा इंस्टीट्यूशन बैंक एग्री होला agree to advance 80% of the loan amount whereas NBFC agreed to advance how much 20% of the loan amount together borrower receives how much 10 lakh loan. This is called as what? Co-lending. This is called as co-lending. The borrower gets easier access to credit, bank gets wider customer reach, yes, and NBFC gets funding support. Fine. Acha. In this co-lending arrangement both entities fund the same loan together. Same loan है ना ये अलग सी अलग नहीं same loan meaning loan ownership is shared, repayment is shared, risk is also shared. Revenue sharing example देखो revenue sharing example कौन हुए suppose loan interest collected is rupees 1 lakh annually loan ऊपरे interest वर्षों कितने आସୁଛି 1 lakh आସୁଛି then bank receives share according to participation NBFC receives remaining share okay retention requirement under CLA each regulated entity must retain at least 10% share in the loan at least 10% share in the loan बुझ पारले 10% share in the loan ये जो एटा देखिए एटा हम देखिले इंटरेस्ट कलेक्शन टा एटा देखिए आगु अच्छे यार एग्जांपल देख जाना पड़ियो एटा देखो retention requirement under CLA each regulated entity must retain at least 10% share in the loan ता माने NBFC जितने गोटे लोक को लोन दबो सी लोन अमाउंट रो मोर देन 10% दबो जितने बैंक लोन दबो बैंक भी मोर देन 10% लोन दबो तो आम एग्जांपल रे बैंक केते देछि 20% सॉरी बैंक केते देछि 80% व्हिच इज मोर देन 10% NBFC केते देछि 20% which is more than 10% कौन पे ये अरेंजमेंट अंडर CLA each regulated entity must retain at least 10% share in the loan. Why RBI introduced this rule? To prevent one institution from completely transferring all risks to another. बुझ पारले so RBI wants both lenders to remain responsible. Okay, for example देखो suppose loan amount is 20 lakh minimum share each lender must retain at least 2 lakh बुझ पारले that is 10% minimum बुझ पारले so no lender can completely exit responsibility. Transfer rule 15-day window transfer rule कौन 15-day window transfer rule देखो तो suppose NBFC initially suppose NBFC कौन करला पूरा loan amount दे देला बुझ पारले पूरा loan amount किए देला NBFC देला fine suppose NBFC initially gives full loan to the borrower now banks agreed share must be transferred within 15 days. बैंक जितकी देवा को प्रॉमिस करथिबो लोन देवा को प्रॉमिस करथिबो से अमाउंट बैंक विदिन 15 डेज दे देवा दरकार का को NBFC को सपोज गोटे लोक को 10 लाख टका लोन दरकार बुझ पारले बैंक रो किसी गोटे टेक्निकल प्रॉब्लम जो डिले होउची तो NBFC लोन दे देला ताको कते NBFC ताको लोन दे देला 10 लाख रो लोन दे देला बुझ पारले एबे सपोज बैंक एग्री करथला सपोज 80% ऑफ द लोन सी देबो बुझ पारले टाउन कते 8 lakhs बुझ पारले तो 8 lakhs ए बैंक NBFC को ट्रांसफर करिवो विदिन 15 days fine that is okay एटा देखंतु बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट होउची कोन ब्लेंडेड इंटरेस्ट रेट हलो एबे देखंतु दीटा एबे कोन गोटे बैंक NBFC देछि गोटे लोन दीटा इंस्टीट्यूट देछंती NBFC देछि 2 लाख लोन बैंक देछि 8 लाख लोन एबे इंटरेस्ट किमिति पे करिवो से इंटरेस्ट काहा को पे करिवो किमिति पे करिवो से गोटे ही इंटरेस्ट पे करिवो दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कॉल्ड एज blended rate of interest गोटे ही इंटरेस्ट पे करिवो दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कॉल्ड एज व्हाट blended rate of interest दीटा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करिवो देखो सपोज इन CLA borrower pays one combined or blended rate of interest because both lenders may have different funding cost देखो सपोज बैंक लेंडिंग रेट केते होची 8% बैंक जो लोन टा देछि केते परसेंट रेट रे देछि 8% NBFC केते परसेंट रेट रे देछि 14% लोन पार्टिसिपेशन इज बैंक रो 80% NBFC रो केते 20% लोन पार्टिसिपेशन फाइन नाउ देन ओवरऑल बोरोइंग इंटरेस्ट रेट बिकम्स ब्लेंडेड
interest cost bank portion is 8% of 8 lakh. Yes, 8% of 8 lakh. कितने गला annually 64,000. NBFC portion 14% of 2 lakh. कितने गला 28,000. Fine. Total interest कितने गला 9,92,000. ताले से कितने interest pay करियो 9.2. 9.2 टा कौन आप हमारा blended interest rate. बुझ पर ले. This is your blended interest rate. Recent change कौन है? देखो 2025 में change कौन है इतना? Earlier, co-lending arrangement framework focused mainly on priority sector lending. बुझ पर ले जो co-lending arrangement जो co-lending होता ला बुझ पर ले केवल priority sectors को होता ला बुझ पर ले. But now RBI has expanded it to all types of lending activities. Okay, all types of lending activities. Why expansion is important? Because now co-lending can support retail loans, MSME loan, housing, vehicle, broader credit expansion. Okay, this is about all co-lending arrangement. Fine. Now let's come to domestic systemically important banks. What is the context? Context कौन? Recently, RBI's domestic systemically important banks list identifies SBI, SDFC and ICICI Bank as domestic systemically important banks. RBI कौन कौन 2025 रे SBI को HDFC को और ICICI को डिक्लेयर कर चुका हूं डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स. डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स सिंपली यदि हमें बुझिबा व्हाट डू यू मीन बाय डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स. these banks are so big in their scale of operations. एते तांको स्केल ऑफ ऑपरेशंस एते बड़ो ए बैंक गुडा करम जदि गुट्टे बैंक कोलैप्स कला एंटायर इंडिया रो एंटायर फाइनेंशियल सिस्टम अफेक्ट होबो. बुझ परले ए गुटोटे बैंक बुझ परले तीनटा बैंक दे आर सो बिग इन देयर स्केल ऑफ ऑपरेशंस. इफ अ सिंगल बैंक कोलैप्स द एंटायर फाइनेंशियल सिस्टम इंडियाज एंटायर फाइनेंशियल सिस्टम बुझ परले विल बी सीवियरली अफेक्टेड. सेति पय हमको कोन कोइ छि डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स. तामाने यदि गोटे बैंक कोलैप्स करछि एंटायर फाइनेंशियल सिस्टम कोलैप्स होबार संभावना अछि. बुझ परले सेमा डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स. देखन डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स आर बैंक्स whose failure can seriously disrupt the entire financial system and economy of the country. बुझ परछन गोटे बैंक कोलैप्स होला माने एंटायर फाइनेंशियल सिस्टम अफेक्ट हो. और यदि तीनटा बैंक एक साथ कोलैप्स हो गेले फाइनेंशियल सिस्टम इज डेड. ओके these banks are what? These banks are called too big to fail. तामाने ए बैंक गुडा को एते बड़ बैंक एमाने फेल हे परिबे नाही. there is no option. बुझ परले फेल होबार ऑप्शन ही नाही. ओके they are too big to fail. too big माने बुझ परछन they are too big to fail. एते बड़ो जे से माने फेल हे परिबे नाही. फेल होबे माने एंटायर फाइनेंशियल सिस्टम कोलैप्स होबो. so these banks are too big to fail banks. in India देखो तो in India जो domestic systemically important banks are identified by whom? Reserve Bank of India. so India's domestic systemically important banks 2025 की State Bank, HDFC and ICICI. fine. why this domestic systemically important bank concept is needed? देखो तो suppose a very small local bank collapse. गोटे छोटो लोकल बैंक कोलैप्स करि गला. बुझ पारले इंडिया इंपैक्ट मे रिमेन लिमिटेड. इंपैक्ट कोन लिमिटेड रहिबो. बुझ पारले व्हाई? बिकॉज़ फ्यू कस्टमर्स आर अफेक्टेड. इकोनॉमी कंटिन्यूज फंक्शन नॉर्मली. बुझ पारले बहुत कम कस्टमर्स माने अफेक्ट होबे. बट सपोज एसबीआई सडनली कोलैप्स millions of depositors. बुझ पारले देन crores of depositors panic, businesses lose money, payment system get disrupted, loan stops, stock market crashes, confidence in banking system fails. बुझ परछन टोटल एसबीआई पाखा केते अछि? टोटल एसबीआई द स्केल ऑफ ऑपरेशन इज as big as 64 लाख crores केते अछि. बुझ परले 64 लाख crore माने पाखा 64 लाख कोटी रे केते ट्रांजैक्शंस हुए एसबीआई रे. फाइन. ओके so is this so big? This can 64 lakhs crore ना कितने कोटा अच्छे अमाउंट है वो ठीक से मालूम पड़ना. This can create financial crisis in the entire economy. This can create financial crisis in the
entire economy. So some banks are considered too important to fail. Some banks are considered too important to fail. So these are domestic systemically important banks. Hello. For example, a small bank. For example, a small bank has 5,000 crore deposits. 5,000 crore deposits. If it fails, impacts remain relatively limited. Impacts remain relatively limited. बुझ पारले? कम लोग डिपॉजिट करते ले, कम लोग अफेक्ट हेले. बुझ पारले? Okay. Now suppose SBI has 60 lakh crore deposits. बुझ पारले? Plus deposits. 60 lakh crore plus deposits. That means if SBI collapses, crores of customers are affected. समस्त को पैसा बुड़ला. बुझ पारले? जितने सब लोग को पैसा डिपॉजिट करते ले, समस्त को पैसा बुड़ला. ATM system is disrupted. Loan system is affected. Government may need rescue. बुझ पारले? यदि गवर्नमेंट यदि SBI को रेस्क्यू न करला, बुझ पारले? रेस्क्यू न करला, तामाने एंटायर फाइनेंशियल सिस्टम कोलैप्स होबार संभावना अछि. बुझ पारछंती? Okay. That means so SBI becomes systemically important bank. Hello. Why too big to fail? Why too big to fail? देखो, because governments and central banks usually cannot allow such banks to collapse easily. बुझ पारले? गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक अलाउ ही करिवेनी जे बैंक्स गुडा को कोलैप्स हो जाओ. बुझ पारले? Why? Because entire financial system is affected. So because their failure may trigger what? Banking panic, financial contagion, economic instability. So markets believe government will likely rescue such banks during crisis. Hello. How RBI identifies domestic systemically important banks? प्रथमे होची size. Larger the bank, larger the economic impact if it fails. Yes. Larger the scale of operations of a bank, larger the economic impact if it fails. Interconnectedness. Banks are connected to other banks. Yes, banks are connected to other banks. NBFCs, payment system, financial markets. If one major bank fails, problems may spread across the entire financial system. Why? Because all are connected. Right? Complexity. Some banks conduct derivatives trading, global operations, investment banking, large financial transactions. So more complexity means failure becomes hard to manage. Okay. Cross jurisdictional activities. Some banks operate across multiple countries. Yes, some banks operate across multiple countries. SBI branch is different countries. So international financial system, their collapse may create what? Global financial impact. Okay. Lack of substitutes. Suppose a bank performs very important function, but no other bank can easily replace it quickly, then its systemic importance actually increases. Okay. Okay. Suppose SBI handles massive government transactions, pension funds, rural banking, payment system. Replacing SBI suddenly becomes extremely difficult. कहीं ना SBI को छाड़ देले अब कौन सी बैंक ये सब functions को perform करूँगी. Fine. Okay. Okay. तापरे UPI context कौन हो? Recent IMF report. देखो तो recent IMF report. Growing retail digital payments. देखो the value of interoperability identifies UPI as the world's largest real-time retail payment system by transaction volume. या माने कौन देखो? हम जानते हैं UPI कौन? UPI is a unified payments interface. Fine. It is a real-time digital payment system. Real-time basis settlement हुए, transaction गुड़ा को settle हुए. Fine. Okay. Is a real-time digital payment system that allows instant transfer of money. Real-time transfer हुए. Fine. Between bank accounts through mobile phones. So, UPI was developed by National Payments Corporation of India. Launched in which year? 2016. Now today UPI is the world's largest real-time retail payment system by transaction volume. Okay, what is the problem? What was the problem before UPI? What was the problem before UPI? Problem कौन था? Earlier digital payments were difficult because bank transfer required what? Account number अपन लिखिए, account number देवे, IFSC code देवे, beneficiary को add करिवे, waiting period थिला, complicated bank process थिला. बुझ पारले? What UPI changed? UPI made payments instant, simple, mobile based and interoperable. Fine. एटा बुझी पाछन समझते? Fine.
Okay, now money can move directly between bank accounts within seconds through phone pay, google pay, bhim, paytm, etc. UPI itself is not money but a payment system. Okay, so actual money transferred is bank deposit money. बुझिपारे को मनी ट्रांसफर होची बैंक डिपॉजिट मनी, कैश भी ट्रांसफर होनी, कौन ट्रांसफर होची बैंक डिपॉजिट मनी. Suppose your SBI account has 10,000 rupees, you send 1,000 rupees through Google Pay. What moves is not your Google Pay but money or not UPI money. बुझिपारे actual transfer is bank deposit balance shifts from your account to another account. So UPI is the payment infrastructure. So UPI is the payment infrastructure and bank deposit is the actual money. Actual money bank deposit account actual money which is the liability of banks. Cash to be actual money which is the liability of RBI. So UPI is built on immediate payment service infrastructure. Okay. And what is IMPS? IMPS is instant interbank fund transfer system which allows 24/7 real-time transfer. Okay. So UPI also integrates what? Aadhaar enabled payment system. Aadhaar enabled payment system allows Aadhaar based banking services, biometric authentication, especially in rural areas. So UPI allows what? UPI allows multiple bank accounts to be linked in one mobile application. Yes. Then suppose you have SBI account, HDFC account, ICICI account. So all can be linked in one UPI app. Transaction code. So you can choose any account during payment. Okay, virtual payment address. One revolutionary feature of UPI is virtual payment address. What is virtual payment address? Instead of sharing account number, IFSC code, you simply share what? Your UPI ID, which is your virtual payment address. It is simpler, safer and easier to remember. So major features of UPI what? No need to enter bank details repeatedly. Fine. Instant transfer is the benefit. 24/7 availability, interoperability. Suppose you use Google Pay, friends use phone pay. Money transfer is possible. Another merchant uses Paytm. Okay. Global position. What is the global position of UPI? UPI accounts for around 49% of global real-time digital payments. UPI accounts for 49% of global real-time digital payments. Real-time digital payments जेतिक होउची तार 49% को थ्रू होउची का थ्रू UPI थ्रू होउची बुझिपारले. This is extremely large. It is ahead of Brazil Pix, Thailand Prompt Pay, China systems. बुझिपारले. So international expansion of UPI. UPI has expanded to countries like Singapore, UAE, France, Bhutan, Nepal, Sri Lanka, Mauritius, Qatar. Okay. Already example previously. Fine. Suppose Singapore gole, he scans UPI enabled QR code, so payment directly happens through Indian banking system. No need for physical cash or exchange, international card dependency. Okay. So Namibia become the first African country to adopt UPI framework through licensing agreement. Hello, Namibia become the first country to adopt first African country to adopt UPI framework through licensing agreement. So why UPI become revolutionary? UPI transformed India because it reduced what? Cash dependence, simplified digital payments, improved financial inclusion, lowered transaction cost, accelerated digital economy and improved interoperability. Fine. ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ corporate bonds ଦେଖନ୍ତୁ. Recently Niti Aayog released the report titled Deepening the Corporate Bond Market in India. Hello. माने नीति आयोग चाहूची बॉन्ड मार्केट एक्चुअली इंडिया रे डेवलप हो बुझिपाले बॉन्ड मार्केट डेवलप हो इंडिया रे. ओके. बॉन्ड मार्केट इज लेस डेवलप्ड कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज इन इंडिया. बॉन्ड मार्केट व्हाट आर कॉर्पोरेट bonds are debt instruments issued by companies to borrow money from investors for business purposes. मैं कहते ऑलरेडी जदि गोटे कंपनी बॉन्ड इश्यू करूची अब आपण जदि से बॉन्ड को किणुचंती तामान कोन आपण से कंपनी को लोन दउचंती किबा से कंपनी आपनटू पैसा बोरो करूची. फाइन. Okay, instead of taking loans only from banks, companies can directly borrow money from investors by issuing bonds, mutual funds, insurance companies, pension funds and public institutions. बुझिपारले बैंक रू पैसा नेबा सब पूरा एंटायर लोन टा बैंक. Instead of taking loans only from banks, companies can directly borrow money from retail investors like us, like we people. बुझिपारले हमको बॉन्ड सेल करिवे सेमान को पैसा दरकार सेमान पैसा मिलिबो.
एबे म्यूचुअल फंड्स भी पैसा इन्वेस्ट कोदर करंती बॉन्ड मार्केट रे खास करी करंती बिकॉज़ बॉन्ड मार्केट इज व्हाट सेफर कंपेयर्ड टू शेयर मार्केट बुझ पारले इंश्योरेंस कंपनीज भी इन्वेस्ट करंती बॉन्ड मार्केट रे बुझ पारले पेंशन फंड्स भी इन्वेस्ट करंती पब्लिक इंस्टीट्यूशंस भी इन्वेस्ट करंती बुझ पारले बॉन्ड मार्केट रे कोन बॉन्ड मार्केट इज मोर प्रिफरेबल कंपेयर्ड टू शेयर मार्केट व्हाई काई ना बॉन्ड मार्केट रे कोन पैसा बुड़ीवार चांस कम कहीं ना आप लोन रे देइछन्ती पैसा बुझ पारले तो प्रति वर्ष कंपनी आपन को इंटरेस्ट दबो शेयर मार्केट कोन आपन ओनर हे जइछन शेयर मार्केट रो प्राइस आज बढ़िला काली कमी पारे तो कमिला आपन को लॉस फाइन ओके तो सो कंपनीज प्रॉमिसेस टू रीपे मनी आफ्टर अ फिक्स्ड पीरियड एंड पे पीरियोडिक इंटरेस्ट फाइन ओके कंपनीज में बदल रे कोन दियंती कंपनीज माने कोन दियंती पीरियोडिक इंटरेस्ट प्रति वर्ष इंटरेस्ट दियंती ऑन मैच्योरिटी आपन को प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिसिंग फेरे देबे फाइन ओके व्हाई कंपनीज नीड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स See, large companies need huge funds for factories, expansion, infrastructure, machinery, acquisitions, long-term projects. Huge fund darkar companies banako. Fine. If companies depend only on bank loans, problem arise. Banks may not have enough long-term loans, long-term funds. Borrowing becomes expensive. Banking system becomes overloaded. बुझ पारले? For example, suppose a company, all companies borrow only from banks. What will happen? The banking system will become stressed. Okay, concentration risk increases. Okay, long-term financing becomes difficult. Corporate bond market distributes financing burden across investors, institutions, financial markets. बुझ पारले कारण जदि आपण लोन नउचंती जदि कोन रिटेल इन्वेस्टर्स मानगटू पेंशन फंड्स टू म्यूचुअल फंड्स टू बुझ पारले इंश्योरेंस कंपनीज मानगटू बुझ पारले बर्डन टा कोन स्प्रेड हो जाई छै अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स जदि आपण केवल बैंक टू लोन नउचंती त माने एंटायर बर्डन टा बर्तन कहां पर पड़िबो बैंक्स मान को ऊपर बुझ पारे द बैंक हैज टू बियर ऑल द बर्डन बैंक हैज टू शेयर ऑल द रिस्क फाइन ओके सो कॉर्पोरेट बॉन्ड वर्क्स लाइक एन व्हाट IOU व्हाट डू यू मीन बाय IOU मनी बुझ पारले IOU मनी कॉर्पोरेट बॉन्ड वर्क्स लाइक एन IOU कॉर्पोरेट बॉन्ड्स इज बेसिकली कंपनीज रिटर्न प्रॉमिस IOU मनी बुझ पारले आपण जदि बैंक बॉन्ड कंपनी बॉन्ड किनुचंती तमन कोन आपण लोन रे पैसा दोचंती दैट मींस व्हाट that means the company is borrowing from you fine IOU money that is why bonds are often called as what IOUs that visible IOU so corporate bond market is important why because it mobilizes long term capital reduce dependence on banks diversify funding sources and improve infrastructure financing support economic growth status of corporate bond market in India the status please see the status of corporate bond market in India's corporate bond market size is around how much 15 to 16% of GDP compared very less compared to developed countries like South Korea kete 79% Malaysia 54% China kete 38% fine okay bond market is very important so India still depends heavily on bank based financing which parle bond market to develop hai nahi so India still is heavily dependent upon bank based financing whereas advanced economies have deeper bond markets what problems the bond market could face during financial stress okay because suppose investors panic during crisis जदि क्राइसिस आसला बुझ पारले ताले बॉन्ड मार्केट टा कोन हो जाय पारे बॉन्ड मार्केट टा क्रैश हो जाय पारे बुझ पारले काइना बुझ पारे जदि क्राइसिस आसला बॉन्ड मार्केट टा कोन क्रैश हो जाय पारे काइना सपोज जदि क्राइसिस आसला ताले कंपनी माने लॉस करिवे बुझ पारले जदि कंपनी माने लॉस करचंती ता माने कोन हुए तो पॉसिबिलिटी अछि जे से माने कोन इंटरेस्ट एज वेल एज प्रिंसिपल हुए तो फेरे न पारंती बुझ पारले जदि कंपनी जदि लॉस इनकर कर दला हेवी लॉस ताले पॉसिबिलिटी अछि कोन कंपनी आपन को इंटरेस्ट भी न दे पारे हुए तो पॉसिबिलिटी अछि डिफॉल्ट भी टोटल डिफॉल्ट भी कर दे पारे तो से टाइम रे लोक मान कोन करिवे लोक मान जो हाथ जो बॉन्ड धरचंदी सेटा कोन करिवे चाहिबे सेल कर दो संग संग ताल सप्लाई बढ़िबो बॉन्ड रो सप्लाई बढ़ला माने बॉन्ड मार्केट रंग हो प्राइस फॉल करिवो बॉन्ड रो बॉन्ड मार्केट कोन होइबो बॉन्ड मार्केट विल क्रैश बुझ पारले दैट इज द प्रॉब्लम এটা দেখুন প্লিজ কেপ টাউন কনভেনশন এন্ড এয়ারক্রাফট প্রোটোকল কেপ টাউন কনভেনশন এন্ড এয়ারক্রাফট প্রোটোকল কেপ টাউন কনভেনশন দেখুন the Cape Town Convention is an international agreement the Cape Town Convention is an international agreement that creates legal rules for financing and leasing high value mobile equipment such as aircraft problem कोन देखो एटा अडॉप्ट केबे हेतला 2001 रे अडॉप्टेड हेतला बुझ पारले
It is also called what? Convention on International Interest in Mobile Equipment. Very, very important. Hello. Because India has recently been included in the Cape Town Convention. Okay. It was adopted in 2001. It is also called Convention on International Interest in Mobile Equipment. Problem कौन होता है देखो अपन जानते हैं एयरक्राफ्ट्स आर एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव. यस गोटे एयरक्राफ्ट केते गोटे एयरक्राफ्ट पाखापाखि 4000 कोटी 5000 कोटी बुझ पाछन 500 क्रोर्स बुझ पाले जो कमर्शियल एयरप्लेन्स अछन बुझ पाले प्राइवेट जेट आपको 100 क्रोर्स 500 क्रोर्स मिल जिवो बट कमर्शियल जो कमर्शियल प्लेन्स अछन पाखापाखि 5000 6000 क्रोर हाईली एक्सपेंसिव एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव. देखो एयरक्राफ्ट्स आर एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव. सपोज an airline wants to buy 100 aircraft 100 aircraft किनिया को चाहूची गोटे एयरलाइन. ओके कॉस्ट मे बी 80,000 crore बुझ पारले. मोस्ट एयरलाइंस कैन नॉट पे फुल अमाउंट इमीडिएटली 80,000 कोटी कोठी आनिबे गोटे प्राइवेट एयरलाइन कंपनी. ओके सो सेतमे कोन हुए एयरलाइंस कोन करंती पैसा बोरो करथांती बुझ पारले किंबा एयरक्राफ्ट को लीज रे आनी थांती बुझ पारले एंड टेक लोन फ्रॉम अदर ग्लोबल लेंडर्स. फाइन. प्रॉब्लम देखो प्रॉब्लम व्हाट वाज द प्रॉब्लम बिफोर केप टाउन कन्वेंशन. प्रॉब्लम कौन होता बिफोर केप टाउन कन्वेंशन. सपोज जो फॉरेन कंपनी गोटे इंडियन कंपनी को सपोज गोटे इंडियन एयरलाइन को सपोज एयरक्राफ्ट लीज रे देइथला बुझ पारले. नाउ लेट्स से इंडियन एयरलाइन स्टॉप्स पेइंग बुझ पारले कोन करला इंडियन एयरक्राफ्ट वर्तमान इंडियन एयरलाइन टा वर्तमान पेमेंट बंद कर देला वो तार टिके लॉस होतो पेमेंट बंद कर देला बुझ पारले. लीज देइथला किए गोटे फॉरेन लेंडर फॉरेन लीज देइथला फॉरेन कंपनी. क्वेश्चन होची अच्छा जदि पेमेंट बंद कर देला इंडियन एयरलाइन तो क्वेश्चन होची जो फॉरेन कंपनी लीज रे देइथला एयरप्लेन्स को सी तापर वर्तमान कोन करन एक्वायर करना माने एयरप्लेन्स को. फाइन. प्रॉब्लम होची एक्वायर करिवो किमती गोटे अमेरिकन कंपनी लीज रे देइची इंडियन एयरलाइंस को सेटा होची अमेरिका एटा होची इंडिया सेटी लॉस डिफरेंट एटी लॉ डिफरेंट बुझ पारले. देखो अर्लियर लीगल प्रोसीजर्स डिफर्ड अक्रॉस कंट्रीज बुझ पारले. लीगल प्रोसीजर अमेरिका रे डिफरेंट इंडिया रे डिफरेंट अछि बुझ पारले. रिकवरी was slow बुझ पारले. कोर्ट टुक्स लॉन्ग टाइम कोर्ट सेमिति भी इंडियन केस पड़िला माने कोन 510 वर्ष लागि जिवो बुझ पारले. लेंडर प्रोटेक्शन वाज वीक जे लीज रे दोथला किमा जे जो फॉरेन बैंक लोन दोथला बुझ पारले एयरलाइंस को. सो लेंडर्स फेस्ड व्हाट ह्यूज रिस्क. जदि गोटे इंडियन एयरलाइन कंपनी लीज रे नेथला एयरप्लेन्स को पेमेंट बदई पारलानी ताले कोन से फॉरेन कंपनी एबे एक्वायर करना कथा बुझ पारले किंतु सिम डायरेक्टली एक्वायर करि परिबन तापर आसिया पड़िबो इंडिया को बुझ पारले कोर्ट रे केस करिया पड़िबो कोर्ट देखिया पड़िबो जे एमिति लोन लीज रे नेथिले तापर पेमेंट बंद हला बुझ पारले गोटे कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर अछि व्हिच माइट टेक 5 to 10 years. अच्छा 5 to 10 years जो एयरलाइंस लीज रे दिया हेतला से एयरलाइंस कोन पड़ी रहबो बुझ पारले एंड विद इन नेक्स्ट 10 years व्हाट विल हैपन टू द वैल्यू ऑफ द एयरलाइंस will drastically fall. ता लॉस कार होची एटा इठी लेंडर्स मानकर लॉस होची बुझ पारले. सेति पई कोन होतला सेति पई जेतेबेले जे लेंडर्स माने बिफोर केप टाउन कन्वेंशन लेंडर्स माने जेतेबेले लीज रे दोथले किबा गोटे फॉरेन बैंक लोन दोथला एयरलाइंस को किनिबा पई एयरप्लेन्स बुझ पारले हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन दिया होतला. हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट जदि लीज रे दोथले रेंट भी बहुत हाई थिला बुझ पारले. रेंट भी बहुत हाई थिला. तो होतला कोन देखंतु because of this aircraft financing became expensive, interest rates increased, leasing cost increased. बुझ पाछन तो हला कोन देखन suppose a US leasing company gives aircraft worth $100 million to airline. If airline defaults, leasing company wants aircraft back. Yes. Now but if legal recovery takes 5 to 10 years, lenders suffers what? Huge losses. So lenders become reluctant to finance airlines. Okay. जदि भी फाइनेंस करथले lenders high rate of interest charge करथले बुझ पारले. What Cape Town Convention does? Cape Town Convention कोन करूची देखंतु the convention creates what? Internationally recognized legal protection for lenders and lessors. बुझ पारले. legal protection provide करूची काहा को lenders मानन को आउ जो माने लीज रे देइथांती बुझ पारले एयरप्लेन्स को. फाइन. हाँ केमिति लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करछि. इट गिव्स लेंडर्स फास्टर repossession rights, legal certainty, protection over aircraft assets. The convention aims to improve what? Aircraft financing, reduce lending risk, reduced borrowing cost, encourage global leasing and investment. Actually Cape Town Convention कोन करूछि Cape Town Convention एबे सपोज गोटे लीजिंग कंपनी देइथला इंडियन एयरलाइंस को लोन माने एयरक्राफ्ट लीज रे देइथला वर्तमान रेंट देई परन इंडियन एयरलाइंस बुझ पारले.
ता आगुरु कोन होतला से आसीबो लीजिंग कंपनी आसीबो जो कंपनी लीज रे देतला इंडिया को आसीबो कोर्ट रे केस फाइल करिवो कोर्ट से केस चलिवो जते वर्ष लागिवो बुझ परले तापर से नेकी जीवो ता एयरक्राफ्ट आफ्टर केप टाउन कन्वेंशन कोन हैला लेंडर मानकर राइट्स को लीगली रिकॉग्नाइज करा गला इंटरनेशनली लेंडर्स मानकर राइट को बुझ परले लीगली रिकॉग्नाइज करा गला इंटरनेशनली बुझ परले इंडिया भितरे बुझ परले लेंडर रो कौन से प्रकार लीगल राइट नथिला बुझ परले इंडिया भितरे बुझ परले अमेरिका रे बुझ परले तार लीगल राइट थिला किंतु जे लीजर नै थिला एयरप्लेन्स तार लीगल राइट अमेरिका रे किछि नै बुझ परले किंतु केप टाउन कन्वेंशन रे कोन हला जो लेंडर माने थिले सेमानकर राइट्स को इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज करा गला ता माने जो जो कंट्री केप टाउन कन्वेंशन रो पार्ट हबो बुझ परले सी रिकॉग्नाइज करिवो से कंट्री दैट कंट्री विल रिकॉग्नाइज दैट the lender बुझ परले lender has legal right over the possession of airplanes in case the leasing in case the airlines fail to repay the money बुझ परलम तने एबे कोन एबे आ कोर्ट को जिबा दरकार नाही बुझ परलम सीधा आसला देई परला नहीं इन्फॉर्म कर दबो बुझ परले इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म करी कि नहीं कि पळेबो तार कोन एयरक्राफ्ट्स बुझ परले दिस इज योर व्हाट केप टाउन कन्वेंशन दिस इज सिंपली योर केप टाउन कन्वेंशन ओके ओके नेक्स्ट इज योर दिस इज वेरी इंपोर्टेंट हेलो एटा बहुत इंपोर्टेंट देखंतु एटा टिके इंपोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंडिया यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हेलो इंडिया यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट देखंतु इंडिया यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इज ऑफिशियली कॉल्ड एज व्हाट bilateral trade is officially called as bilateral trade and investment agreement is officially called as bilateral trade and investment agreement that is BTIA fine it is a proposed free trade agreement between India and the European Union free trade agreement मान कौन बुझुछन्ते free trade agreement माने नुहे जे यूरोप रो गुड्स इंडिया को फ्री ऑफ कॉस्ट आसीबो इंडिया रो गुड्स यूरोप को फ्री ऑफ कॉस्ट जीवो नो जो बैरियर्स अछि बैरियर इन टर्म्स ऑफ व्हाट टैरिफ बैरियर्स जो इंडियन गुड्स यदि यूरोपियन यूनियन को एंटर होची तो यूरोपियन यूनियन जो कस्टम्स ड्यूटी लेवी करतला बुझ पाले इंपोर्ट ड्यूटी लेवी करतला से इंपोर्ट ड्यूटी को कोन कर दिया जबो हटे दिया जबो माने जीरो हो जबो बुझ पाले इंपोर्ट ड्यूटी आ यूरोप रो जो गुड्स गुडा को इंडिया को आसुची ता ऊपर इंडिया जो कस्टम ड्यूटी लेवी करतला इंपोर्ट ड्यूटी से इंपोर्ट ड्यूटी कोन हबो हटे दिया जबो बुझ पाले तमन कोन तमने विदाउट एनी टैरिफ्स both countries are trading with each other fine eta hochi man free trade agreement so it is a proposed free trade agreement between India and the European Union fine okay negotiations kebe start heitila negotiation start heita 2007 रे बुझ परले conclude kebe हला 2026 रे बुझ परले negotiation started in 2007 and the negotiations actually concluded in 2026 what is a free trade agreement the free trade agreement means agreement between countries to reduce or remove what trade barriers such as tariffs and custom duty बुझ पारल okay the purpose what is the purpose is to increase trade promote trade between countries improve market access encourage investment make exports what cheaper fine देखो for example देखो तो suppose earlier European Union imposed 10% import duty so Indian products become expensive in Europe Indian products will become 10% expensive in Europe बुझ पारल after free trade agreement duty may become zero now Indian products will become 10% cheaper in the European Union market why देखो why India European Union free trade agreement is important why India European Union free trade agreement is important देखो why because the European Union is India's largest goods trading partner European Union is the India's largest goods trading partner trade value kete trade value is around 135 billion US dollars बुझ परले तानी इंडिया और यूरोपियन यूनियन मिसिकी पाखा पाखी 135 बिलियन डॉलर्स रो ट्रेड करंती माने बहुत एक्सपोर्ट इंपोर्ट मिसेकी बुझ परले 135 बिलियन डॉलर्स रो ट्रेड करंती the data as per 2023-24 data fine and European Union is also India's 22nd free trade agreement partner बुझ पारलम free trade agreement partner ताने या पूर्वरु इंडिया डिफरेंट कंट्रीज हो किबा डिफरेंट ग्रुप ऑफ कंट्रीज मानको सहित
already 21टा free trade agreement sign करी सारछि बुझ पारलम. So this is the 22nd India's 22nd free trade agreement. Why this important? Because this is considered important because European Union, this is considered one of India's biggest FTA because European Union is a huge market. It is a union of how many countries? European Union is a union of how many countries? So it is considered as a huge market for India. It is a union of 27 countries. So it is considered as a what? Huge market for India. So European Union is India's largest goods trading partner covering 27 European countries, which gives Indian exporter what? Better access to market, and the agreement is expected to reduce tariffs on a very large share of trade. Large share of trade. ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ जो पॉइंट आपनको बुझिବାକୁ पड़िबो कवरेज कोन व्हाट इज मीन बाय कवरेज इज देखନ୍ତୁ बुझिବାକୁ पड़िबो प्लीज अंडरस्टैंड हेलो प्रेफरेंशियल एक्सेस preference coverage is what is the coverage of free trade agreement between India and European Union. Coverage is preferential access in 97% of European Union tariff lines covering 99.5% of trade value. देखो दिया माने कौन एते की बुझी पारले जो this free trade agreement will provide India a huge market बुझी पारले. Okay, also it will provide European Union a huge market. Indian market is also a very big market. Fine. तो दी जन को यूरोपियन यूनियन को गोटे बड़ मार्केट मिलिबो, इंडिया को भी गोटे बड़ मार्केट मिलिबो. बुझ पारले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कला माने एबे एटा हम बुझिया पड़िबो जे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट रो कवरेज कोन. Preferential access in approximately 97% of European Union tariff lines covering 99.5% of trade value. Now what do you mean by this? देखो what is tariff माने कौन? Tariff means import tax or a custom duty imposed on imported goods. बुझ पारलम? Okay. एबे देखो tariff line माने कौन? What do you mean by tariff line? European Union, देखो tariff line. Please see what is tariff line. European Union does not impose one single tariff on all products. बुझ पारले? There are different categories of products. European Union does not impose one single tariff on all products. Different products have different tariff categories. बुझ पारछन्ती? Different product category, different tariff categories. Each product category is called what? Tariff line. For example, European Union may separately classify as certs go to different type of product. Cert is different to shoes is different to cars, medicines and chemicals. All are different products. And certs may have different tariff line. बुझ पारले? Cert ऊपर different tariff लगौथो European Union. Cars, shoes ऊपर different tariff लगौथो. Cars ऊपर different tariffs. Medicine ऊपर different, chemicals ऊपर different. बुझ पारले? Each product category have some different tariff line. बुझ पारले? तो tariff separate tariff line, separate. बुझ पारछन्ती? So every product category has its own tariff rule and duty trade. बुझ पारले? Now what is 97% tariff line? What do you mean by this? Suppose European Union has 100 total product categories. 100 total product categories. Out of these, European Union agrees to reduce or remove tariffs on 97 product categories. This means 97% tariff lines are liberalized. एमाने बुझ पारलम? एट जो लिखा हितला ना कवरेज कौन लिखा हितला? Coverage was preferential access in approximately 97% of European Union tariff lines. बुझ पारले? ता माने होची है जदि यूरोपियन यूनियन अंडर रे सपोज 100टा गुड्स रो कैटेगरी अछि बुझ पा. सपोज यूरोपियन यूनियन हैज 100 टोटल प्रोडक्ट कैटेगरीज बुझ पारलम. आउट ऑफ दीज यूरोपियन यूनियन एग्रीज टू रिड्यूस और रिमूव टैरिफ्स ऑन 97 product categories. This means 97% tariff lines are liberalized. बुझ पारले? Example, what does this mean practically? Example देखो तो most Indian goods ता माने practically ता माने कौन? Most Indian goods exported to Europe. Most Indian goods बुझ पारले exported to Europe will now face what?
lower customs duty or zero customs duty. So Indian exporters become cheaper and more competitive in European Union. Example देखो, suppose एटा होची 10 products, बुझ पारले 10 टा products अछि, 10 टा products ऊपर different tariff lines, बुझ पारले different tariff लागुची, each product category has different tariff line. Fine. European Union कौन करला? European Union removes tariffs on 9 out of 10 categories. तार माने 90% of tariff lines are liberalized. बुझ पारले? ए माने कौन? Fine. So and what is this 99.5% trade value? What is this 99.5% trade value? तार माने कौन? जदि European Union 97% tariff lines को liberalize कर दोउची, बुझ पारले? तार माने से 97% tariff lines भितरे जेतिकी goods आसुची, बुझ पारले? से goods रो value केते? से goods से goods गुडा को, those goods constitute 99.5% of the trade value. तार माने almost India जेतिकी goods export करूची, बुझ पारले? जेतिकी value रो goods export करूची, जेतिकी value रो, बुझ पारले? Almost 99% of trade value is covered within the 97% tariff line. एतिकी बुझ पारले ना? बुझ पारले ना? Fine. तार माने देखो please see here example देखो. This is different, देखो this is different from tariff lines. Okay, see here. That means it means almost entire actual trade value between India and European Union gets covered. For example, suppose India exports European Union. India exports to European Union textiles, medicines, leather, jewelry and some minor product. केते total export value केते हे गला? 955 crore. बुझ पारलम? ए सब प्रोडक्ट्स ऊपर कोन करला? सब प्रोडक्ट्स ऊपर डिफरेंट टैरिफ लाइंस लागुतला, यूरोपियन लागुतला, ए वर्तमान लिबरलाइज कर देला. बुझ पारले? प्रोडक्ट वैल्यू केते? टोटल ट्रेड वैल्यू केते? 955 crore. Now suppose FTA, free trade agreement, liberalizes all major products except very tiny category worth केते? 5 crore. केवल ए प्रोडक्ट को छाड़ देले, बाकी सब प्रोडक्ट्स ऊपर कोन कर देला? टैरिफ लाइंस को लिबरलाइज कर देला. ता माने then almost entire trade value becomes covered. Yes, then entire trade value becomes covered. That is why they say 99.5% trade value covered. बुझ पारलम? 99.5% trade value covered. बुझ पारले माने? Now let's come to sectoral impact. Sectoral impact देखो तो कौन आवा? Different sectors will benefit differently. How come? Labor intensive sectors. These sectors employ large number of workers. Yes, labor intensive sectors. That is textiles sector, leather sector, gems, jewelry. So these sectors will receive immediate what? Immediate zero duty access to European Union market. Fine. Why this is important for India? India has comparative advantage in labor intensive manufacturing. Compared to machinery, compared to machines, labor cost in India is quite cheap. So India has comparative advantage in labor intensive manufacturing, low cost skilled labor. So sectors like textile, leather, gems can be expand significantly. Fine. So this may increase what? Exports, increase employment, foreign exchange earnings. Sensitive sectors. The sensitive sectors कौन? Some sectors are considered what? Politically and economically sensitive. बुझ पाचुन? For example, dairy sector, cereals, poultry. बुझ पारले? Some fruits. Countries fear sudden import competition. Domestic farmer. Some countries fear due to sudden import competition, domestic farmers might lose. So liberalization will happen gradually. So liberalization happens gradually in phases with respect to sensitive sectors. बुझ पारले? Okay. For example, suppose European Union dairy products become extremely cheap in India. Then, if India immediately removes all tariffs, Indian dairy farmers may suffer. Okay. So, what India will do is, so tariffs are reduced slowly over transition period. This is called what? Phased liberalization. Okay. Phased liberalization is possible in case of which products? Sensitive sectors is okay. Now, product specific rule. Product specific rule. This is also quite important. Product specific rule. FTA contains rules regarding origin and eligibility. Statement on origin, self-certification. Exporter itself can certify goods are genuinely originating from India. This reduces paperwork, delays, certification burden. For example, suppose Indian exporters ships leather products to Germany. Hello? Is leather ta India re hi originate hoichi boli certificate ki issue kari paribo. Kaina European Union को सर्टिफिकेट दरकार जे ए जो लेदर प्रोडक्ट इंडिया रे ही ओरिजिनेट होइछे.
कहीं इंडिया यूरोपियन यूनियन क्या सहित फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर इंडिया सहित बुझिपारे तामाने जो गुड्स गुड़ाक इंडिया रु ओरिजिनेट होउची केवल सेही गुड्स गुड़ाक ही फ्री ऑफ ड्यूटी एंटर करि परिबो यूरोपियन यूनियन मार्केट को तो सेति पय गोटे सर्टिफिकेट दरकार बुझिपारले से सर्टिफिकेट इशू की करिवो इंडिया जो लोक एक्सपोर्ट करूची बुझिपारले से ही इशू करि परिबो सर्टिफिकेट ता फाइन व्हाई द रूल्स ऑफ व्हाई द ओरिजिन सर्टिफिकेट्स आर इंपोर्टेंट कोन पय ओरिजिन सर्टिफिकेट कोन पय इंपोर्टेंट देखो हुए कौन एक्चुअली इंडिया यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करले बुझिपारले एबे देखो हुए कौन तामाने इंडियन गुड्स विदाउट एनी ड्यूटी एंटर करि परिबो यूरोपियन यूनियन को यूरोपियन यूनियन गुड्स विदाउट एनी ड्यूटी एंटर करि परिबो इंडियन मार्केट को बुझिपारले किंतु कौन हुए सपोज चाइनीज गुड्स एंटर करला इंडियन मार्केट को बुझिपारले चाइनीज गुड्स एंटर करला इंडियन मार्केट को आ इंडियन मार्केट रो पुनी री एक्सपोर्ट हला कोठ को यूरोपियन यूनियन को तले ओरिजिन ता कोठ हिची गुड्र चाइना रे बुझिपारले तामाने एबे चाइना बेनिफिट पाइबो ना कहना चाइनीज गुड्स वर्तमान कौन ड्यूटी फ्री एंटर हो को मार्केट रे यूरोपियन यूनियन मार्केट से रूल्स ऑफ ओरिजिन सर्टिफिकेट वेरी वेरी इंपोर्टेंट हेलो सो व्हाई रूल्स ऑफ ओरिजिन आर इंपोर्टेंट बिकॉज विदाउट रूल्स अदर कंट्रीज मे मिसयूज व्हाट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बुझिपारले एग्जांपल चाइनीज प्रोडक्ट मे एंटर इंडिया देन री एक्सपोर्टेड फॉल्सली एज इंडियन टू यूरोपियन यूनियन फाइन सो रूल्स एंश्योर ओनली जेन्युइन इंडियन प्रोडक्ट्स व्हाट रिसीव्स benefits hello under FTA देखो under FTA services and mobility is also allowed ता माने FTA is not only about goods it also covers what services trade it also covers what services trade services include IT services consulting education research finance professional services बुझ पारलम एग्जांपल ला फॉर एग्जांपल ओके सर्विसेज भी वर्तमान पण एक्सपोर्ट करि परिबा आपण मोबिलिटी बेनिफिट्स व्हाट यू मोबिलिटी बेनिफिट्स देखो तुम FTA also improves mobility of what movement of Indian professionals employees independent service providers business entities बुझ पाछन ओके सो देखो एटा प्लीज नेक्स्ट यूरोपियन यूनियन एंटी कोएर्सन इंस्ट्रूमेंट देखो व्हाट यू मीन बाय दिस the anti coercion instrument is a legal tool created by the European Union to protect itself from economic pressure or threats by other countries एबे जो अमेरिका वर्तमान जो सिस्टम अमेरिका वर्तमान जहां करूची बुझ पारले आम पॉलिसी प्लीज लिसन टू अस बुझ पारले लिसन टू आवर प्लीज फ्रेम योर पॉलिसीज अकॉर्डिंग टू आवर विश बुझ पारले आमे जेमिति डिक्टेट करिवु आपण निज कंट्री रो पॉलिसी को सेही वेरे फ्रेम करंतु नहले आमे कोन करिवु तारीफ लगे दो बुझ पारले दिस इज व्हाट इट्स अ काइंड ऑफ थ्रेट इट्स अ काइंड ऑफ इकोनॉमिक थ्रेट बुझ पारले is given by some other countries fine तो आपको कौन कहा जाए तामाने anti coercion instrument is a legal tool created by the European Union to protect itself from economic pressure or threats by other countries बुझ पाछन ये जो anti coercion instrument को कौन कहा जाए it is also called as what bazooka बुझ पारले because it is considered a powerful economic weapon it is considered as a powerful economic weapon what is the problem देखो what is the problem is sometimes powerful countries try to pressure another country economically okay they may use tariffs okay they may use trade restrictions hello investment restrictions fine they may use sanctions जिन रशिया पर लागितला बुझ पाले इंडिया पर tariffs लागितला चाइना पर भी tariffs लागितला बुझ पालो market access बंद कर दबा बुझ पालो तापर threat to force another country to change political or policy decisions this is called what economic coercion this is called economic coercion so why European Union created what anti coercion instrument why because European Union wanted a system to say if another country economically threatens European Union members then Europe can also retaliate collectively fine so Europe created what anti coercion instrument okay main purpose of anti coercion instrument is what it aims to deter economic bullying बुझ पर लिखा especially by America economic bullying protect European policy independence respond to coercive trade measures and safeguard Europe's strategic interest okay this was ये जो कहीं की वर्तमान इंट्रोड्यूस करला दिस बाजुका और एंटी कोर्सन एग्रीमेंट देखो रिसेंटली कौन कहितला रिसेंटली फ्रेंच प्रेसिडेंट सजेस्टेड using what anti coercion instrument against US tariff pressure linked to Greenland related tensions बुझ पारनु meaning some European leaders felt US economic pressure required strong European Union response okay aka Kimberley process what do you mean by Kimberley process very important देखो तो Kimberley process
Kimberley process or KP अपन कहि परिबे Kimberley process multilateral trade regime to prevent the flow of conflict diamonds or blood diamonds देखो तो कौन हुए बुझंतु the Kimberley process is an international system created to stop the trade of conflict diamonds जो conflict diamonds गुडा जो conflict diamonds रो trade होउची countries मानन को परस्पर भितरे बुझ पारलम to stop the trade of conflict diamonds now what do you mean by conflict diamonds देखो अच्छा ये जो Kimberley process establish के बेतला 2003 रे the certification system under it called as Kimberley process certification scheme the certification system under it is called Kimberley process certification scheme it operates under the United Nations Security Council support or mandate बुझ पारले Kimberley process okay केबे क्रिएट हेतला 2003 रे क्रिएट हेतला कोन पे क्रिएट हेतला टू स्टॉप द ट्रेड इन कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स ओके अच्छा सिस्टम सर्टिफिकेशन सिस्टम प्रोवाइड सर्टिफिकेशन सिस्टम इज अंडर what is called as what Kimberley process certification scheme okay and under what it operates under United Nations Security Council okay what was the problem देखो what was the problem आपण जानि थिबे केते अफ्रीकन कंट्रीज रे सिविल वॉर चलची बहुत अफ्रीकन कंट्रीज रे कोन सिविल वॉर चलची बुझ परले सिविल वॉर ता माने गोटे पटे अछि गवर्नमेंट गोटे पटे अछि कोन रेबेल ग्रुप्स बुझ परले जो कंट्री रे सिविल वॉर चलची से कंट्री रे गोटे पटे अछि कोन गवर्नमेंट अछि आ गोटे पटे कोन अछि रेबेल ग्रुप्स बुझ परले देखो रेबेल ग्रुप्स these rebel groups they need what guns government सहित लड़िबा पई रेबेल ग्रुप्स कोन दरकार गन्स दरकार ammunition दरकार बुझि परले तांको दरकार मनी they need money to continue fighting against the government हला तो करूतले कोन किंतु गवर्नमेंट पाखरे गोटे प्रॉपर इकोनॉमी अछि बुझि परले गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन चलौछि they have the proper economy रेबेल ग्रुप्स रो किछ गोटे इकोनॉमी अछि कि नो बुझ परले बट रेबेल ग्रुप्स डिड नॉट हैव प्रॉपर इकोनॉमी फाइन तो सेति से कोन करथले सेति पई जदि तांक पाखरे गोटे प्रॉपर इकोनॉमी जदि नाही दे विल नॉट बी एबल टू कलेक्ट टैक्सेस बुझ परले दे मे नॉट बी एबल टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम द पीपल रन इंडस्ट्रीज अर्न लीगल रेवेन्यू जदि इकोनॉमी नाही ताले टैक्स कलेक्ट करि परिबेनी लीगली से माने कोनसी प्रकार रेवेन्यू अर्न करि परिबे नाही सेति पई रेबेल ग्रुप्स कोन करथले रेबेल ग्रुप्स कोन करथले प्रथमे गोटे डायमंड माइन बुझ परले डायमंड माइन खोजुतले से डायमंड माइन को कब्जा करतले बुझ परले डायमंड कोन करतले कब्जा करतले देखो सो दे सर्च फॉर समथिंग वेरी वैल्यूएबल दैट कुड बी सोल्ड इजीली इन द मार्केट जेतु प्रॉपर इकोनॉमी नहीं इकोनॉमी को यूज करके से टैक्सेस कलेक्ट करि परिबेनी बिकॉज़ दे आर रियल रेबेल ग्रुप्स बुझ परले सेति में they started for something very valuable that could be sold easily in the market the valuable thing was diamonds okay कोन देखो suppose rebel group captures a diamond mining area गोटे diamond mining area capture करनला एबे now what they will do now they will start illegally they will illegally mine diamonds हला illegally mine diamonds and sell the rough diamonds polished diamonds नुहे डायमंड माइन हला बुझ परले डायमंड माइन कैप्चर करले डायमंड को एक्सट्रैक्ट करले बुझ परले दे विल सेल द रफ डायमंड्स सीक्रेटली इन द इंटरनेशनल मार्केट बुझ परले जहां पैसा आसला से पैसा साहाय्य रो समान कोन करिवे गन्स किनिवे एमुनिशंस किनिवे बुझ परले देखो कोन होतला व्हाई दिस डायमंड्स बिकम डेंजरस व्हाई normally diamonds are what luxury products fine but here diamond money was used to fund violence and civil wars बुझ परले but here the diamond money rebel group से diamond को इंटरनेशनल मार्केट में बिक्री करी जहां भी पैसा आनुतले बुझ परले से पैसा को यूज करातला कोन पई to declare war against the governments and civilians बुझ परले सेति पे कोन कहै छै conflict diamond किबा blood diamond कोन कहै छै blood diamond that is why such diamonds were called as what conflict diamonds or blood diamonds बुझ परले so why world become concerned देखो the world realized when they buy diamonds माने जतले दुनिया रे लोक माने डायमंड्स किनु छंती तांको पैसाटा एक्चुअली यूज होची कोन पई वायलेंस पई बुझ परले कोन पई यूज होची वायलेंस पई स्पेशली इन अफ्रीका हला साधारण जानि जो हेतला कोन गोटे दिन रे 8 लाख लोक मार देथिले
नाडा भूलीगली बोधे रवांडा ହେଇଥିଲା ବୋଧେ ବୁଝିପାରିଲେ ଗୋଟେ ଦିନ 8 ଲକ୍ଷ ମରୁଥିଲେ ସୋ वर्ल्ड रियलाइज दैट जो डायमंड्स आम किणुचु आफ्रिकार जो डायमंड गुड़ाक आसूची बुझिपारे जो डायमंड्स आम किणुचु एक्चुअली से पैसा को यूज करके कौन वायलेंस होती बुझिपारे आ कि कहते रिबेल ग्रुप्स द वर्ल्ड वाज कंसर्न दैट द वर्ल्ड रियलाइज्ड व्हेन दे बाय डायमंड्स some money may indirectly support what civil wars killing children soldiers human right abuses बुझिपारे so international pressure increased to stop the trade of conflict diamonds or blood diamonds बुझिपारे तामन कोन ले देखन so the global system was needed to ensure diamonds entering international market are conflict free hello so the global system was needed to ensure diamonds entering international market are conflict free thus process was what Kimberley process was created Kimberley process कोन देखन KP aims to stop trade in conflict diamonds ensure ethical diamond trade prevent financing of armed conflicts improve transparency in diamond trade केमिति हुए देखंतु how Kimberley process works देखंतु countries participating in Kimberley process agree rough diamonds can be traded only with official certification बुझि परले जेतबेले गोटे कंट्री रो लोक माने बुझि परले एबे ज्वेलरी इंडियन रे जो ज्वेलरीज माने अछंती से माने मार्केट रो कोन रफ डायमंड्स किनिबे किणी की ताको पॉलिश करिवे बुझि परले एबे जेतबेले से माने रफ डायमंड्स किनिबे बुझि परले जो अफ्रीकन कंट्री तो से माने किनिबे रफ डायमंड्स से अफ्रीकन कंट्री गोटे सर्टिफिकेट इश्यू करबा दरकार से सर्टिफिकेट कोन Kimberley process certificate बुझि परले सपोज इंडिया सपोज जाम्बिया रो कोनची बुझि परले डायमंड्स कोनची बुझि परले रॉ डायमंड्स ताले सेटिकार गवर्नमेंट गोटे Kimberley process certificate इश्यू करिवो बुझि परले से सर्टिफिकेट कोन हो सर्टिफिकेट होची प्रमाण जे these diamonds were actually not illegally mined by the rebel groups बुझि परले these diamonds were not illegally mined by the rebel groups बुझि परले ता माने जदी सेगुडा को rebel groups द्वारा माइन हेनी ता माने जो पैसाटा इंडिया पे करिवो सेटा काहा को जीवो गवर्नमेंट को जीवो rebel groups को जीवोनी बुझि परछंती बुझि परले एबे rebel group जदी बिकिया को चाहिबे आ तांको सर्टिफिकेट सेमान तो इश्यू करि परियन सर्टिफिकेट बुझि परले ताले सेमान को प्रोडक्ट गुडा को बिक्री होबो ना इंटर मार्केट नो बुझि परले एबे भी किंतु रफ डायमंड्स रो ट्रेड होउची थ्रू व्हाट थ्रू अंडरग्राउंड चैनल्स बुझि परले थ्रू अंडरग्राउंड चैनल्स थ्रू होउची आगुरु किंतु होतला ओपन मार्केट बुझि परले एबे किंतु होउची अंडरग्राउंड चैनल्स थ्रू होउची बुझि परले बट द वॉल्यूम हैज ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड ओवर द इयर्स ओके दिस इज कॉल्ड योर ब्लड डायमंड ओके हेलो एबे इंडिया सपोज इंडिया जदि रफ डायमंड्स को आउ को कंट्री को जदि एक्सपोर्ट करूची बुझि परले तले इंडिया केस रे किए सर्टिफिकेट इश्यू करिवो जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल एक्ट्स एज द नोडल एजेंसी एंड कस्टोडियन ऑफ केपी सर्टिफिकेट्स फाइन ओके ओके बाकी सब अच्छी फाइन एटा भी गोटे इंपोर्टेंट infrastructure status to large ships context kono ministry of finance approved inclusion of large ships in the infrastructure harmonized master list to promote the maritime sector ya mane kon dekhantu India recently gave infrastructure status to large ships जेमिति रोड को कौन मिली इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस मिली डैम्स को कौन इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस मिली ब्रिज को कौन इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस मिली सेमिति लार्ज शिप्स को भी इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस मिलला बुझि परलो इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस मिलला माने कौन हुए देखंतो इंडिया रिसेंटली गेव इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस टू लार्ज शिप्स दिस मींस गवर्नमेंट नाउ ट्रीट्स लार्ज शिप्स एज इंपॉर्टेंट नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स similar to roads, railways, ports, airports. Bujipallam. India wants to strengthen maritime sector and shipping industry because most international trade happens through what? Sea trade. What was the problem? Problem kaun thila? Buying large ships is extremely expensive. Bujipallam. Without infrastructure status, banks may think this is risky and expensive. So banks conclude so loans become costly, repayment period shorter and financing was difficult and this slows shipping sector growth in India. What government did?
The government included large ships in the infrastructure harmonized master list. That means from now onwards, ships, large ships will be considered as what? Infrastructure. Hello? Meaning large ships now officially qualify as what? Infrastructure. Okay. What is HML? It is a master list. It's a master government list of sectors treated as what? Infrastructure. If something enters this list, it receives what? Easier financing. बुझिपारे banks ମାନଙ୍କୁ easier finance मिलिबो, low cost of interest loan मिलिबो, बुझिपारे tenure भी बहुत high रहबो, बुझिपारे long tenure रहबो, infrastructure benefits. So large ships were included under the transport and logistics sector because ships helps in transportation, cargo movement and trade logistics. Benefits of infrastructure listed as कौन? Easier infrastructure lending, external commercial borrowings, viability gap funding. What do you mean by viability gap funding? देखो viability gap funding माने कौन? Suppose government wants an aircraft in remote area. बुझ पाल aircraft construction cost कितने आସୁଛି? 5000 cost. बुझ पाल 5000 crores. Hello. Private company may refuse to build it. Why? कहीं ना बहुत कम passengers अच्छी सेती की profit से earn करी परिवन. बुझ पाल But government still wants the airport. ताले कौन करियो बुझ पाल because airport may improve connectivity, create jobs, promote tourism, help regional development. बुझ पाल So this is where viability gap comes. देखो तो एयरपोर्ट प्रोजेक्ट कॉस्ट केते 5000, प्राइवेट कंपनी केते से खर्च करा राजी अछि 3500. बुझ पारले गैप केते आसला 15,500 गैप. दिस इज द वायबल गैप. या कोन को गला वायबल गैप. ए वायबल गैप को फंडिंग की करिवो? गवर्नमेंट करिवो. बुझ पारले दिस इज कॉल्ड वायबल गैप फंडिंग. आउ जो सेक्टर को इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस मिलि छि बुझ पारले सेही केस रे वायबिलिटी गैप फंडिंग सरकार तरफ रु जल्दी मिले. बुझ पारले. ओके. And tax incentives also. Why India wants more Indian ships? देखो तो currently many ships carrying India's trade are foreign owned. बुझ पारले इंडिया जहां भी ships किनुची बुझ पारले बाहर ही किनुची. That means this creates foreign exchange outflow, dependence on foreign shipping companies. Okay, India wants more Indian owned ships, strong maritime capacity and strategic shipping control. Voluntary retention route. What do you mean by this voluntary retention route? Voluntary retention route. What do you mean by this? This means जो फॉरेन इन्वेस्टर्स माने इंडियन डेट मार्केट रे इन्वेस्ट करूछंती बुझ पारल जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म पे आज मु इन्वेस्ट करली 2 दिन पर विथड्रॉ कर दी पारी बुझ पारल ता माने डॉलर इनफ्लो होउची डॉलर आउटफ्लो होउची क्विकली इनफ्लो होउची क्विकली आउटफ्लो होउची बुझ पारल ता माने जदी डॉलर इनफ्लो कंटिन्यूअसली फ्लक्चुएट होउची बुझ पारल इनफ्लो होउची आउटफ्लो होउची देन व्हाट विल हैपन टू एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन एक्सचेंज रेट it will continuously fluctuate. If the exchange rate continuously fluctuate hela stable no rahila बुझ पारल it will affect what? It will affect foreign investment, it will affect import and export बुझ पारल and overall stability, overall exchange rate stability को affect करिवो. सेति पई गवर्नमेंट कोन कहउची जो इन्वेस्टर बुझ पारल जो इन्वेस्टर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट रूट देई की बुझ पारल माने एफपीआई रूट देई की इंडिया रे इन्वेस्ट करूची जदि सी वॉल्यूंटरली मोर देन 3 इयर्स पई जदि इंडिया रे इन्वेस्टमेंट को विथड्रॉ न करला बुझ पारल then we will relax the strict rules and regulations for those investors. कौन कहली बुझी पारले जो लोक फॉरेन इन्वेस्टर्स माने फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट रूट देई की इंडिया रे इन्वेस्ट करछंती से माने आज इन्वेस्ट करले काली विथड्रॉ करनबे बुझ पारले ता जो प्रॉब्लम कोन एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस होउची एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट होबा जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट एक्सपोर्ट इंपोर्ट एंड ओवरऑल एक्सचेंज रेट कोन मार्केट अनस्टेबल होउची सेते गवर्नमेंट कोन कहउची वॉल्यूंटरी रिटेंशन रूट जो फॉरेन इन्वेस्टर्स एफपीआई रूट दे की इंडिया रे इन्वेस्ट करछंती आ से माने वॉल्यूंटरली तांको इन्वेस्टमेंट को एटी इंडिया रे ही रखिबे फॉर मोर देन 3 इयर्स देन वी विल रिलैक्स सम स्ट्रिक्ट नॉर्म्स बुझ पारले फॉर दम किछि जे स्ट्रिक्ट नॉर्म्स जुडा थिला आगरु सेही इन्वेस्टर्स मानन पे हमें सेही रूल्स गुडा कोन कर दो रिलैक्स कर दो बुझ पारले. That is the overall meaning of voluntary retention scheme. Okay. Next, what is the next? Continuously operating reference station. This is बहुत easy अच्छी देखो. What is the problem? Problem कौन? कहीं government introduce कला continuously operating reference system, reference station. Why? देखो the government wants highly accurate maps.
precise land surveys बुझ पारले exact property boundaries बुझ पारले आपन को जगह जदी 2 इंच जने नै जो आपन छाडी कि बुझ पारले ना बुझ पारले so government wants what government wants highly accurate maps precise land surveys exact property boundaries बुझ पारले normal GPS जो normal GPS अछि global positioning system normal GPS is often inaccurate by several meters normal GPS is often inaccurate by several meters but modern projects need centimeter level accuracy modern projects need what centimeter level accuracy example देखो suppose a farmer boundary difference even by 1 meter may create what land dispute fine so on metro construction requires extremely precise positioning fine on or metro construction require what extremely precise positioning so India creates this continuously operating reference station okay now see this is a nationwide network of permanent high precision GPS stations these stations continuously send very accurate location signals okay यार accuracy केते course रो accuracy केते provides plus 3 minus centimeter accuracy which is extremely precise okay এটা যেটা মানে এটা okay now let's go to nudge 2.0 या माने कोन nudge 2.0 माने कोन अपन जानिथिबे जे many taxpayers forget hide or incorrectly report their foreign income बुझि पारले केते जो लोक मानकर किछि माने फॉरेन इनकम सोर्स अछि बुझि पारले फॉरेन कंट्रीज रे किछि एसेट्स अछि सेटु एसेट रे किछि आपण इनकम अर्न करचंती आपण माने होय तो जानि कि हो किबा अजाणत रे गवर्नमेंट को रिपोर्ट करंती नाही बुझि पारले which is punishable offense fine then many taxpayers कोन से forget माने भूली जाई थांती किबा हाइड करंती किबा इनकरेक्टली रिपोर्ट करंती their foreign income assets suppose Indian residents has foreign bank account foreign shares overseas income but does not disclose properly in tax return fine the government now gets what international data government वर्तमान कोन करिवो government has now access to international data that means countries now can exchange financial information automatically through automatic exchange of information बुझ पारले okay meaning foreign governments share financial account data with India बुझ पारले सेटु गवर्नमेंट को जणा पड़ जिवो को लोकर फॉरेन कंट्री रे केते वैल्यू रे एसेट्स अछि बुझ पारले किबा से वर्ष केते इनकम करछि सो CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस स्टार्टेड व्हाट nudge campaign nudge means non intrusive usage of data to guide and enable non intrusive माने गवर्नमेंट देखो गवर्नमेंट से तो डेटा शेयर हे जिवो बुझ पारले फॉरेन गवर्नमेंट्स इंडियन गवर्नमेंट से तो डेटा शेयर कर देबे जे को इंडियंस मानकर फॉरेन कंट्री रे कोन एसेट अछि आ से एसेट से केते इनकम पाउछंती तो इंडियन गवर्नमेंट कोन करिवो nudge campaign start करला बुझ पारले दैट मींस नॉन इंट्रूसिव यूसेज ऑफ डेटा टू गाइड एंड एनेबल ता माने गवर्नमेंट कोन करिवो समस्त को जणी दबो जे हमें ऑलरेडी मु जानि गलेनी जे आपनकर फॉरेन कंट्री रे ए एसेट अछि एतिकी टंका रे एसेट अछि आपन से एसेट आपन वर्ष को एतिकी टंका अर्न करछन सो प्लीज अकॉर्डिंगली टैक्स पे कर दियंतु बुझ पारले नॉन इंट्रूसिव माने कोन गवर्नमेंट से को फोर्स करिवनी बुझ पारले जानला परे भी फोर्स करिवनी गवर्नमेंट ताको गाइड करिवो and will enable them to pay the taxes यार सिंपल माने होची फाइन नज ओके नॉन इंट्रूसिव माने कोन बिकॉज द गवर्नमेंट फर्स्ट एनकरेज वॉलंटरी करेक्शन और कंप्लायंस बुझ पारले आपन हमें आपन को जणाई दोछु एबे आपन टैक्स बाय पे कर दियो जणाला परे भी जदी टैक्स पे करन देन गवर्नमेंट विल टेक सम एक्शन ई सिग्मा प्लेटफॉर्म व्हाट डू यू मीन बाय ई सिग्मा प्लेटफॉर्म देखो गवर्नमेंट रेगुलरली कंडक्ट्स व्हाट सर्वेज अबाउट इंडियन इकोनॉमी एंड सोसाइटी बुझ पारले रेगुलरली सर्वे गुडा कंडक्ट करे हेलो फॉर एग्जांपल अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे हेगला कंजम्पशन सर्वे हेल्थ सर्वे रूरल हाउसहोल्ड सर्वे दीज आर कंडक्टेड अंडर व्हाट नेशनल सैंपल सर्वे ओके एबे अर्लियर सर्वेज वर ऑफन पेपर बेस्ड स्लो एंड एरर प्रोन बुझ पारले पेपर नहीं जानती बुझ पारले सर्वे करंती नाउ अंडर ई सिग्मा प्लेटफॉर्म कोन हुए सपोज ऑफिसर राइट्स आंसर्स मैनुअली ऑन पेपर problems are handwriting mistakes missing entries delayed uploading fake data possibility बुझ पारनु सही पई the government may take many months or even years to release the final report so government created what e-sigma what do you mean by that e-sigma means e-survey instrument and generalized multimodal application it is basically a digital modernization of India's survey system बुझ पारले it is basically a digital modernization of India's survey system fine तापे ई संखी पोर्टल कोन देखंतु ई संखी पोर्टल कोन
गवर्नमेंट डेटा इज स्कैटर्ड अक्रॉस मेनी वेबसाइट्स जदि आपन को पॉवर्टी रिलेटेड डेटा दरकार तला गोटे वेबसाइट विजिट करियो अनएम्प्लॉयमेंट रिलेटेड डेटा दरकार तला गोटे वेबसाइट इन्फ्लेशन रिलेटेड डेटा आ गोटे वेबसाइट जीडीपी रिलेटेड डेटा आ गोटे वेबसाइट अंडर ई संख्या पोर्टल कोन होसी गवर्नमेंट डेटा इज स्कैटर्ड अक्रॉस मेनी वेबसाइट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स डिफरेंट रिपोर्ट्स सपोज स्टूडेंट वांट्स जीडीपी डेटा सीपीआई इन्फ्लेशन IIP data index of industrial production employment survey students may need to search multiple government portals which is very quite time taking time consuming and confusing so government created what e-sankhi ta mane kon e-sankhi is centralized statistics portal of MOSPI Ministry of Statistics and Program Implementation it is a centralized statistics portal of MOSPI that means think of it like one stop statistics library of India तमाने जतो सब डेटा अछि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रे गोटे डेटा को गोटे सिंगल प्लेटफॉर्म रे कोन करियो गवर्नमेंट अपलोड कर दबो बुझ परलम यदि आपन को जे कोनसी डेटा दरकार विथ रिस्पेक्ट टू इंडियन इकोनॉमी यू कैन सिंपली गो टू दैट पर्टिकुलर वन प्लेटफॉर्म एंड यू कैन हैव दैट डेटा फाइन so what does it provide the single platform contains what gdp data cpi iip asi बुझ परले periodic labor force survey industrial data employment data बुझ परलम हला पैमाना व्हाट डू यू मीन बाय पैमाना देखंतु पैमाना कोन What do you mean पैमाना? So India has many huge infrastructure projects. India has many huge infrastructure projects, highways, railways, power plant, ports. Many projects face delays, cost overruns and slow monitoring. Governments कोन गवर्नमेंट जानी परनी जे को प्रोजेक्ट ता केते स्लो होउची बुझ परले ता कॉस्ट केते बढ़ुची बुझ परले काहे की स्लो होउची बुझ परले जवन जानी पर नाही ठीक से मॉनिटर करि पारु नाही बुझ परले सेति में गवर्नमेंट कोन करला रियल टाइम बेसिस रे ट्रैक करिवा पई प्रोजेक्ट्स मानकर कोन डेवलपमेंट ता ट्रैक करिवा पई गवर्नमेंट कोन क्रिएट करला पैमाना मींस व्हाट प्रोजेक्ट असेसमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग एंड एनालिटिक्स फॉर नेशन बिल्डिंग इट इज ए वेब बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग पोर्टल ओके so what is this paimana do paimana tracks projects progress delays kete delay hochi kete progress hala delay kete hochi cost kete increase hala implementation status kono bujhi pale this is your paimana route optimization in pds what do you mean by that see government kono prati government kono जानिथिबे आपण गवर्नमेंट फूड ग्रेन्स प्रोक्योर करे बुझि परलम आ ताकू ट्रांसफर कर दिए अक्रॉस द कंट्री टू डिफरेंट पीडीएस सिस्टम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को ट्रांसफर कर दिए बुझि परले देखो गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट ह्यूज फूड ग्रेन्स अक्रॉस इंडिया समटाइम्स रूट्स आर इनएफिशिएंट लॉन्गर एंड कॉस्टली हेलो सपोज ट्रक मे अननेसेसरली ट्रैवल 500 किलोमीटर इंस्टेड ऑफ ऑप्टिमाइज 300 किलोमीटर रूट गोटे ट्रक गोटे डेस्टिनेशन को पहुंचे पई आपन पास दुटा रूट अछि गोटे होची 300 किलोमीटर आ गोटे होची 500 किलोमीटर आपन जानि नाही 300 किलोमीटर रूट आपन नौचन कोटा 500 किलोमीटर रूट तवन अननेसेसरली कोन ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ुची फ्यूल कंजम्पशन बढ़ुची बुझ पले ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ुची एंड इवेंचुअली प्राइस भी बढ़ुची बुझ पले सेति में गवर्नमेंट कोन करला गवर्नमेंट दिस वेस्ट फ्यूल टाइम एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट सो गवर्नमेंट कोन इंट्रोड्यूस करला रूट ऑप्टिमाइजेशन इन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम दैट मींस रूट ऑप्टिमाइजेशन इन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम दिस इज AI based route optimization बुझ पले the main tool is what Anna Chakra and what this Anna Chakra does AI system calculates shortest and most efficient transport route बुझ पले this Anna Chakra is an AI system that calculates shortest and most efficient transport route earlier food grain route was 1000 km after optimization it will become how much 700 km fine compliance reduction initiative देखो India historically had too many compliances, excessive paperwork, criminal penalties for minor mistakes. This made business difficult. Small business forgot छोटो बिजनेस टा गोटे पले छोटो मिस्टेक हे गला गोटे पर्टिकुलर डिटेल्स को फाइल करि पारलानी बुझ पारलम तो कोन अर्लियर कोन होतला क्रिमिनल केस होतला बुझ पारलम imprisonment was a possibility. This created fear, litigation and bureaucratic burden. So government started what compliance reduction initiative. The objective is to simplify rules and improve what ease of doing business. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बुझ पारलम एटा जस्ट देखिबे फन एटा जस्ट नाट जानथा देखि देबे भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम एटा गुडा को एक्चुअली कोन जो गवर्नमेंट को टेक्स्ट बुक गुडा को अछि से मल्टी लैंग्वेज होय को ट्रांसलेट करा हबो बुझ पारलम दैट इज भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम ओके केतरा लैंग्वेज रे ट्रांसलेट करा हबो गवर्नमेंट जो टेक्स्ट बुक अछि गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक गुडा को 22 लैंग्वेज 22 लैंग्वेजेस करा हबो आ गोटे होची आपन कोन सर्ट क्लिनिक किबा सबरन क्लिनिक देखंतु इंडियाज फर्स्ट ट्रांसजेंडर लेड हेल्थ क्लिनिक
India's first transgender led health clinic. आपण जानिथिबे transgenders माने कोन often face the discrimination, hello, healthcare exclusion, then lack of sensitive medical support. So this such clinic was established to provide what? Healthcare services, counseling, support services for transgender community. Okay. India's first certified green municipal bonds. Recently, Ghaziabad Municipal Corporation become first urban local body in India to issue a certified green municipal bond. To issue a certified green municipal bond. बुझ पारले? Green municipal bond. Green municipal bond माने कौन? Cities देखो तो cities need huge money for sewage treatment, waste management, clean water, pollution control, sanitation infrastructure. But municipal corporation often face what? Shortage of funds. So पारे funds बेसन होता है. So suppose a city wants to build modern sewage treatment plant which might cost around 200 to 500 crore. Municipal corporation may not have enough money immediately, so it needs to raise funds through what? By issuing municipal corporation bonds. Municipal corporation bonds. Okay. What is a municipal corporation and what is a green bond? Green bond ta kono? Green bond mane hochi kono? Green bond means borrowed money must be used only for environmentally friendly projects. बुझ पारले? Okay. So with this we এটা আউট আছে আপনার आज से थोड़ा कम कैंपेन जस्ट आ 3-4 আছে आज से थोड़ा कम कैंपेन देखो लॉन्च्ड बाय सिंह आज से थोड़ा कम कैंपेन लॉन्च्ड बाय फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया आज से थोड़ा कम कैंपेन लॉन्च्ड बाय फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया मीनिंग लिटिल लेस फ्रॉम टुडे मेन आइडिया कौन ये कैंपेन रो मेन आइडिया कौन पीपल आर कंज्यूमिंग टू मच ऑफ सॉल्ट शुगर ऑयल एंड फैट बुझ पारलम दिस कॉजेस ओबेसिटी डायबिटीज blood pressure and heart disease so campaign asks people to reduce this slowly from today itself बुझ पारले आज से थोड़ा कम कैंपेन stop obesity and fight obesity campaign बुझ पारले এটা হচ্ছে national campaign by government plus FSSAI main goal is reducing rising obesity in India encourages less oil consumption less sugar exercise healthy lifestyle e-sanjeevani कौन what do you know e-sanjeevani India's national telemedicine platform developed during what COVID period developed by Center for Development of Advanced Computing under Ministry of Health main idea कौन यार patients can consult doctors online remotely बुझ पारलम no need to physically visit hospitals always so two model doctor to doctor बुझ पारलम small health center doctors consult specialist doctor बुझ पारलम अब वो patient to doctor fine model so patient directly talks to doctor online okay why important improve healthcare access rural healthcare and affordable consultation National Generic Document Registration System developed by National Informatics Center under the Ministry of Rural Development. What was the main problem? Land registration process was slow, paper heavy, corruption prone and fraud prone. What this National Generic Document Registration System does? Creates online digital property registration system. बुझ पारले एबे आपण चाहिले ऑनलाइन भी प्रॉपर्टी को रजिस्टर करि परिबे बुझ पारले दैट इज सिंपली एथिंग कहूची suppose you buy land instead of long manual office work much process becomes online and transparent benefits reduce fraud delays corruption improve transparency easy of property registration fine so this is all today and best of luck all of you for the coming exam thank you